हमेशा के लिए जोड़ने के लिए संजोने की कोशिश कर रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, कैमरा फ़ोन से फ़ोटो खींचते हुए। तो मैं बस आपको सबको बताना चाहती हूँ कि बाय द एंड ऑफ द इवेंट टुडे वील बी डिस्प्लेइंग अ क्यूआर कोड आगे। उस तरफ में एक क्यूआर कोड डिस्प्ले करेंगे, आप सभी उस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, फिल इन द डिटेल्स, गिव योर ईमेल आईडीज, गेट योर फेस स्कैन एंड विद दैट यू कैन गेट अ होल्ड ऑफ ऑल द फोटोग्राफ्स जो यहाँ 2 दिनों में खींची गई हैं। आप जहाँ भी होंगे उन फोटोग्राफ्स में वो कोड आपको ऑटोमेटिकली आपके सारे फोटोज प्रोवाइड करा देगा। सो प्लीज फील फ्री टू स्कैन द क्यूआर कोड and you can get a hold of all the photographs, all the memories that we created in these 2 days. Also, we are also having the PEFI t-shirts here. You can get hold on one of them outside on the registration desk. Please feel free to get one for yourself. Here it is, the QR code for the photos of PEFI event. मैम फिर से दिखाइए, आई वांट टू वेव। फिर से दिखाइए, आई वांट टू वेव। हेलो। All right, ladies and gentlemen, it's time to begin with our event today. Here we are officially welcoming the day 2 of the 8th PEFI National Conference on Physical Education and Sports Sciences 2026. Yesterday, we had enriching discussion on social change through sports, institutional transformations, anti-doping reforms, and sports nutrition. Today, we delve deeper into sports science integration, injury management, talent development through education, and we begin with insightful keynote presentation. I trust all of you had a restful evening and are ready for another day of learning and collaboration. We commence here day 2 with the keynote presentation first on a topic of immense national significance. Mega sporting event as catalyst for tourism, urban development, and regional growth. As India aspires to host the 2036 Olympic and other international sporting events, understanding the socio-economic impact of such mega event become very critical. This presentation will explore how hosting major social events, major sporting events can stimulate tourism, drive infrastructure development, and generate economic growth at regional and national level. We are very much privileged, ladies and gentlemen, to have with us a distinguished academician through leader in his domain. It's my honor to invite Professor Dr. Anukriti Sharma. Professor Dr. Anukriti Sharma
Professor and Director of the Skill Development Center at the University of Kota, to deliver this keynote presentation. For this session, the chairperson, Dr. Vasanti ma'am, and Dr. Dinesh Suresh. I request Vasanti ma'am and Dinesh sir to please take their seats over there. You will be the chairperson and co-chairperson for this session. Moving ahead for the first technical session, Dr. Sharma has extensive expertise in tourism studies, urban planning, and the socio-economic dimension of the sporting event. I request Dr. Sharma to kindly come on the dais for the presentation. Ma'am, if you want, I can hand you over. No, it's okay, thank you. Because this podium is quite high, I think I have to be here. Okay, and who is going to handle the PPT presentation? You are going to change it. Okay, thank you. Is it? Yes, it is, sir. But it's quite inside actually. I am not able to push it out. Anyways, can you help me out? It's बहुत ही अंदर है. Oh, thank you, thank you. मेरे आधे सारे टेक्निकल बच्चे हो गए हैं. वॉकिंग यार सब करके करने के लिए बोला ना आपने. नो हाई आर्जिन. एक मिनट चाहिए. हेलो चेक. दिस साइड और दैट साइड. हेलो चेक. थोड़ा एक मिनट चाहिएगा. अरे यार इसको खींच के देते आप लोग समझ नहीं आता है. बार बार माइक ही बंद करके आप लोग बताइए किससे गलत करता है. तो बस बोल दिया ना सर भी देते माइक बंद हो जाता है. इसके लिए कुछ और है क्या भी वाला. हेलो 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 ये वाला नहीं. हेलो चेक चेक. हेलो चेक. इसको मत आगे पीछे कीजिए आप. Okay, good morning everyone, namaskar. Finally it's all set. All the technical things and we are good to go now. And I'm Professor Anukriti Sharma. I'm head of the Department of Tourism and Hospitality, as well as I'm the Director of the Skill Development Center and Director of International Office of Affairs at University of Kota. It's a government state university, and as well as I'm holding a post of a Dean of, again, Tourism and Hospitality of Vishwakarma Skill University in Jaipur. That is the first and the only university of skill development in the state of Rajasthan. My background is not at all of sports. Let me be very clear with all of you. I'm actually a person from management and from tourism. I pursued my PhD in tourism marketing, and currently I'm doing my DLit from University of Rajasthan, again on tourism only. But somehow, you know what happened with me when I was just doing the research work in tourism. I really felt by doing this research work that there is a important need
to work upon the subject which is related with sports tourism and sports management. Because whenever we do a research work as an academician, as a researcher, we always try to find out that what is exactly needed for the community, what is exactly needed for the society, what is exactly required to the students' upgradation. So that's why I thought to jump into suddenly to sports tourism and sports events. And I'm really glad that I have taken a very good decision, because we have hardly books related with the sports tourism and sports events authored by Indian academicians, by Indian researchers. We do have the books, but maximum of them are of the international authors. So that's why I thought, why not I work on this particular theme where there is a demand also and there is a need also of this particular subject. Moreover, sports tourism is something on which you will find hardly some research papers, especially if we'll talk about the Scoopus Index papers, because the scholars are students are here. That's why I'm talking about that. If we will talk about ABDC journals, or if we'll talk about the Scoopus Index journals, you will hardly find the papers by the Indian authors or research papers on sports tourism, sports events. Till date, we do have on sports management, but we don't have exactly on sports tourism, sports events. So this is the first request from this important dais, that we really need to do a lot of research work. We really need to do a lot of books on sports tourism and sports events. That is really a necessity in this era. So, and before jumping into my presentation, at the outset I would like to congratulate the conference organizers, PEFI, for organizing such a wonderful 8th conference. They are doing a marvelous job. There's no doubt. The team is doing very, very hardworking people they are, and they are putting no stone unturned to make the physical education and sports recognition on next level. So I would like to congratulate them also for doing such a rigorous and restless efforts for the upliftment of community at large. Today's topic, which I have chosen, is related with the mega sporting events, because as we all know, the title of the conference is related with Olympics 2036, right? So that's why it is, of course, a mega event, and I have taken the topic related with mega sporting, supporting the regional growth and how they are helpful for the overall development of a nation, for image building also. So with this note, I would like to jump into my slides. Although I'm not a person who works a lot with the slides, I'm comfortable more without slides basically. Can you please change the slide? Oh, it is. The second slide, please. No, this is not the second slide. Yeah. So when we are talking about the mega sporting events, what does it mean by mega sporting events? In general, we all know the sports which are attracting a lot of audiences, lot of friends, and the sports which are giving us on a next level recognition, which are getting a next level of promotion by the media also. Every event which does include a few points which I have mentioned here, like the large scale participation and global viewership about the audiences, significant impact on the host city's economy and infrastructure, and extensive media coverage. So these are the 3 main characteristics whenever we are talking about any mega event. And when we are talking about Olympics, it is certainly counted as a mega event. And we are discussing how a mega event can impact the tourism, the regional growth, and the urban development also. Next slide. So when we are talking about the impact of the mega event on tourism, it is actually beyond the games. When we are talking about any mega impact on the tourism of any country, you cannot say that it is just because of the games. It is beyond the game. And why we are saying this, it is beyond the game. For an example, I'm just taking a small example. I'm here to attend a conference, and of course this conference is also a very big conference. When I'm here to attend a conference, I am using n number of resources. It's not just like that I'm just sitting in
in this hall, delivering my talk and going back. No, it's not so. It is including a lot of things. A lot of things means like the transport I have used, the accommodation I have used, the local food items which I'm taking, the souvenirs which I am buying for my friends. So what does it mean that when we are talking about any mega event, where we can talk about a short term that is called MICE, that is meeting, incentives, conferences and exhibition. That is also part of a mega event. So whenever we talk about a mega event, that time we are not just coming to watch a game, just to see a game as an audience, as a viewer. Actually what we are doing, we are at the same time an audience of a game, a viewer of that game in the stadium, but at the same time the same person is a tourist in that particular city or in that particular country. Why it is so? For an example, just think about it. You are not sitting in a hall. Right now you are sitting in a stadium, and this stadium is in Europe. Just imagine this thing. Just take it in your thought that you are sitting in Europe and then it is a stadium and a game is going on here. So what will be the next thing you are going to do after going out from this stadium? You are certainly going to see some tourist places. You are going to see certainly some tourist destinations. You are going to take the local cabs. You are going to take the local trains. You are going to enjoy the local food of that place. You are going to buy some souvenirs for your friends and family members. That means in any ways you are supporting the local economy. So you are not just an audience, you are at the same time performing two roles as an audience as well as a tourist. That's why I have stated that when we are talking about mega event, its impact on tourism is beyond the game. Because game is just in the stadium. But what you are doing as a tourist is actually extraordinary. You are not just buying a ticket of the stadium. On the other side, you are doing n number of things. That's really boost of the economy, and it creates a job also at the same time. Why so? Like in this hall also, they have so many stalls outside. There's a book stall, an M-Way is there, and n number of things are there. So even if few people are going to buy the things, it is definitely supporting the local vendors. So what is happening when we are organizing a mega event, a mega game? That time also we are adopting the same strategy. We are organizing the small shops, we are establishing the small shops over there for local products. So it is actually the latest trend, and that's why I really want to say this thing, that our students should get the training that how to organize mega events. This is something very much missing, although it is not mentioned in my slides, but here, because it is a very important juncture and many of the academicians are also here, I really want to urge from this platform that we really need to inculcate these sort of topics in the curriculum also. We are not training our students to how to organize the sports events, especially the mega sports events, which is actually required, because these days organizing an event is not a simple task. It is actually a tedious task. And again, yesterday also in my session, I said it, that when we are talking about tourism, when we are talking about watching a sport like a mega game or mega sport, it is always about the experiences. It is always about the experience, that how you are experiencing. Suppose in this conference, you are all feeling very relaxed, all the arrangements are good, the speakers are good, everything is good. When you will go out, you will say, the conference was really good. We have something in our hands, right? But unfortunately, if it is just opposite, what you will say? You will definitely say it was just an okay experience to attend this conference. So what exactly we want to do? We want to create a good experience for all the audiences. And experience is absolutely related with the emotions. So when you satisfy an audience, a viewer, a tourist, by the service industry, when you satisfy their emotion, what expectations they have, when you are able to fulfill those expectations, then their experience counts as a good or positive experience. So it starts from expectations, go to the emotions, and end it with the experience. So that's why we have to take care all the 3 E's, which I'm very much sure in the curriculum of sports, it is not at all mentioned, because I have gone through with the sports curriculum a lot many times, but I've never seen these 3
ease, that how to fulfill the expectation, how to fulfill the emotions, and how to create the experience by the mega events. So that is very much needed. Next slide, please. Urban development infrastructure. See, it is a very easy point. We all are mature people here, and we all knows that whenever we are talking about any mega sports, it always helps us to create more and more urban infrastructure. And this is true. And when we are talking about infrastructure, it just doesn't mean by the stadium. I'm not talking about the facilities at the stadium. Infrastructure means it includes everything. It includes from the railway station, from the bus stand, from everything with the small amenities. So whenever we are talking about the infrastructure, our focus is on the overall development of that particular city where this mega event will be going to conduct. So whenever we are talking about mega events, they always boost up the infrastructure development by the government, and there are a number of stakeholders who focus on the development of the infrastructure in total, just not the stadium's development. Next, please. Next slide. Yep. So regional growth and the economic incentives. So I have put out some points here like the job creation and moreover investment attraction, supply chain boost and regional connectivity. So whenever we are talking about the economic growth, the first and the foremost, being a student, being a scholar from management background, I have to say the first and the foremost benefit of any mega event is actually how they boost up the economy of that particular country, first thing. And second thing, how these mega events are actually changing the image of your destination. How these mega events are changing the image of your country. These are the two motives. I mean, these are the two main important pillars on which actually it is based, that how you are conducting your mega event. It helps from the lowest to the highest to highest. Like if we'll talk about an auto rickshaw driver, if we'll talk about a cab driver, so even if we'll talk about a simple vendor who is just selling maybe peanuts on the roadside, it will help them also. So in any ways, whenever we are talking about mega events, they are helping us in creating jobs, in creating startups as well, in creating the, if we'll talk about more, their regional connectivity is there, then supply chain is there, because conducting a mega event is a big task, and without the supply chain management, certainly we won't be able to do that. So it's a true thing that mega events are something which gives us a next level of economic development. Next slide, please. The legacy framework. Yep. So I'm just about to end. To be successful, and MSEs must transition from event management to legacy planning, first thing. Second thing, social legacy, where we are talking about promoting sports culture, volunteerism and social inclusion. Economic legacy, where we are talking about long-term business and increased FDIs. And environment legacy, sustainable stadium designs, which can reduce the carbon footprint. So why I'm talking about legacy word? Why we are talking about legacy? Legacy is something which you set. It's you can say it is something which you have created, a lesson for other countries. The other countries can learn some lessons from your country, that how you organize the mega event. And that's why I use the word legacy, not strategy. So when we are talking about legacy, again I'm dividing this legacy word into 3 points which are related with your social, economic and environmental legacy. And the most important, as we already talked about the economy and social, I just want to focus on the environmental. These days we have to say, like you can see on the dice, they have these glass bottles, not the plastic bottles. So here's a live example in front of us. We are not using a plastic bottle here, we are using a glass bottle, and it is just a simple gesture, but it is highly making an impact on the environment protection. So whenever we are talking about the environment, when we are organizing these mega events, it does count that how much you are using the green initiatives in organizing a particular event, because at times we ignore that.
So that is again a very much needed thing. If someone is working on this about the how to conduct the Olympics, or if there is a research paper or a policy paper, if someone is working on that, I really want to request that put this point, highlight this point, that we should make this particular Olympics environmental friendly. That is very much required. Rather than using the plastics bag, use the jute bags, use the cotton bags maybe. If you are giving it, even the souvenirs or something, don't use the plastic. Avoid using the plastic water bottles. Avoid using the chips and everything in the plastics. So that's something which you can, small initiative but big impact. So that's create an environment legacy, and it can set a role model for other countries. Ki yes, India used everything which is related with protection in green environment, rather than using those things which are harmful for the environment. So this is a very crucial point which we should take care of. Next slide. Potential risk. So आप लोगों ने सुना होगा, कभी कभी लोग बोलते हैं I really love Fortuner, I really love this car, I really love that car, but then बोलते हैं suddenly ये तो हाथी पालने जैसा हो गया. So why it is called a white elephant? So there are always pros and cons of everything, you know. Every coin have two sides, positive and negative. So what is the negative point now? We talked about positive. What is the negative point? The negative point is this, that at times, you know, underutilized high maintenance stadium post event. You know, once you create the stadium, you put so many efforts, you put all the money and everything, and after the post event, it is just underutilized. So what about investment you have already did on that particular stadium? Now what's next? You organize the Olympics, everything is closed. Now what next? So that is a very big question, that how you will utilize it further. So that is, we need to plan it. But unfortunately, we never thought about it. Then debate burdens, of course, debts burden. When we are talking about the over budget infrastructure, so it creates definitely debts on us. I've given a case study example here. And the last is regular tourists avoiding the city due to the high prices. तो जो रेगुलर टूरिस्ट है, जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली में बहुत आती हूँ, और अगर मुझे पता है कि यहाँ कोई मेगा इवेंट होने वाला है, मुझे इवेंट अटेंड नहीं करना है, बट आई वांटेड टू कम, बट आई एम पोस्टपोनिंग इट. So the persons who are frequent visitors, or maybe for the business purpose or any purpose, so they stop traveling those days when these mega events are going on in that particular city. So in both ways, you know, one side it is helping you out to create economy, on the other side it is dumping also the economic points and upgradation. Next. So here I want to conclude. So when we are talking about mega sporting events, are not just games, they are powerful tools for regional marketing and structural changes. Success depends on integrating the events into the city's pre-existing long-term development. And final thought, the goal is not just to host a great event, but to build a better city. So the concluding line is this, that mega event is not just about hosting a good game or a good event. It is about making the betterment of your city, making a betterment of your country. And it does help us. Like if in one line I want to say, the mega events are giving a positive impact more rather than the negative impact. It all depends on our vision, that what vision we are carrying post-event. So that is very important. When you're starting an event, we plan everything very well, but when we end up it, then there is no follow-up, there is no, further developments. So that we should think. Like this conference, it is closing today. Fine. And after closing of this conference, if we are doing nothing, if the organizer are also doing nothing, if we are as a participant are doing nothing, then there's no sense of this conference as well. Because whenever we start a particular event, whether it is a conference, an exhibition, or a sport, or whatever, we really need to think about that these are the inputs and this is the output, and now what we have to do with this output. That should be concluded actually. But unfortunately, in India it is a trend, I'm sorry to say from this podium, in India it is a trend that we start a particular event with full zeal, with full guts, it went well, but after the output, it just shut. So this should not shut in that way. We have to proceed further. We have to think future, that what next we can do with this particular event, with the outcomes of this event. Thank you so much for your patience listening. If you have any questions, please, feel free to ask me. Thank you.
And once again, before leaving this podium, I want to say thanks to Dr. Piyush Jain and his team, Dr. Uppal sir and everyone who are inviting me here as one of the speaker. Thank you so much for giving me this platform. Thanks. Yes, ma'am. To hand over for the further messages or any other clarification for particularly the chairperson's remark, I would like to invite Vasanti ma'am. Thank you so much, Aparna ma'am. Thank you so much. A very good morning to all and welcome for this national conference. And I really appreciate Madam Professor Sharma for her excellent presentation. Ma'am, congratulations for your excellent presentation, because it is something, I mean, though it is, interrelated and very important and essential in this sports industry and fraternity, but sometimes, we feel like the tourism part is ignored, not giving much importance. So as you said, this point, which is very interesting, MICE, meetings, incentive and conference and exhibition. And one more thing which I would like to ask on behalf of everyone, you said there should be a training for the students. So is there any particular certification or short-term course for especially for the youth? So why is there any platform or anything where you can develop a curriculum with 2 credits? Last time, yesterday's session where the Professor Asha was sharing, for doping and all 2 credit certificate courses there. So it is our suggestion, why can't you develop a curriculum with 2 credits, with minimal credits for the youth, so that they can be well trained, they learn and then they do it. And as you said, you are not associated with sports, but really I would point out here, you have touched and highlighted the national sports policy, which was launched just few months ago. I think are you aware of that, ma'am? Yeah. So in that 5 core points, you have touched upon the second and third point, which is sports is for economic development and social development. Very beautifully you have covered this. Yeah, it is very inspiring and we have learned a lot. And our request again is that please develop a short-term or certification course, especially for the youth. Yeah, and one more point, as you said, there will be in a full swing, full force for the inauguration, wherever the event is happening. But afterwards, there is no follow-up, there is no, even that also you have highlighted very well. And I think all the organizers should take this point very positively for the betterment of for that comprehensive and insightful presentation. Your analysis of the socio-economic impact of media and sporting events provides valuable perspective as India charts course towards 2036. Let us give Dr. Sharma a warm round of applause. Moving ahead, for the next segment, we have the topic, technological development in science of sports. We now proceed to the keynote presentation 2, which focuses on the cutting-edge intersection of technology and sports training. The topic is technological development in science of sports training. In the modern era, technology has revolutionized the way athletes train, recover, and reform. From wearable sensors to biomechanical analysis, artificial intelligence to virtual reality, technological innovations are reshaping the sports sciences. This presentation will explore these advancements and their application in optimizing the athlete's performance. We are deeply honored here to have with us a stalwart of sports education and research in India. Leaving the script aside, I would like to say, which I always say, the Bhishma Pitama of physical education, Dr. A.K. Uppal sir.
the former Vice Chancellor of Jivaji University and the Chairman of the Physical Education Foundation of India to deliver his keynote presentation. For this presentation, we have with us the Chairperson, Dr. Shyam. Right, good morning, ladies and gentlemen. I have chosen this topic keeping in mind the 2030 36 Olympic Games. A person, he always tries to take help of technology to solve the problems. And in this era, you know that sports is becoming a very technical subject. Unless you take help of science, I can assure you that you will not be able to surpass the performances which are now termed as maybe world records or Olympic records or Commonwealth Games records or whatever it is. I am going to point out how science can help us in surpassing these performances. You see, you know that a football team comprises of 18 members, hockey team of 16 members, a basketball team of 12 members. But when it comes to training, every sports person of the team is to be trained as per his personal status. A team of football, let us say, or team of hockey comprising of 16 members will have some players who have been members of the team for last 10 years, some maybe 8 years, some 4 years, and there may be some who have just joined. You cannot give same training program to everybody. Every sports person's ability and capacity is to be assessed. And then programs for training are to be administered, ensuring that the training program will bring about improvement in the sports person. Now with that in mind, I am going to talk to you about this technological developments in science of sports training. Next slide, please. Now, पूरा कर दीजिए, right. You see, if you go through or look into various areas where science has made inroads, the field where maximum development or maximum contribution has been made by science is the field of medicine. Earlier, when surgery was to be performed, a patient was put on the operation table. They used to open the stomach. Half of the patient used to die on the operation table itself. But now they make two holes. From one hole, they insert the camera. From the other hole, they insert maybe an instrument so that surgery can be performed. And there is a great reduction in the death cases when a patient is on the operation table. The second area where
lot of improvement, lot of contributions have been made by science is the space exploration. You know, Williams stayed in the space for more than 200 days. A Chinese stayed in the space for more than 400 days. And you are using mobile phones, you are using lot of technological instruments. All these get their messages from the space. So that is the second area. But if you take the top 5 areas where science has contributed, probably sports and sports science also will be included in the top 5 areas. And with that in mind, I'm trying to take you through how the abilities of a sportsman can be enhanced with the help of sports science. Next slide, please. Now, empirically, that is based on experience, it has been seen that talent alone contributes to 30%. If you take into consideration the talent alone, it contributes to 30%. Remaining 70% performance comes, what we say, from scientific and systematic grooming of the sports person. Now that is the area. The popular saying that catch them young and coach them right supports the above view. Therefore, unless you start taking support of science, I am sure you will not be able to take our sports persons to international level. Next slide, please. Now, what truly makes a sports person of an international level? Many times, when we talk about Usain Bolt, who created a world record of 9.58 seconds, people thought that the spikes which he uses, probably they have something to contribute to his performance. But then, ladies and gentlemen, it is all science, it is technology, which these people, these sports persons, these developing countries or developed countries follow, and that actually enables a sports person to surpass the previous performances. He made in the first Olympics 100, 200, next to Olympics 3 world records. He has 8 world records in his name, and that is why he is considered as one of the greatest sports person. Next slide, please. Now, why Usain Bolt won at London? Please look into this slide. Number 1, size matters. Usain Bolt's height was 6 feet and 5 inches. He used to cover a distance of 100 meters. You see, it's very important to understand, in 41 strides. And those who ran along with him, they were taking, you see, Jon Blake, 46 strides, Justin Gatlin, 42.5 strides. Now, when we say size matters, it is nothing but kin anthropometry. The scientific area which supports or which helps the sports persons to put up outstanding performances, kin anthropometry. Number 2, strength and elasticity. What makes Bolt special is that he also possessed great explosive strength and flexibility. What we say, the science of sports training. Number 3, he was injury free. Can I request you to please settle down? Babu, inko settle down karo, please. He was injury free. Sports medicine. Sports medicine. Number 4, he was more chilled than refrigerated ting soda. It is sports psychology. Sports psychology, which enabled him to create a world record of 9.58 seconds. And the last one, Bolt start. He had the best reaction time, 0.146 seconds, when he created a world record of 9.58. It is this technology which is going to help us to create performances which can be outstanding, where
better records can be created and performances can be enhanced. Next slide, please. Stacy Dragila was the first women pole vaulter. You know, women pole vault was introduced in the Olympics in the year 2000. She created a performance of 4.65 meters and created a world record. You know, after every event is over, victory ceremony takes place. Victory ceremony took place. Stacy Dragila came back to the stands. One young small girl went to her. Madam, this gold medal which you have won, do you take credit yourself for this world record, or you give credit to the pole which you have used? You know, I'm talking about flexible poles. She thought for a while and gave a telling response. It is probably 50-50. 50% it is my effort and 50% support I got from the flexible pole which I used. Now I have a question to ask you. You know what is the pole vault world record for males? Anyone? Who is the world record holder and what is the world record in pole vault male? Anyone? Pole vault world record, anyone? Ladies and gentlemen, Duplantis. Duplantis, 6.30 meters. Important thing to, not the height which he has covered, the pole which he used to jump 6.90 meters, the length of the pole was only 5.35 meters. With a 5.35 meters, he covers the height of 6.30. It is nothing but technology. You know, earlier when we had stiff poles, bamboo poles and aluminium poles, they used to clear the bar in J position, J alphabet, reverse J alphabet. Now they clear the pole in I position. They take a handstand on the pole and clear the bar. 5.35 meters. With that, Duplantis cleared a height of 6.30 meters. A remarkable achievement. And then, what science is involved, that is what you have to understand. You know, we have two types of energy. Potential energy and kinetic energy. When the pole vaulter makes an approach with the pole vault pole, he has kinetic energy, the energy by virtue of motion. When the pole is planted, the pole bends. The pole bends. When the pole has come to its maximum flexibility, the pole vaulter who is hanging on the pole, he has potential energy. Then the pole again straightens. That potential energy is added into the kinetic energy, and that enables a person to clear height which you cannot expect. You see, more than 20, almost 21 feet height. From where to land in the pit. And you know, they have now soft landing areas. Height of the landing area is almost 80 centimeters, so that when a person lands, he does not get hurt. So this is what is happening. Flexible poles were introduced in 1945 itself. Please note that. But when sports persons started using that, many times the pole used to break. Many pole vaulters got serious injuries, and now the pole vaulter the pole which pole vaulter uses, these are called catapoles. It is a mixture of carbon and fiberglass. Carbon and fiberglass. I remember when I used to train athletes, I am talking about 1960, before 1960. One pole
any pole vaulter could use, they should take, apna pole dena yaar, let me take your pole and do it. Now you cannot do it. These flexible poles have an F value. F value is called the flexibility value. And each pole vaulter, according to his or her weight, has to take a pole of appropriate F value. And F value is measured. You take the pole, put both ends on a chair, and in the center hang a 20 kg weight, and how much the pole goes down, that shows the F value of the pole. Now when you want to buy the pole from the market, the supplier will ask you, what is the F value? What F value pole you want? And accordingly, the pole is to be chosen. If you take a pole of very high F value, and if a person's weight is more, the pole will break. It will not straighten up. And if you take a pole of a very less F value for a person who is lighter in weight, it will be something like a bamboo pole or an aluminum pole. Therefore, this is what technology has done. And now these poles, if you have seen Duplantis doing this 6.30 meter pole vault, you just see how much pole bends, goes to that height and lands from there on the soft landing area. And I can assure you, and if again the 6.30 meter height is to be surpassed, probably some more scientific inputs will have to be used. Next slide, please. Now let us go to a new area, advances in sports training methodology. Sports training is an individual factor. Please keep this in mind. Sports training is an individual factor. Every sports person's training program is to be separately calculated. अगर आपकी बास्केटबॉल टीम में 12 मेंबर हैं, वो 12 मेंबर का ट्रेनिंग प्रोग्राम कोच को सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा. Now let us first think about endurance development. I am talking about Carbonan formula for calculating the load for a sports person. If his or her endurance is to be improved, we need only two things. We need the age of the sports person and the resting heart rate of the sports person. I have taken up an example of a sports person whose age is 20 years and resting heart rate is 72 beats per minute. With these two values, the endurance training load of the sports person can be calculated. What we do, we first calculate MHR, maximum heart rate of the individual. Maximum heart rate is 220 minus age. 220 is a fixed value. Out of that we subtract 20, and that gives us this is 200 beats per minute. That means if you give 100% load to this person whose MHR is 200 beats per minute, when you give 100% load to him, his or her heart rate will go to 200 beats per minute. Second step is HRR, heart rate reserve. Heart rate reserve is to be calculated from this MHR. We subtract the resting heart rate of the individual, which is 72. We get a value of 128 beats per minute. Now this is the value which is going to help you to calculate the endurance training load of the sports person. So international level sports person, if their endurance is to be enhanced, the intensity of load has to be kept between 70 to 85%. So I take example of 70% training intensity. It is 128, the heart rate reserve, to be multiplied by what we say the rest 70%. 70% is 0.70. And to that you add the resting heart rate of the person, we get a value of 161.6.
heart rate cannot be a fractional value, it has to be a whole score. So since it is more than 0.5, I have taken this as 162 beats per minute. 70% intensity. For this person whose maximum heart rate is 200 beats per minute is 162 beats per minute. And then I have taken 85% training intensity, that is 128 is heart rate reserve multiplied by 85% plus the resting heart rate of the individual, we have a value of 181 beats per minute. Now this is the training target for this sports person. If you maintain the heart rate between 162 to 181 beats per minute, this sports person whose age is 20 years and resting heart rate is 72 beats per minute, maximum benefit he or she will receive in terms of development of endurance. That is how, again, this calculation is given here. Now, unless you do these calculations, I can assure you, you will not be able to bring your sports persons up to the performance where he or she is capable of reaching. That is how we train the sports person. Next slide, please. Now, these values which I have calculated, this is the resting heart rate, 72 beats. This is the calculation which I have made here, 162 to 181 beats per minute. So long the heart rate of the person is maintained between this block, the sports person will get maximum benefit for development of endurance. Now, you start with a warming up phase. If endurance is to be trained, the duration of load has to be minimum 45 minutes. That's what I have shown here. So long the heart rate is maintained between this. Because this is individually calculated, sports person will have maximum benefit for enhancement of endurance. Next slide, please. Now let us go to strength training. Here, please look at this block. 3 types of strength has been indicated: maximum strength, explosive strength, and strength endurance. Now, the intensity of load, if maximum strength is to be enhanced, the intensity has to be between 90 to 100%. If explosive strength is to be enhanced, intensity is to be between 70 to 80%. And if strength endurance is to be enhanced, intensity can be 50% or can be kept between 50 and 60%. Then density is the rest phase. Density is the rest phase between 2 repetitions when you work with weights. If maximum strength is to be enhanced between 2 repetitions of exercise, you have to provide a rest of 4 to 8 minutes. Full recovery is to be given because he or she is working with maximum intensity. In 4 to 8 minutes, all category of sports persons, when they do weight training, they come to the initial, their heart rate level. So 4 to 8 minutes. Explosive strength, intensity has to be between 60 to 80%. Again, the rest between 2 bouts of loads, 4 to 8 minutes. The reason is, full recovery has to be ensured, but because when we develop explosive strength, the movement has to be done at a very fast pace. So you get tired, so you need to provide full recovery between 2 repetitions. And when we say strength endurance, 50 or 50 to 60%, then the rest becomes only 2 to 4% because endurance is to be enhanced. If endurance is to be enhanced, the recovery period has to be shortened so that the cardiovascular system of the individual gets full support and performance is enhanced. Maximum strength, 1 to 4 repetitions. Explosive strength, 6 to 10 repetitions. And strength endurance, 15 to 30 repetitions. This is what you have to do. And if you work out that, take the correct intensity for the individual, then the sports person will be able to perform 1 to 4 for maximum strength, 6 to 10 for explosive strength, and 15 to 30 for strength endurance. And now, last factor,
This is very important, duration. Here, when I say duration, if I do maybe shoulder press from here to here, I am talking about duration. Or you do any exercise from initial position to final position, how much time you take, that is duration. Now, when you have 90 to 100% weight, your movement is going to be how you are going to move from here up, up. You will take more time to come to final position. That is what it indicates. When you have 90 to 100% intensity, you will complete your rotation in more time. And then explosive strength, because movements are done at a very fast pace. It's good, good. Short, because movements are to be done at fast pace, and then again, because intensity is less, the duration will be short. Right, thank you very much. Next slide, please. Now, the table which I showed to you, is if that table is to be used, you have to calculate 1 RM, what is called 1 hour repetition maximum. Now, this is a traditional method which has 12 steps. Very tiring. By the time you cover all the 10, next slide lagaiye. There are 12 steps. By the time you complete your 12 steps, the sports person will be extremely tired. Extremely tired. And the coach may be able to work on only 1 or 2 muscles in a particular day. It will take, if 1 RM of all the muscles for a sports person which are important for his or her sport are to be calculated, it may take about a week's time. But then physiologists have given us a formula. McArdle Catch and Catch, if you have read his exercise physiology book. Next slide, please. You see, aage jaiye. Next. Okay. Oh, वापिस आइए. Yes. This formula is given by McArdle Catch and Catch, a great physiologist. You have to calculate load for 7 to 10 repetitions only. It is easier to calculate 7 to 10 repetition load rather to go to 1 repetition load, you know. What he says, these values which are given in fractions, all these are constant values. This is constant, and this value you have to calculate how much weight he takes in 7 to 10 repetitions. Solve it. This is for an untrained person and this is for a trained person. You will get the weight with which for a particular muscle the sports person can do the exercise. Next slide, please. And now, how to plan interval running method for development of endurance. You see, this interval method is considered as one of the best methods of development of endurance. But then, unless you scientifically plan, intensity of load has to be between 70 to 80%. You know, these intensities which I'm indicating, these are meant for national and international level sports person. Don't start with a beginner with 70 to 80%. So, example, I want 200 to be repeated 10 times. Speed to be calculated. Recovery to be calculated. Both these values are to be calculated. And here I have given you calculation. Suppose the coach says you have to repeat 200 meters 10 times. So what we do, we first calculate the 100% intensity of the distance which the sports person is running. Since he or she is going to run 200 meters, I have taken the person runs 200 meters in 25 seconds. This is 100%. And we want to calculate 70% intensity. It is 25 into 70 divided by 100. We get a value of 17.5. Now this 17.5
is to be subtracted from the best time of 200, which was 25, minus 17.5 is 7.5, and this 7.5 is to be added into the best time. This 32.5 is the 70% intensity for a person who runs 225 seconds. So that person will perform whatever number of repetitions. I have taken example of 200 to be repeated 10 times. So if a person runs each 232.5 seconds, he will be able to complete the load. But important thing to be remembered is, we run a distance, then give a rest. The rest, sports person does not sit down during the rest period. He or she either continues walking or combines walking with jogging or only jogging, depending upon the level of the sports person. If you sit down after running a distance, blood pooling will take place in your legs, and then you will have difficulty in completing your training schedule. Therefore, what is to be done? You either walk or combine walking and jogging, or do only jogging, depending upon your performance level. Next slide, please. नेक्स्ट स्लाइड में आइए, पूरा कर दीजिए इसको, फिल दो अगेन और जाइए. यस, नाउ anaerobic capacity. Those who perform activities with high speed, they need anaerobic capacity. How anaerobic capacity of a person is to be calculated? This is very important. Now, what we do, we give what we say 400-meter drop off test. 400-meter drop off test we give to a person. I have given an example here. Run 100 meters. Suppose person takes 11 seconds in running 100 meters. Give 5 minutes rest. After 5 minutes rest, run 400 meters. Runs 400 in 56 seconds. First we have taken 100 meters time, that is 11 seconds. Then after 5 minutes rest, record 400 meters time, that is 56 seconds. Divide 56 by 4, we get a time of 14 seconds. Now the difference between this 14 and 100 meters time actually is, we have 3-second difference. 100 meters time is 11, and when we have divided his 400 time into 4 parts, that gets 14. Now we have 3-second time. Now if you want anaerobic capacity to be improved, this 3 second is to be reduced to 2.9, 2.8, 2.7. The anaerobic capacity of the sports person will get enhanced, and that will result in improvement of the speed performance of the individual. Next slide, please. Now look at superset method of developing strength. Let us talk about superset method. It is a new method which has been proposed by the coaches. What they say, you must have heard the name of Sylvester Stein, a great swimmer. 3 gold medals he had won in the Olympics. Now what he says, a balanced development of agonist and antagonist muscle. If your agonist, the muscle which contracts, and antagonist which relaxes, if there is a balanced development between these two muscles, injuries can be prevented. Injuries take place when one of the muscle group is weaker. Therefore, when you combine, make sure that you have a balanced development of agonist and antagonist. If I flex my elbow, my biceps is agonist and my triceps is antagonist. Similarly, quadriceps and hamstring, agonist and antagonist, there has to be a balance between the two. You get injury when there is improper balance between agonist and antagonist muscle. Next he says,
development of explosive strength with the help of stopwatch. It's a new method which has been devised. If you want to develop explosive strength of the sports person, now what you have to do is 6 repetitions of the exercise performed in 4.8 seconds. That is each repetition in 0.8 seconds. You start, if you are able to perform only 3 repetitions in 0.8, 0.8, and when you go to 4th, it becomes 0.9, stop. Each repetition to be performed in 0.8 seconds. Only 6 reps are to be done in 4.8, and this research shows that this method is very effective in enhancement of explosive strength of the individual. Now, you must have heard about Lee Evans, a great sprinter. What he suggests is handshake. I remember when I was a young boy, you know, when we were taught the arm movement, we were taught like this. This was the procedure of performing the arm movement. But now, what science says, when you keep your arm back, keep it at 90 degrees, but when you swing it forward, slightly open the elbow angle. Lever becomes stronger, and that provides you bit more transfer of the momentum, and that helps in enhancing the speed. You can see here, you can see Powell. You see the arm, he keeps his palms open, makes the lever longer so that when the arm is swung forward, that momentum is added to the momentum of the body, and there is a possibility of enhancing the speed of the person. Next slide, please. Now, please look at this time action period for improvement of speed. It is a new method which has been devised. Time action period. If speed of a sports person is to be enhanced, it is divided into 5 parts. Reaction time, because on your marks, set, fire. The reaction time for leaving the starting block. And then block clearance, acceleration time, speed maintenance time, and finish time. I'm sure some of you must have gone to a stadium when 100 meters event is going on. And many times when you sit as a spectator, you feel that the sprinter, right from start up to end, his speed is increasing, his speed is increasing. It does not happen. Even over 100 meters, you have phases when your speed varies. Now, look at this curve. Sprinter starts from here. On your marks, set, fire. Reaction time of the person. Then accelerate. This is the longest phase where the velocity of the sprinter increases. And then this is the phase, 15 to 20 meters. Women sprinters are able to maintain their 100% speed. Maximum distance, 15 meters. Male sprinters, maximum distance, 20 meters. You know, when you're sitting in a stadium, you think that right from start up to the finish line, his speed is increasing. It does not happen. Maximum distance over which international level sprinters have been able to enhance their or maintain their speed, it is 20 meters, females 15 meters. And then after this, there is a slight deceleration because sprinter is getting tired. Sprinter is getting tired. There is a slight deceleration, but then in the last 10 meters, 90 to 100 meters, again there is a very slight acceleration. अब आप कह रहे होंगे यहाँ तो डिसेलरेशन हो गई, यहाँ एक्सेलरेशन कैसे हो गई? Speed depends upon 2 factors. One is intensity of the running, and second is length of the stride. Length of the stride also affects the speed of the person. So what the sprinter does in the last 10 meters, he or she enhances the length of the stride by 10 to 15 centimeters.
by 10 to 15 centimeters, the stride length is enhanced, and that results again in slight increase of intensity here in the last 10 meters, and that is how you are able to give your best performance in a speed event. Next slide, please. Now these are 100-meter, 10-meter splits of the world's top sprinters. Look at and compare that with the diagram which I just shown. This is the world record performance of Usain Bolt, 9.58, Asafa Powell and Tyson Gay. Look, this is what I said, where they maintain their performance. If we had seen Usain Bolt in his earlier years, what Usain Bolt used to do, after crossing 90 meters, he used to raise his hand and he had already won the event. It has been in the beginning, he used to raise his hand. In terms of style of running, it has a negative effect on the people. So what he did, he created a world record. Initially, look at this which I showed you, reaction time of the person. Now, power reaction time is available. A Geisler's reaction time could not be recorded because these values I take from the, computer. You can get all these values of all the sports persons, and this is how 9.58 seconds. When he clocked 9.58, Usain Bolt said, I am capable of running 100 meters in 9.40 seconds. It did not happen. It did not happen. Mind goes elsewhere, but what actually you see, it is slightly different. Next slide, please. Now, muscle memory. You talk about memory when you study, and there is also something technical called muscle memory. If you do same exercise day in and day out, muscle memory develops in the muscle. And what happens? Your performance after few days starts declining. Therefore, after, once you have maybe 10 days of compensation or 15 days of compensation, twice you have done, change the exercise. If abdominal muscles are to be strengthened, or quadriceps are to be strengthened, or hamstrings are to be strengthened, for each group of muscles, different exercises are available. You must, after 2 periodizations, change the exercise, because if you continue following the same exercise again and again, that exercise efficiency declines. For that individual only, exercise efficiency does not decline, but for that person, that exercise will not give him or her 100% difference. Therefore, at regular intervals, exercises for different muscles should be changed so that you get the maximum benefit. And the last thing, how to work out. I have talked about intensity, and another important factor is the recovery between 2 bouts of loads. Recovery is very important. How to calculate recovery? How the recovery is to be calculated? Now, this recovery is for interval training. I have said 70 beats per minute, where a person takes 70 to 80% load for interval training. 70% load from 70 will raise the heart rate to 170, and 80% load will raise the heart rate from 70 to 180 beats per minute. From here, and then recovery begins. And I have divided the recovery phase into 3 parts. This is very important to understand. This is the phase of recovery: 1/3, 1/3, and 1/3. If you want interval training to provide maximum benefit to the person, at this point where the first recovery period ends, the second bout of load is to be taken at this point. And if you are developing speed,
next bout of load is to be taken at this point, because for speed development, you want complete recovery. And for endurance development, you want incomplete recovery. Now, first repetition was started at 70 beats per minute. If a sports person has to do 10 repetitions in interval training, first repetition at 70, remaining 9 repetitions are to be done when the intensity is between 100 to 110 to 120. Now you may think, पहला तो उसने 70 में किया, जब बाकी 9 repetition 110 और 120 में करेगा, तो his heart rate may go to 190, 200. It does not happen. Heart rate is directly proportional to intensity. So long intensity is between 70 to 80%, heart rate will not go beyond 170 to 180 beats per minute. And this recovery is to be provided, and then remaining 9 repetitions, and you will see that the person gets maximum benefit from the training loads. Now, ladies and gentlemen, next slide लगाइए आप. Ladies and gentlemen, after having listened to my lecture, there are 2 possibilities to enhance performance. One is take help of science. अगर आप साइंस का सहारा लेते हैं, you can do it. And second possibility is doping, which is not permitted. Doping is not permitted. Only way is take support of science, and I can assure you, you also will be able to create world beaters in performance. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, sir. What a beautiful presentation. As Madam told, sir is our Pitamaha Bhisma. 39 years back, I was a student, and sir was my one of the favorite teacher. And my words failed to express. And today I am really very happy that I, being the chairperson, I got this opportunity. And my simple words fails to express. Thank you, sir. Thank you. If you have any question, please ask. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. कर लो. I request Bansal sir. I request Anukriti ma'am to please come on stage. I request Anukriti ma'am to please come on stage. And I request Dr. Uppal sir and Dr. Bansal sir, along with Dr. Piyush Jain sir, to kindly felicitate ma'am. I request Vasanti ma'am to please come on stage as well.
And I request Dr. Piyush Jain sir along with Dr. A.K. Bansal sir to kindly do the honors of felicitating Vasanthi ma'am. Thank you so much. Moving ahead towards our next presentation, we will be having Dr. Bhupati, Assistant Professor, Department of Physical Education, National College, Tamil Nadu, to share his ideas on the topic efficacy of an adaptive gymnastic program in enhancing physical and psychological variables in children with neurodevelopmental disorders. Very good morning to everyone gathered here. It's a great joy and pleasure to stand before you all, and I'm very much happy to present my topic, which titled on efficacy of an adaptive gymnastic program. Just let me explain the topic which I have chosen, how adaptive gymnastics could bring changes among children with special needs, children those who are affected by neuro developmental disorders. So adaptive gymnastics, in my study, I have applied. So I have given few treatments, few tests, pre and post tests. So by giving training, I have seen the changes among the special children. So before conducting this test, I have approached the school, the kids where they are studying. The school name is called Dolphin School. In Trichy, Tamil Nadu, nearly 30 schools, 35 schools running with special children. So one school I have chosen, their school name is Dolphin School. There are a lot of students are studying there. So I have chosen 20 kids. 20 kids. In our college, we have a department, BSc Physical Education Department. There, nearly 35 students are studying. They are doing their undergraduates. So we have seen when they are joining in our college first year, after that, when they are completing the degree, we can see a lot of changes in them. While pursuing their degree, we have given many physical activities. We have concentrated more on their sports. So we can able to see a lot of changes. So I plan, so for small kids, before they are getting into their higher studies, so we can give some kind of training which could help them to do their physical ability and do their task in an efficient way. So before stepping into my topic, let me play a video. Kindly everyone watch. So what type of training, how they are doing their training. So through which how they develop their mental and physical abilities. Pankaj. Video. So by seeing this video, you will come to know neuro developmental disorders children, how they are doing their activity. Video. Pankaj.
So, neurodevelopmental disorders are a group of defects among special children such as autism, epilepsy, and intellectual disabilities. So I have chosen 20 kids. 10 kids were given training, another 10 kids were control group. So weekly thrice I have given this training for them. Every evening I used to go to their school and 1 hour I used to give training, and there to train them we have teachers also there. So first I have taught the exercise how it has to be given to them, and I have got the willingness from the parents also. So I have explained all the activities that how they are going to perform. So nearly 6 weeks I went to their school and I have given training weekly thrice. So pre-tests were taken. After the 6 weeks I have taken the post-test also. Video. Which video is not playing? Okay, so I have prepared a video that how that adaptive gymnastics structured skills I have given to them. So if you see, it will be you will have a very good understanding. So slides, shall we go slides? Next slide. So gymnastics, you all may aware that it develops all the physical fitness components, health related and skill related. Gymnastics is one of the oldest sport. Whoever doing gymnastics, they will excel in all the sports and games. So gymnastics in olden days, it has been practiced for the purpose of to develop their in ancient period Greek people, they practice gymnastics to develop their fitness, and olden days there is no weapons or this and that, so for the war purpose and to maintain their soldiers athletic performance, and to maintain their hygiene, to protect them from the disease. So it has been practiced. So gymnastics introduction I have given here. So many sports it has been evolved from the gymnastics. Next slide. So neurodevelopmental disorders, why it's occurred due to the brain improper brain development and the nerve disorders. So due to that the neurodevelopmental disorders are happening. So children with ADHD, ASD and hearing impairment, intellectual disability, these are the disabilities are comes under neurodevelopmental disorders. So the present study, neurodevelopmental disorder students are taken for the study. Next slide, next slide. The statement, the study enhancing physical and psychological variables, how it has been developed, how the abilities, how it has been developed through adaptive gymnastics by giving adaptive gymnastics training. Next. So already I have said the methodology. I have taken 20 kids, 10 kids underwent training, 10 kids they are control group. So structured program I have planned and I have given training every week 3 days. 6 weeks it has been given. So pre-test and post-test were taken. Next slide. The statistical analysis, ANOVA I have tested to collect that data. So the school which I have chosen, Dolphin Special School. So ANOVA I have applied to find out the result. Next. So these are the summary of
mean and dependent t-test for pre and post test on agility, cognitive, experimental and control groups. So I have chosen one variable from physical and another variable from one variable from psychological. So while giving training, after the training, I have seen the significant result in agility. When I am approaching the school, they told me, you can ask why I have chosen only the agility in health-related physical fitness. They said they are lack of doing tasks. They are very slow in tasks. They could not change the direction. They will stand in one place. If you ask them to go or 10 meters or 15 minutes, they cannot go. So we want to improve their speed and agility, they said. So speed and agility has interconnection. So I thought we will take agility. So they are good in academics. They have very good infrastructure for the academics. They said we don't have facilities for sports to improve their sports skills, to improve their fitness. So they said you concentrate on agility, something they have to move fast. So I have chosen that agility for the physical ability. Then to check their cognitive ability, I have applied NASA task the tool. I have given a questionnaire to the parents and the teachers pre and post to collect their to see the changes in them. Next. So this is the graph. The next. So significant difference which I have seen after the training. Next. So we have many studies for the normal students, but those who are affected with the autism and ADHD, for them there is no much studies for them to give good training to develop their physical and mental abilities. So to develop their physical, mental, social and emotional developments, I came to know that after the training, compulsory sports activities will develop their physical, mental, social and emotional abilities where they can survive in the society with full of wholesome developments. So after the test, their parents and the teachers, they said they are very much happy. They said if the study, if you what you have done, if it has done the full year, it will be very nice for our children. Surely they will perform their task and their sports equal to the normal students. So by giving this training, I have seen lot of changes. So next. So neurodevelopmental disorder students, to bring changes in them, we have to give, we can go with the sports activities which will help them to develop their physical and mental abilities. So it will be further future research to study the effects of adaptive programs in adults with NDT or their intellectual disabilities. So adaptive gymnastics, sure, it will help those who are affected with neurodevelopmental disorders in future. If they go with the training, they can develop their physical and mental abilities and social and emotional, everything, the wholesome developments they can get. Thank you. Thank you so much, sir, for this wonderful session and information. Moving ahead, I would like to request Mr. Subrata Dey, who will be here for moderating the session. Before we move ahead with the next session, I request Mr. Prasoon Chatterjee, sir, the Secretary PEFI, will come up on the stage. And I request Bansal, sir, and Sanjeev, sir, to please come on stage.
This is to acknowledge your contribution in the field of physical education and sports. And I would also request Mr. Ajit sir, the manager, IOTA Waters, to please be here on the stage as well. Mr. Ajit sir from IOTA Waters, the manager from IOTA Waters. Moving ahead towards our next session, we have the next technical session, which builds on the keynote presentation and focus on transplanting sports sciences to tangible performance outcome. The theme is Science to Podium, Integrating Sports Sciences for India's Olympic Aspiration 2036. In this session, specialists from physiology, biomechanics, psychology, and performance analytics will demonstrate how scientific insights directly influence medal outcome. Case examples will illustrate testing, monitoring, and technology-driven insights that optimize training loads and technique. We have an outstanding panel of sports scientists and practitioners from the premier institutions. Please allow me to introduce our panelist, Lieutenant Brij Kishore Prasad ji, Head of Department Health Sciences, LNIP Gwalior. Dr. Prasanna Balaji, the Vice Principal, National College, Trichy. Dr. Arjit Chakrabarti, Assistant Professor, Sports Physiology, National Sports University. Dr. D.K. Srivastav, Sports Science Medicine from MP. The moderator for the event, this particular session, will be Mr. Subrata De, the Assistant Professor, Sports Physiology, Sri Sri University, and former sports scientist, Sai, NERC. I request all the panelists and our moderator to kindly grace the dais. The time for this technical session is half an hour. I now invite Dr. Subrata to please moderate this session. Thank you, Dr. Amrata, for this nice introduction and basic information about this technical session, especially the panel discussion. Yeah, good afternoon, ladies and gentlemen, respected dignitaries and present on the dais, our respected all the panelists. I think it is enough that you have joined with us this specific particular panel discussion on this key theme that we are having for this 8th National Conference on Physical Education and Sports Sciences. So, ladies and gentlemen, as we know that vision for this hosting 2036 Olympic, keeping in mind the sports science. At the very outset, I would like to thank Team PEFI for taking this particular area in this national conference and giving this opportunity to moderate this specific technical session on sports science area. So needless to say, quickly, I will just give a brief introduction. I will not take much time because only designation will not effective to make them introduced in this big podium or platform. So quickly, I will just take this opportunity to introduce our first panelist, Lieutenant Dr. Brij Kishore Prasad, who is presently heading the Department of Health Sciences in Premium Institute, LNIP Gwalior. Also, he is a part of IQAC member, as well as, I guess, he is heading the Department of Research and Development Cells. Welcome you, sir. Ladies and gentlemen, quick applause for sir for joining in this session. Second speaker, we are having Dr. Prasanna Balaji. Sir is basically heading the Department of Sports Science and Physical Education, National College, Trichy. Also, he is the Vice Chairman of PEFI Tamil Nadu chapter. Welcome you, sir. Moving on, our third panelist, Dr. Arjit Chakrabarti, who is the Head of Department of Nutrition and Physiology, National Sports University, Manipur.
And he is also having a vast experience in research, especially different projects like ICMR, HRD ministry. So welcome you, sir, in this platform. And last speaker for this panel discussion, Dr. D.K. Srivastava, sir, who is the gem in the area of sports medicine. So welcome you, sir. So as we know, this panel is going to be very heavy in terms of how the science is going to inculcate in terms of sports performance optimization. Ladies and gentlemen, as you all know, the importance of sports science is nowadays it's like need of the hour. Before this panel discussion, last session our Upal sir was explaining about the technology and its integration. So with that note, I am just opening this floor. First, I will go to our first panelist, Lieutenant Dr. Brejikishore sir. Sir, you are in institute where the consequences of sports science and integration of different knowledge and upgradation in terms of performance outcome, especially for physical education, you know. So how do you think that not only coaching as the only parameter to nurture the elite athletes, especially we are talking about Olympics. So how this sports science different domains, starting from physiology, psychology, biomechanics, analysts, and nowadays more importantly, performance analyst. So how do you think this is like a plan where you have to start at the early level and that to an Olympic cycle? So could you please throw some light on this? Yeah, sir, please, with this. Thank you very much, whole PEFI group, for organizing such a vast platform for each and everyone who is present here. As Subrat was telling that we are having a challenge ahead of us, that is we are focusing on the, I would say, medal, right? Those challenges are not common with us, it's common with almost all the countries, I would say, and especially the countries who are in the phase of development. We are comparing ourselves most of the time that we become a developed country, and that is a big challenge we are having. We are still a country which is about to reach that stage. As we had reached a standard in case of physical education, earlier we don't have that much, platforms in case of physical education. Now we had at least 3 major domains which are categorically mentioned by each and everyone, that there are 3 pillars which are required for enhancing the standard of sports. One, you can call it as a physical education teacher in the very beginning. Second, you can mention it a person who is getting the seed which is already planted and getting the results, that is called a coach later on after the task is over. And then last, as Subrat was focusing about the sports science, the last phase goes to the sports scientists, right? So it's a big journey which we have to start. And if we talk about only the sports science alone, which cannot stand up itself, right? We have to go in a path, slow and steady. As most of us know that there is a story of tortoise and a rabbit. So it's a very famous story. It started that if you work hard, then only you can become a champion. Then there is another phases of the same story, that second round happens, okay, we will go for another round. Then rabbit said, okay, we will go. Then tortoise said, not only 1 round, we will go for 2 rounds. First round is already over and you won it. Second round goes for, I would say, on the plain surface. And as we all know, rabbit is going to win, and he obviously got won. Then the second round, the rabbit says, no, it will not be on the surface now. It will be on water now. So what is going to happen, that the tortoise got again a win, right? So we have to develop an interdisciplinary approach. We have to go for the approach which is having so many other dimensions. We have to take out our steps from PE and sports
We have to merge our steps in other technical fields also. May it be biomechanics, may it be analysis, it may be, I would say, IT. And Madam rightly said that we don't have anything which is called as a sports tourism kind of stuff. And Madam, the chairperson, Madam has said, do we have any course? The challenge is there, right? Madam was telling to physical education teachers or us to inculcate a subject, and we are telling Madam to inculcate a subject. So we all have to, put our fingers together. We can also go for 1 or 2 credit of the things, and maybe Madam also, if she is also working in sports science or sports, she can also put up 1 or 2 credits of the sports for us also, right? Likewise, we can have an integration of the things. As far as the standard of sports science we are talking about, so I just have a small PPT. भैया आप थोड़ा शेयर कर पाएंगे जो पीपीटी एक छोटा सा दिया था मैंने जस्ट 1 minute only, दिया था मैंने आप I'm just talking about the standard of the things if it is first wala. Yes, good. See, these are the developed countries where they had started focusing on the sports sciences. These countries are having their own pockets of growth. Similarly, we also think of something for ourselves. If you talk about Finland, they had a very good policy of the sports science and physical education. Right? They are not bothering about the medals. But yes, they do have very good policy. Similarly, if you talk about China, they do have a talent identification scheme in very beginning itself. As Subrat is telling me, so I am not going into detail, but you can just, go with your own strength, which we are having. And as far as the standard of the sports science we are talking about, yes, as we had step up from the physical education and sports, now we have to look for the sports sciences. I am having a request to all the teachers or the professors or head of the departments or the vice chancellor who are sitting here, kindly start the course of sports sciences in your departments. Right, BPEd, MPEd is almost now over. We have to go for MSc sports sciences, BSc sports sciences. Then only we can achieve that target which our higher authorities are looking for, you would say 2047 of Viksit Bharat in sports. Thank you very much. Thank you, sir. Moving on, just quick follow-up, as we know that monitoring and the physiological testing, especially for the performance optimization, it is not limited to laboratory, rather it is coming up in the FOP, that is field of sports where athlete do train. So Narjit sir, this is regarding the importance of physiological monitoring, especially let's for example heart rate, then heart rate variability, monitoring the day-to-day training load. How do you think that this, the different matrices which is being monitored by the sports physiologists and sports scientists, still I feel there are certain gaps to translate the knowledge and information in terms of implementation to their respective sport-specific training. So as a physiologist, how would you suggest and your prospect in this area to disseminate the knowledge of different database systems in terms of coaches' point of view? How do you translate and communicate it, especially when you are preparing for a especially long-term Olympic cycle? Yes, sir. Thank you, sir, for this opportunity. First of all, at the outset, I would like to thank PEFI for giving us the platform here. As sir rightly mentioned about interdisciplinary, I think we are having an interdisciplinary panel, and it is rightly, thanks to PEFI for bringing us together. Coming back to the question that Olympic medals, transitional gaps, practical knowledge applications, transitions, it's a long phase. But I'm happy that we have been able to come to a common conclusion where sports scientists, coaches, support staffs, and all other allied persons are coming now and bringing bridging the gap. The experience of the coaches, the sports scientists, merging together, they share a very sweet spot, and this sweet spot is the success. It is to mention that medals in the Olympic
is not mere a 1 day or 1 year platform. It is a engineered outcome. It is not a 1 day, it is not a 1 year, and that is the classical physiology of periodization that the coaches do maintain. And exercise physiology has a very important role for it, planning the cycles, monitoring it, training it, and if needed, refining it, having a very close contact with the coaches and the support staff so that the optimum thing can be developed. As a sports scientist and as an exercise physiologist, we all know about aerobic strength, aerobic development, speed, agility, power, endurance, all those different types of indicators are there. But that will not be translated and that will not be given an 100% credibility if that transition phase is not reflected and shared with the coaches, where experience, sports scientists integration and their implementation is very important. A very small and significant role is being played by National Sports University, Manipur, where we, along with the physical education, we, the sports scientists, sports psychology, sports physiology, sports nutrition, we are all sitting together in a very unified and a bilateral platform where we are trying our level best to do the thing. And I'm very much sure government, PEFI, and all, they are thinking about the importance of this interconnected discipline curriculum, and more often than not we are coming up with this, and I think this is a very good start, and I am sure that if this practice is being carrying on, then definitely in the long run India is going to host 2030 and 2036 Olympics, the two Commonwealth and the Olympic, very big event, and integration of science and sports science along with the grassroots level of physical educationist will definitely boost this cause. Over to you. Okay, thank you, sir. So, fine. Moving on. As you know that we came to know about the importance of sports science, following the importance of testing, monitoring, and ultimately it comes to the implementation part, where coach is the pillar to make it in ground reality. Quick to our next panel, Professor Dr. Balaji sir. You belong from a state, in almost all the states, if we talk about the services for sports science, still in grassroots to the level of national, I can say there is a huge lacking in terms of services of the sports science. So what do you think that in terms of policy, in terms of existing facility, what are the things that could be embedded for betterment when we are talking about hosting Olympics? So could you please throw some light across state? What will be the uniform pattern or policy that could be adopted without investing much amount to have the sports science access? Yes, please. Very good afternoon, and good afternoon to my fellow panelists, dear experts. At this moment, I just wanted to register my gratitude to PEFI. PEFI is creating a wonderful platform for creating the fever towards the Olympic movement. As far as me is concerned, an education system is totally incomplete without sports science, because since we have been talking so long and we know the gray areas and we know we are good at where to hit and how to hit, but the problem here is the methodology, how we supposed to head on. That is the problem we have been facing so long. But my point here is the attitude does matters, and in terms of students, the younger generation attitude, it is not like yesteryears. The attitude among the students, it has been changed. We have to put them on the track. I just wanted to, for instance, I just wanted to spell it here. I got an opportunity to attend the conference at Japan. The organizers, they have taken us to the school and we have visited a classroom.
the classroom blackboard, it has written like this: if you cannot, the classroom cannot. If the classroom cannot, the school cannot. If the school cannot, the entire Japan cannot. If the entire Japan cannot, the entire Tokyo cannot. My point is very simple and crystal and clear. The attitude does matters. And the students, for instance, as far as our college is concerned, I just wanted to quote some of the incidents which was happened earlier. One of the guy who hails from a small village, and he's good at playing cricket. You know what happened? After scoring 100 runs, and then he got the chance to play City League, then he scored 100 runs. I know he will be under the impression that the media is spoiling, and my point is very simple. We have to impart the etiquettes, and we have to impart the spirit of the sports, which is quite lagging. In order to get the medal in Olympics, we have to fine tune their character first. If we have the strong enough to impart those lines, certainly we can shape. But as in terms of technological aspects, you know, since we have been talking about the oxygen chamber and ultrasonic bath, still are we putting into the practice for getting a quality outcome? In such case, if you ask me personally, it is not so. We have those technology, but the students were deprived of getting into that. So in order to make that, India should come forward to create the strong uniform policy across the statewide. I just wanted to make one more point here. I approached my school education minister. His name is Anbil Magesh Poyamli, but he has actually interest towards sports. I persuaded him to do research on physical activity for skill development among school children using machine learning technology. He accepted. He has kind enough, and he executed the task very beautifully. And before and after the exercise, the outcome of the research, you know, it is highly significant. In such a way, we have to create the fever, and now the fever is actually through PEFI, it is creeping up, but still it is actually we have to pull our socks up, and we have to accelerate more and more and further. Yeah, fantastic, sir. Moving on, our next expert related to the expertise of sports medicine, sir, Dr. Srivastava, sir. We know that communication is very important when it comes to medical profession, especially that to sports medicine. So, how do you think that communication in terms of complex ecosystem where you having sports physiotherapists, you are having doctors, you are having masseurs, and also coaches, and obviously sports science team. So, sir, how do you think that it is very important to translate the knowledge for the athlete's safeguard and prevention of injury, and moreover return to sport? So, could you please throw some insights on this area? थैंक यू. मुझे आज इतने लर्नेड लोगों के साथ में बैठने का मौका मिला, इसके लिए मैं पेफी को धन्यवाद देता हूँ. मैं टोटली जो है वो प्राइवेट और प्रैक्टिशनर्स हूँ, जिसके लिए मैं सर लोगों के जैसा एक यूनिवर्सिटी या प्रोफेसर नहीं हूँ. तो मेरा यह है कि मैंने 35 साल जो है अपने मेडिकल को दिए एज ए सर्जिकल एसोसिएट, और 6 साल लास्ट के जो है मैंने कार्डियक में भी काम किया हुआ है. 2005 से मैं स्पोर्ट्स साइंसेज में हूँ, और स्पोर्ट्स साइंसेज के अंदर ये देखने में आ रहा है कि मैंने जो है वो इंटर स्कूल से लेके डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल और एशियन गेम्स अभी तक करा चुका हूँ एज ए स्पोर्ट्स डॉक्टर. सबसे पहली बात जो है ये कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशंस का जो है बच्चों को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, और ना ही जो है वो स्कूल में दिया जा रहा है. दूसरी बात यह है कि एंटी डोपिंग के कारण कई दवाइयां जो हैं वो बैंड हो चुकी हैं, जो कि सिर्फ स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर को ही मालूम है. अब हमारे मध्य प्रदेश के अंदर मैं अकेला हूं, और सवाल ये है कि हर बच्चे को जो है इंजरी होती है, वो जो है लोकल डॉक्टर के पास जाता है. लोकल डॉक्टर को मालूम नहीं है कि क्या मेडिसिन इसको एंटी डोपिंग के कारण नहीं देना चाहिए, वो ही प्रिस्क्राइब करता है. बट द थिंग्स कि हम जो
चाहते हैं कि भाई जैसे कि स्पोर्ट्स के लिए आपने 1 घंटा जो है मुकर्रर कर रखा है स्कूल्स के अंदर, वैसे ही जो है आधा घंटा जो है वो बच्चों को न्यूट्रिशन तो बताएं। न्यूट्रिशन मालूम ही नहीं है बच्चों को कि एथलीट्स को क्या देना चाहिए, क्रिकेट में क्या देना चाहिए, बास्केटबॉल में क्या देना चाहिए। आप यदि एक नॉर्मल मैन की तरह से जाएंगे तो आप नॉर्मल डाइटिशियन के पास में 2200 और 2800 कैलोरीज के बीच में बंद कर देती है, जबकि हमारा जो है न्यूट्रिशन 3600 से चालू होता है, एक 10,000 कैलोरी तक जाता है। तो किसको मालूम है कि कितना क्या लेना चाहिए। पेरेंट्स आते हैं, बोले साहब हमारे बच्चे को ये खेल रहा है बच्चा, हमारा क्या देना चाहिए। हम बता तो देते हैं, पर इंडिया के अंदर सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी ये है कि एक बच्चा खेल रहा है और 3 बच्चे जो है नहीं खेल रहे हैं, तो पेरेंट्स किस पे ध्यान देंगे। सबसे बड़ी बात ये है। तो सवाल यह है कि मेरा यहाँ तक निवेदन है कि भाई आधे घंटे का कम से कम हर दिन नहीं लगाएं, पर वीक में 3 दिन लगाएं, तो जिससे कम से कम बच्चों को न्यूट्रिशन तो मालूम पड़े कि बैडमिंटन में क्या दिया जाता है और बास्केटबॉल में क्या दिया जाता है। बच्चों को मालूम, नॉलेज ही नहीं है बच्चे। अच्छा, आजकल के बच्चे जो हैं वो फास्ट फूड खाने से कुछ नहीं मिल रहा उन लोगों को। तो दैट इज द वे द थिंग्स की जो सबसे बड़ा जो अपन जो उठाना चाह रहे हैं कि भाई ओलंपिक के अंदर सबसे पहले ग्रास रूट से तो अपन उठे ना, तब तो अच्छा। जब अपने को शहर में नहीं मालूम है तो गांव से जो बच्चा आया वो उसको क्या मालूम होना चाहिए। तो दैट इज द वे द कि भाई सबसे बड़ी बात जो है ये चीजें जो है, इंजुरी तो बात की बात है, बच्चा खेलेगा उसके बाद में लगेगी, पर सवाल ये है कि जो न्यूट्रिशन जो सबसे बेसिक है वो तो कम से कम बच्चे को मिले। अब सवाल ये है कि न्यूट्रिशन के अंदर ग्रीन वेजिटेबल्स मिले, पनीर की सब्जी मिले, स्प्राउटेड मिले, बॉइल्ड वेजिटेबल मिले, पर तो कौन सा बच्चा क्या खा रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी जो मैंने अभी तक जो टूर्नामेंट्स कराए हैं उनके अंदर जब ऑर्गेनाइजर से बात करो कि आप लोग क्या न्यूट्रिशन में दे रहे हैं, बोले हमारे पास फंड नहीं है। अब ये सबसे बड़ी बात आती है कि फंड नहीं है तो कैसे क्या दिया जाएगा, ये तो वही जानेंगे ना सर क्या कराए। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि हर जगह का जो है वो लोकल फूड दे दिया जाता है। भाई कम से कम बेसिक जो दिया जा रहा है स्पोर्ट्स के अंदर वो तो दो आप, उसके बाद में आप अपना बेसिक फूड लाओ। Right, sir. दिस इज द वे। Yeah. So taking these inputs, starting from sports science as a whole, then especially exercise and sports physiology, and followed by, the implementation part. So just quick common question to all of you. Can you share any specific case where we can see the small mistake in terms of whatever, it could be sports science, maybe training, that can cost a medal in a large competitive, arena? Any case effective that you acquire throughout Yes, your yes. so far experience? I hope most of you had also across the same thing. There was a female Olympian very recently. Can anybody name from the backside? Audience at the backside. Female Olympian had the same problem. Just because of the weight gain. Yes. वो मैडम वो लोग बातें कर रहे हैं ना इसलिए पूछ रहे थे. Yes, please. So, okay, this is what the case is. Most of we are aware of it, right? Just because of the scientific support she is not having, I would say, honestly speaking, maybe the reasons are others also. But one of the basic reason is that she don't have a better scientific support with her. And that is why it happened. Some people will be saying other part of the coin also. But that is maybe there. But you can see very easily, this is one of the reason which we had very recently suffered with it. Is that right, Devrat? And another part, as Bansal sir himself is sitting here, Durnachar Awadi, we had a long supporting staff with each and every team. Very recently, I had an opportunity to have the 2 World Cups at Bhubaneswar. So Germany is having a squad of 22 players and 30 support staff. How many? More than the team contingent itself, players, right? 22 and support staff is 30. Here, if we talk about Indian contingent, if it happens same in our condition, we questions a lot. कि इतने सारे officials वहाँ क्यों चले गए, ये किस लिए चले गए? These are the things which are to be controlled. Yes, there are some bad practices all over, but
we do give the support to all the players with these all experts until unless we don't have a good, supporting staff with the each and every team. And I would request the director of sports who are sitting even here also, we had a process of inculcating a one manager, one coach in a team. Let's start with one support staff, maybe it a coach, master, dietitian, whatever it is. It depends on your university's fund itself, so we can have a better, stands for the things. Exactly, sir. Right. Thank you. Very nicely said. Yes, sir. Please, but we have time constraint, so. Sir. Yes. जो अभी डॉक्टर साहब ने बोला रिगार्डिंग सपोर्ट स्टाफ, तो फिर अब आज की डेट में ये बहुत कुछ आपकी फेडरेशन के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो कितना सपोर्ट करती है, सपोर्ट स्टाफ को कितना सपोर्ट करती है। अब जैसे हॉकी की बात कर रहे थे, तो हॉकी में हम आज 10 से 12 हमारे पास सपोर्ट स्टाफ होता है। नेशनल कैंप की बात कर रहा हूं मैं, ऊपर 10-12 लोग हमारे पास हैं। लेकिन बहुत सारे गेम ऐसे हैं जिनमें जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि उनमें सपोर्ट स्टाफ नहीं है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है खिलाड़ियों को। तो हॉकी में कम से कम आई कैन बोस्ट माय गेम। थैंक यू सर। Thank you so much. I think we are now end of this particular panel discussion. So I sincerely thank. Sir, एक मिनट और sorry to sorry. Continue, sir. Because science should not be stopped with especially time. So we'll continue the discussion. To conclude in a nutshell, ladies and gentlemen, we know that science should not be limited to laboratory. Definitely, as India is going to hope or hosting 2036, so only the Olympic is not based on the medal. What I feel, even I think we all are agree, it is rather proper plan, nurturing athlete from grassroots to the level of podium finish. So with this note, let's take this as action, as inspiration, and we will definitely hope in future the science will make these things more easy with the advancement of technology. With this note, I am ending this session. Thank you so much. Thank you so much for all the attendees who actively listened our this session. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Taking this opportunity, I would like to welcome you, sir, for calling out people for the book release. हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, वरना जितना अच्छा डिस्कशन यहाँ हो रहा है, जितने अच्छे प्रेजेंटेशन यहाँ हो रहे हैं, बट वी रिक्वेस्ट टू कि हम लोग आपस में बाद में भी बात करें और वो रिकमेंडेशन आप लोग पैथी को मेल से भी दे सकते हैं, विच वी विल सबमिट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो चूंकि एज एन ऑर्गेनाइजर हमारी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कई सारी चीज़ों की, सो वी हैव द 2 बुक रिलीज academically. One is the for class 12 physical education practical record book है डॉक्टर ए के uppal सर और डॉक्टर आलोक शर्मा की। तो मैं uppal सर को डाइट पे बुला रहा हूँ, बंसल सर को डाइट पे बुला रहा हूँ और सुजीत मान सर को डाइट पे बुला रहा हूँ। आप तीनों लोग ऊपर आ जाएं एंड आप लोग भी। मैं बता रहा हूँ ये बुक ना खेल साहित्य केंद्र के द्वारा पब्लिश हो रही है, उनका स्टॉल भी बाहर लगा हुआ है, पेफी टी शर्ट भी अवेलेबल है, एमबे के लोग भी हैं, आप सब लोगों से मिलो, आप लोग यहाँ आए हो तो अच्छी नेटवर्किंग भी कर सकते हैं।
और एक अगली बुक है पर्सपेक्टिव इन फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स स्टडी, ये प्रोफेसर चेतना सामंत तोमर की। मैं चेतना मैम को बुला रहा हूँ। आलोक सर आप नीचे बैठिए। सर दूसरी बुक रिलीज कराना। Thank you, sir. Now it's time to felicitate our extreme speaker, Srivastava sir, 1 minute. And I request to all the speaker, please sit. और डॉक्टर A.K. Uppal sir, डॉक्टर बंसल सर एंड सुजीत मान सर प्लीज डाइट पर रहें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आलोक मिश्रा जी से, पेप्सी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो आकर हमारे आज के पैनलिस्ट ब्रिज किशोर सर का फेलिसिटेट करें। आलोक मिश्रा। तैयारी करते हैं। इसके बाद हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट डॉक्टर प्रसन्ना बालाजी, वाइस प्रिंसिपल त्रिची नेशनल कॉलेज। पहले ब्रिज किशोर सर। For this, I invite Akash Gohil, our Secretary, PEFI, Gujarat. Dr. Prasanna Balaji, Alok. We have the representation from Himachal Pradesh, Dr. Ashok Dhiman sir. Please come on the dais. और अरजीत सर का नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के जो हमारे उनका स्वागत करें, अरजीत सर का। Then we have the panelist अशोक धीमान सर, आप आइए, स्वागत। अरजीत सर, आलोक बिल्कुल टाइम। अरजीत सर को फेलिसिटेट करें। अशोक धीमान सर। लेशराम थंबल सर फ्रॉम मणिपुर, पेप्सी सेक्रेटरी। लेशराम इज हियर। ओके। एंड संजीव चौधरी सर। डीके श्रीवास्तव सर को फेलिसिटेट करें। डीके श्रीवास्तव सर। सुब्रता देव सर को फैसिलिटेट करने के लिए मनोज सर, एनकेएफ से, नेशनल कराटे फेडरेशन से मनोज सर। एक बार सुब्रता देव सर को फेलिसिटेट करें। जल्दी करो तो प्लीज चला करें।
मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि 2-3 चीजें जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। अभी हमारा पैरेलल पैनल डिस्कशन है ऊपर 2 बजे से 4 बजे तक सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे। मेरा जो पैनलिस्ट है उनसे भी अनुरोध है, बिकॉज हम लोग 1 घंटा शेड्यूल से लेट चल रहे हैं, ये सब चीजें 1 बजे तक खत्म होने जानी चाहिए थी। तो अभी जो अगला पैनल है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे अगले पैनलिस्ट से कि हम लोग थोड़ा क्रिस्पी बात रखें, और जो भी हम लोग को बाद में डिस्कशन करने हैं वी कैन डिस्कस ऑन वो। यहाँ पर हम जो वो बात कहें जो बात टॉपिक से रिलेवेंट है और दैट इज डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है। यदि हम डिस्कशन करेंगे तो इट्स ए लॉन्ग टर्म डिस्कशन विच वी नीड मोर टाइम, बट क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे लोग आए हुए हैं, इतना बड़ा पैनलिस्ट आए हुए हैं, तो हम सब लोगों के साथ को कुछ ना कुछ सुन सकें, इसके लिए आप लोगों से अनुरोध है थोड़ा सा टाइम लिमिट रखेंगे। तो मैं अमृता मैम से अनुरोध करूंगा कि अगला आधा घंटे का पैनल। Return to play decision in allied sports. The role of coaching, injury management, ethics, and performance pressure is the topic for our next panel discussion. We now proceed to the technical session next, which addresses one of the most complex and ethically significant aspects of allied sports. The discussion topic is return to play decision in allied sports. The role of coaching, injury, management ethics, and performance pressure. For this, we have the panelists Dr. A.K. Uppal sir, former Vice Chancellor, Jivaji University, and Chairman Physical Education Foundation of India. Dr. A.K. Bansal sir, Dronacharya Awardee for Hockey, and President of Physical Education Foundation of India. Shri Sujit Manji, Dronacharya and Arjuna Awardee in Wrestling. Shri Bhanu Satdev, Arjuna Awardee in Swimming. Dr. Devinder Singh, Director, Sports Injury Center, SIC, Safdarganj Hospital, New Delhi. Dr. Satyajit Kumar, Dean Academic Affairs, Major Dhyan Chand State Sports University, Meerut, Uttar Pradesh. The moderator for this session will be Dr. Meenakshi Pahuja, Professor, Lady Shri Ram College, University of Delhi. I request all the panelists and our moderator to kindly take their positions on the day. This panel will unpack the intricate decisions surrounding when an injured athlete should feel safely return to the competition. Doctors, physiotherapists, psychologists, coaches will discuss the protocols, risk assessment, communication with the athlete and families, ethical dilemmas, commercial pressure, and section stakes. Participants will gain framework for athlete-centered return to play policies that balance performance goal with the long-term health. I would now like to hand over the mic to the moderator, Dr. Meenakshi Pahuja ma'am. Good afternoon, everyone. As my dear friend Piyush has already requested to make it a little comprehensive session. So before I even begin, it's my formal duty to welcome a living legend like Professor A.K. Uppal on the panel. Then Dronacharya Bansalji, Sujit Manji, and if I'm not mistaken, Devinder Singh ji, from the Sports Injury Center of Delhi. We all know what happens when it is the decision to whether quit or stay on with the sports. ज़्यादातर हम सब वो लोग हैं जो किसी ना किसी लेवल पे खेले हैं. मैं अपनी खुद बात करूं तो मैंने देश के लिए मेडल जीता 1996 में स्विमिंग में. कितनी इंजरीज होती हैं और उस जमाने में हमारे पास फिजियो नहीं था. बात भी करें तो किससे करें, कैसी स्पेसिफिक इंजरी. बट आज स्पोर्ट्स उस मकाम पे है जहां एक एथलीट को असिस्टेंस मिलती है.
देखिए, जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, हमारे साथ इतने बड़े स्पोर्ट्स साइंस के सेंटर के डायरेक्टर बैठे हैं, ये हमें बता सकते हैं जब कॉमनवेल्थ गेम्स में ये फैसिलिटी आई तो एथलीट्स के लिए पहली बार किसी सरकार ने इतना we take immense pride to welcome Shri Pushkar Vora ji, who has been the head of CBSE sports, someone who has steered and nurtured the sports at the school for a very long time. So can we please give a big hand to our entire panel? Thank you, Pushkar ji, for joining. So continuing what I wanted to say, the first time the Commonwealth Games highlighted the importance of a sports science center or a sports injury center. And the legacy of the games was left behind. The good thing after one government to other government was that the importance was, given, and it has been continued. Rather, this government has given more and more budget to establish the sports science backup. Now we see on the website of Ministry of Youth Affairs and Sports, when we talk about that there are awards introduced for the sports injury specialist also, the sports scientist also, which was never there 10 years back. So we see the change, we see the acceptance, and we see the movement happening. Right? Along with the coach, it is the scientific backup that the previous panel also highlighted, that the importance cannot be ruled out. Just today, in our panel, we have, I would like to begin with Sujit Manji. Yesterday, he was sitting next to me. एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी खुद रहे हैं, रेसलर हैं और अपनी खुद की जिंदगी से ये कुछ बता रहे थे. तो सुरजीत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप लीड लीजिए और अपनी जो बात आप कल बताना चाह रहे थे कि क्या गुजरी थी जब आपको चोट लगी और कोई समझ भी नहीं पाया कि हुआ क्या. देखिए, ये एक अर्जुन अवार्डी हैं, खुद खेले हैं और आज ये द्रोणाचार्य हैं, नर्चर कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन को. जो इन्होंने भुगता, आज वो ये चेंज देख रहे हैं. सो हम आप ही से सुनना चाहते हैं, आपने क्या देखा और आज आप क्या देख रहे हैं. थैंक यू मैम. मैं मैम के साथ कल बैठे ऐसे थोड़ी चर्चा हो रही थी कि कैरियर के बारे में, कि कब शुरू किया, इंजरी के बारे में, तब थोड़ी सी बात बताई मैंने कि शायद उन दिनों की बात है, मैंने गेम स्टार्ट ही किया था और मैं रेसलिंग प्रैक्टिस जैसे कर रहे थे. सबको पता है कि आज से 35 साल पहले रेसलिंग मैट बहुत कम होते थे देश में और अभी भी कई बार ऐसा होता है कि एक ही मैट है और कई सारे बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो कई बार इंजरी हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं. ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ कि वो जो दूसरी जो पैर था वो मेरे राइट लेग के ऊपर आके गिरे. मैं उस टाइम तकरीबन 11-12 साल का हूँगा. तो मेरी जो नी का जो पोटेला है ये उधर के साइड में आ गया था. अब जो हमारे उस टाइम कोचेज थे उन्होंने भी इतना ध्यान नहीं दिया और ये है भी एक कि हम लोग जो हैं, जो हमारी नींव होती है, जो छोटे बच्चों को जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वहाँ हम लोग कम ध्यान देते हैं. उसके ऊपर एलिट के ऊपर ज़्यादा रहते हैं पर लेकिन छोटे बच्चों पर जहाँ हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उनके ऊपर कम करते हैं हम. तो उसी के कारण वो देखा नहीं गया कि एक दिन तो वो वहीं पे रही, किसी को समझ नहीं आया क्योंकि ना तो उस टाइम ऐसी फैसिलिटी थी और ना हम अफोर्ड कर सकते थे. आज अगर हम बात करें तो आज तो हर चीज़ अवेलेबल है, स्पेशल इंजरी सेंटर भी बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने. पर लेकिन ये एक दिन तक यहीं रही, पैर सीधा नहीं हुआ. जब नेक्स्ट डे जब मेरे पिताजी आते थे घर से दूध वगैरह लेके तो वो आए तो उन्होंने देखा कि नहीं ये तो इंजरी इसको ज़्यादा है. बल्कि वो तो सुबह आके कह रहे थे आज क्यों नहीं प्रैक्टिस की आपने. मैंने उनको बताया कि मुझे तो वो इंजरी है, मेरा पैर सीधा नहीं हो रहा. तब उन्होंने देखा कि इंजरी ज़्यादा है. उसके बाद
वो गांव में जो देसी जो डॉक्टर होते थे, वैद्य होते थे, उनके पास ले गए, उन्होंने सेट किया और वो बगैर, हो सकता है उस टाइम अगर कहीं हॉस्पिटल में जाते तो सर्जरी करानी पड़ती, पर लेकिन उन्होंने वो सेट करके मुझे कर दिया। पर लेकिन अब उसका जो मुझे भुगतना पड़ता है कई बार, अब इसमें जैसे एज बढ़ती जा रही है तो प्रॉब्लम होती है। तो कहने का मतलब यह कि भाई हमारी जो स्पोर्ट्स साइंस है इसके बगैर अब गेम नहीं है, क्योंकि रेसलिंग जैसे गेम है या दूसरे बॉक्सिंग है या जूडो, जो कई ऐसे गेम है उनमें तो इंजरी होनी ही होनी है। आप जितना मर्जी आप उसका ध्यान रखो, कहीं ना कहीं आपको इंजरी होती है। और हमारी जो स्पोर्ट्स साइंस है उसके बाद जैसे इंजरी होती है, फिर मान लो किसी में सर्जरी भी करानी पड़ती है या उसका रिहैब करना पड़ता है। और स्पोर्ट्स साइंस ये है कि जिसके, जब हम पहले क्या होता था कि मैं अगर स्पेशल रेसलिंग की बात करूं देश में, तो 28 या 30 इयर्स तक जाते जाते सब रिटायर हो जाते थे। पर लेकिन अभी पिछले ओलंपिक में भी हमने देखा, एक हमारे सामने बहुत बड़ा एक एग्जांपल है, लियोन लोपेज है, क्यूबा के रेसलर हैं, जो पिछले 5 ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उनका रिकॉर्ड है, अगर उन्होंने 42 ईयर की एज में भी गोल्ड जीता है। ऐसे ही हमारे जो इंडियंस है वो अभी 35 साल, 36 साल, 37 साल तक खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सारा हमारा स्पोर्ट्स साइंस का ही जो असर है उस पर दिखता है। थैंक यू। जी सुजीत जी, एक चीज और मैं आप सबको रूबरू कराना चाहूंगी जो कल ये मेरी नॉलेज में आया, और मुझे इनके साथ बैठने का कल थोड़ा सा मौका ज्यादा मिल गया। तो मुझे सुजीत जी अगर आप 1 सेकंड सामने आए, आप जरा इनके हाथ ध्यान से देखिएगा। शायद ही कोई जॉइंट है जो डिसलोकेट नहीं हुए इनके रेसलिंग करियर। देखिए आप नहीं, मैं वो मैडम से ऐसी चर्चा हो रही थी, मुझे नहीं पता था ये क्वेश्चन आज आप उठाओगे। देखिए गेम हमारा ऐसा है कि उसमें इंजरियां होती है, और मेरे भी मतलब कोई भी ऐसा, मैं नहीं और भी बाकी जितने भी रेसलर्स हैं, अब थोड़ा सा बचाव होने लग गया है, नहीं तो हर एक पार्ट में तकरीबन कहीं किसी को कम किसी को ज़्यादा चोट लग जाती है। और उसमें भी जैसे इंजरी हुई है, चोट लगी है, तो उसका पेन खत्म होना एक अलग बात है, और इंजरी को ठीक होना, चोट को ठीक होना एक अलग बात है, जिसपे कि ये ध्यान नहीं देते। मैं स्पेशली अगर रेसलिंग की बात करूं तो बस अगर कहीं किसी को इंजरी हो गई है, वो क्या करते हैं, उसका जो थोड़ा बहुत जो इलाज कराते हैं, उसके बाद में उसकी सिकाई ठंडी गर्म करके या मेडिसिन लेके वो पेन खत्म हो जाता है, सोचते हैं ठीक हो गया, वो फिर दोबारा से शुरू हो जाता है। और यही कारण रहा है कि जो मेरी एक ही बाउट में मेरी ये फिंगर 3 बार डिसलोकेट हुई, और उसके बाद से मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया, अभी आज तक तकरीबन 17-18 बच्चों के जो कई बार एल्बो डिसलोकेट हो जाती है, शोल्डर हो जाता है या फिंगर हो जाते हैं, हम खुद प्रैक्टिस के दौरान ठीक कर देते हैं। ठीक मतलब इन द सेंस उसको फिट कर देते हैं, बाकी बाद में फिर जो उसका प्रोसेस होता है। आई थिंक जोरदार तालियां तो बनती हैं। एक अच्छा खिलाड़ी, एक अर्जुना अवार्डी खुद आपको बता रहा है क्या गुजरती है when the joints get dislocated, and there is no facility at the akhadas even today, that it is only the coach on the ground trying to fix the dislocation and get back to their training. Still in today's scientific age that we are talking about, so there is so much scope still to improve upon and take on. अब हमारे बीच में पुष्कर वोरा जी हैं, इन्होंने स्कूल के बच्चों की बात करी और अखाड़ों की बात करी, रेसलिंग की बात करी, अपना खुद का तजुर्बा बताया। सर, आपने पूरे सीबीएसई स्कूल्स को मूवमेंट दिया गौतम साहब के बाद, उस शो में पांव रखना ही बहुत बड़ी बात थी, और पूरे नेशनल लेवल पे सीबीएसई को इतने साल आपने स्टीयर किया। वेयर डू यू थिंक आपके हिसाब से स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ऑफ इंजरीज और स्पोर्ट्स साइंसेस स्कूल लेवल पे कहाँ हैं और कहाँ आप गैप देखते हैं? वेयर शुड वी ब्रिज? थैंक यू मीनाक्षी। मेरे ख्याल से
अगर मैं बात करूं जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय करीब 25 साल पहले की बात होंगी कि उस समय इतनी अवेयरनेस नहीं थी, टीचर्स को भी नहीं पता था कि हाउ टू मैनेज इंजरी तो अलग की बात है कि हाउ टू अवॉइड इंजरी। कोई भी टीचर हार्डली इन चीजों पे काम करता था, बट लेटली बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस, गवर्नमेंट के इनपुट्स के साथ जो करिकुलम में चेंजेस आए, उसके साथ जो दूसरी वर्कशॉप्स होने लगी, स्पोर्ट्स इंजरी के डॉक्टर्स इमर्ज होने लगे, सेक्शन हॉस्पिटल्स में अलग डिपार्टमेंट्स बनने लगे, इन सब चीजों के बाद जो टीचर्स हैं वो भी अवेयर होने लगे और देन दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि इंजरी मैनेज करने से पहले लेट अस वर्क ऑन समथिंग कि वी कैन अवॉइड इंजरी। और उसका रिजल्ट ये देखा गया कि जो प्लेयर्स अर्ली एज में क्विट करते थे उन्होंने ज्यादा लंबे टाइम तक खेलना शुरू कर दिया। लेकिन स्टिल आई बिलीव स्ट्रांगली कि हमारे कोचेस को हाउ टू अवॉइड इंजरी पे काम करना चाहिए, हाउ टू मैनेज इंजरी पे काम करना चाहिए, रिहैब के ऊपर काम करना चाहिए। पर इन सब चीजों से एथलीट्स क्विट करते भी हैं, पर कोचेस को ये भी एक काम करना चाहिए, सोचना चाहिए या दे मस्ट अंडरस्टैंड कि कब वो प्लेयर्स को कह सकें कि नाउ यू शुड क्विट स्पोर्ट्स, नॉट जस्ट फॉर द रीजंस ऑफ इंजरी बट देयर कैन बी मेनी रीजंस। जब कोच को समझ में आना चाहिए कि अब इसकी परफॉर्मेंस ऊपर नहीं जाएगी या नाउ इट इज टाइम फॉर हिम टू, I would not say retire, but to quit the competitive sports. ये सब बहुत important है कि कोच को समझ में आए। अब it is a good thing कि स्कूल लेवल पे भी players are aware of the injury, what की इंजरी कैसे होती है या क्यों होती है, and they have started taking care of all these things. पेरेंट्स बहुत अवेयर हो चुके हैं आज के टाइम में एंड दे डू कंसल्ट हॉस्पिटल्स, दे डू कंसल्ट डॉक्टर्स, फिजियोस के पास जाते हैं एंड दिस इज अ बिग एंड गुड चेंज even at school level. I strongly believe with the new department coming up at Safdarjung Hospital, people have benefited out of it and I hope कि ये स्कूल लेवल तक एक अप्रोच मिले एंड टुडे आफ्टर me knowing about the presence of doctor, I am myself thinking if I can arrange a workshop for school teachers also categorically on the topic how to avoid injury. Thank you very much. Thank you, Pushkar ji, for the insight. Very rightly said that identifying, treating, rehab, and taking note whether it is a call or whether a person can return to the play field. हमारे बीच में we are very blessed to have one more Dronacharya awardee, a man who has nurtured the Indian hockey for decades. हमारे अपने बंसल जी, आपसे हमारा अनुरोध है कुछ हॉकी के बारे में हमें स्टोरी सुनाइए। आपने वो जनरेशन देखी है, एरा ऑफ 70s, 80s, 90s, जहां स्पोर्ट्स साइंस दूर तक नहीं थी। आप और आपके खिलाड़ी और ये इंडिया का ओलंपिक्स का मेडल वापस आना, आपका बहुत बड़ा योगदान है इंडियन हॉकी को। आपके साथ मैंने देखा, इतने साल से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, देख रही हूँ, आज तक मेरे ख्याल से शायद ही हॉकी का कोई अर्जुन अवार्डी है इस मंच पे आया है और आपका चरण स्पर्श ना किया हो। सो सर, आपके इतने रिच एक्सपीरियंस से आप क्या बताना चाहेंगे हॉकी के बारे में, उनकी स्पेसिफिक इंजरीज के बारे में, और वो एरा जहां कुछ नहीं था और आज जहां थोड़ी उम्मीद है। साइंस के डायरेक्टर आपके साथ बैठे हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं है, तो प्लीज बताइए सर। थैंक यू मैडम। जैसे अभी डॉक्टर मीनाक्षी ने कहा, बिल्कुल ठीक बात है इनकी। इवन मैं सबसे पहले तो अपना खुद भुक्त भोगी हूँ। 1999 में मेरे को एचली टेंडन की प्रॉब्लम हुई और कंप्लीट रैप्चर हुआ एचली टेंडन का। और उस समय ये जो स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है वो भी नहीं बना था सफदरजंग में। और एचली टेंडन का जो अगर मैं गलत नहीं हूँ, ऑफ कोर्स मुझे डर भी लग रहा है, डॉक्टर मेरे साथ बैठे हैं और आप लोगों में भी होंगे शायद कोई, कि पता नहीं अगर मेरे से कुछ बात मतलब मिस अप्रोप्रिएट का मतलब साइंटिफिकली जो मैं गलत बोल रहा हूँ तो उसको कृपया माइंड ना करें डॉक्टर साहब प्लीज।
तो 99 में जब मुझे खेलते समय एचली टेंडन मेरी कंप्लीट रैप्चर हो गई, दैट टू ऑन ग्राउंड। सुबह 7 बजे शिवाजी स्टेडियम में खेलते समय मेरे लेफ्ट पैर की एचली टेंडन रैप्चर, और उसके बाद खैर पूरा दिन कैसे गुजारा रात को। तो उस समय इसकी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी एचली टेंडन की। मतलब बाकी सब बीमारियां तो जो हैं या इंजुरीज जो हैं वो तो हैं, एचली टेंडन तो बहुत कम लोगों ने सुना होता था कि इसकी कोई चीज़ है और इसकी भी प्रॉब्लम होती है। तो मुझे कमबैक पे आपने काम कैसे किया जब आप? तो मैं वही बताने जा रहा हूँ, तो मेरा वहाँ फिर क्या था कि जो इसके लिए अलग से कोई ऐसा कोई डिपार्टमेंट तो है नहीं, तो मुझे हिंदी के शब्दों में बताता हूँ, कहते हैं हड्डियों का डॉक्टर ठीक करेगा इसको। उस समय ये बात हुई। तो ऑर्थोपेडिशियन जो है वही किया करते थे इसका भी ट्रीटमेंट। तो मेरा फिर रात को 1 बजे ऑपरेशन हुआ और इमरजेंसी में सफदरजंग हॉस्पिटल में ही, और मैं 2.5-3 महीने बेड पे रहा। उसके बाद फिर मेरे को जो पहले डायरेक्टर थे हमारे इसके स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर के, वो उस समय नए ऑर्थोपेडिशियन थे सफदरजंग में, यंग डॉक्टर। बाद में वो डायरेक्टर रिटायर हुए इसके। तो उन्होंने मुझे, जब उन्हें पता चला कि मैं कोच हूँ, तो उन्होंने पर्सनल अटेंशन दिया। जब भी मैं वहाँ गया, 2.5 महीने तो प्लास्टर ही रहा मेरे पैर में, तो जो टांके वगैरह ये वो सब करना होता था, तो उन्होंने इवन किसी सिस्टर को भी टच नहीं, नर्स को भी टच नहीं करने दिया। वो हमेशा खुद देखते थे। और उन्होंने फिर मुझे बाद में एक बात बोली थी, उन्होंने कहा कोच साहब, आज के बाद आप नॉर्मल लाइफ तो जियोगे, लेकिन आपका भागना दौड़ना खत्म हो जाएगा। जो कि मेरे जैसे बंदे को 99 2000 मेरा कैरियर थोड़ा ऊपर आ रहा था उस समय, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस बात से कि यार डॉक्टर साहब ने ये कह दिया कि भाग दौड़ बंद और नॉर्मल लाइफ आपकी होगी। एनीवे, मैं फिर थोड़ा थोड़ा इसका रिहैब करा, लेकिन उस समय इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था ये स्पोर्ट्स फिजियोज का, उतना ज़्यादा पता नहीं था, तो मैं भी उसका फ़ायदा नहीं उठा पाया। तो एनीवे, मैंने तो खैर उसको जैसे तैसे मेरा वो किया। जो असली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2002 में जब इंडियन हॉकी फेडरेशन थी, तो उन्होंने हॉकी लीग की शुरुआत करी। एक बात आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, ज़्यादातर लोग इसमें से, कि जो लीग सिस्टम की शुरुआत हुई, जैसे अब आज तो आप जानते हो IPL होता है, ISL होता है, जो क्रिकेट वाली लीग्स को सब जानते हैं। इंडिया में सबसे पहले या वर्ल्ड में जो लीग सिस्टम शुरू हुआ वो हॉकी से शुरू हुआ था, एंड दैट वाज PHL, प्रीमियर हॉकी लीग। 2002 में शुरुआत हुई थी उसकी। उसके बाद ये क्रिकेट की लीग्स वगैरह आई थी। तो मैं उस समय, उड़ीसा की टीम थी एक, मैं उसका चीफ कोच था उड़ीसा की टीम का। और कॉम्बिनेशन क्या होता था वहां पर, उसमें 18 प्लेयर होते थे और 4 ऑफिशियल होते थे, अलाउड थे 4 ऑफिशियल, बिकॉज दैट वाज पेड लीग। तो खर्चे भी होते थे बहुत, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए, और नया नया सिस्टम शुरू हुआ था, तो 4 ऑफिशियल होते थे। तो उसमें क्या था, एक चीफ कोच और एक मैनेजर, ये 2 कंपलसरी हैं, ये 2 पोस्ट कंपलसरी हैं। उसके बाद जो 2 और ऑफिशियल हैं, वो उस लीग के ओनर को अलाउ था कि वो किसको रखता है। तो सभी लोगों ने क्या करा, उसमें एक कोच जो उनका चीफ कोच है वो तो उन्होंने रखना ही है, और जो मैनेजर होता था नॉर्मली वो होता था उस स्टेट का सेक्रेटरी, हॉकी एसोसिएशन का सेक्रेटरी, क्योंकि इंपॉर्टेंट जगह थी तो वो कैप्चर कर लेता था उसको। बाकी जो 2 ऑफिशियल पोस्ट बची हैं, उसमें भी वो इसी तरह से इसको उसको फिट कर लेते थे, और किसी ने भी और किसी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो जब मेरे से पूछा, मेरी एसोसिएशन वालों ने, उड़ीसा की एसोसिएशन थी वो, कि सर किस किस को ऑफिशियल में किस किस को रखना है, तो मैंने कहा ठीक है, एक मैं हूँ, एक सेक्रेटरी जो होगा स्टेट का वो मैनेजर होगा,
उसके बाद मुझे एक असिस्टेंट कोच चाहिए, और चौथा नंबर जो है मुझे चाहिए एक फिजियो का। तो ये बात बड़ी नई चीज थी कि फिजियो क्यों चाहिए इन्हें। मैंने कहा चौथा नंबर मुझे फिजियो चाहिए, हर हालत में चाहिए, कोच चाहे हो या ना हो, मुझे फिजियो चाहिए, क्योंकि मुझे अगले दिन के लिए प्लेयर को ग्राउंड में उतारना है जो इंजर्ड हो जाता है। अब इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी जो टीम 7 टीमें थी उस लीग में, और सिर्फ मेरी एक टीम थी जिसके पास क्वालिफाइड फिजियो था 7 टीमों में। और एक चीज थी कि हर एक टीम में 3-3 फॉरेन प्लेयर अलाउड थे उस समय शुरुआत में, और 3 में से भी 2 पाकिस्तान के प्लेयर और एक कोई यूरोप का या कहीं का भी गोरा, जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में गोरा बोल देते हैं, गोरा प्लेयर होता था एक। तो 3 फॉरेन के प्लेयर्स होते थे। तो इस तरह से 18 + 3 21 प्लेयर होते थे। तो एनी हाउ ये सिलसिला शुरू हुआ, और वो जब सिलसिला शुरू हुआ 2 महीने का वो टेन्योर था लीग का। 1 महीना फर्स्ट लेग जो था वो चेन्नई में, और सेकंड फाइनल जो था वो चंडीगढ़ में होना था। थोड़े दिनों के बाद, अच्छा, इस तरह के जब ये लंबे टेन्योर वाले टूर्नामेंट्स होते हैं तो क्या होता है कि प्लेयर्स में इंजरी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे रीजन होते हैं उसमें। जब हम किसी कंपटीशन में होते हैं, हमारी फिजिकल फिटनेस भी धीरे धीरे डाउन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम तब कंसंट्रेट करते हैं अपने मैचेस के ऊपर, तो स्पेसिफिक फिटनेस जो है नहीं कर पाते, धीरे धीरे कम भी होने लगती है वो, और वैसे भी इंजरी होने लगती है। तो फिटनेस कम होती है तो और ज़्यादा इंजरी जल्दी होती है। नतीजा ये हुआ, थोड़े दिनों के बाद मेरे प्लेयर तो खैर डेली मेरा जो फिजियो था उनको ट्रीट करता था। थोड़े दिनों के बाद मैंने देखा, सुबह जब हम, अगर मान लीजिए ऑफ डे है, तो मेरा जो फिजियो था उसका नाम था मुक्ति, डॉक्टर मुक्ति दास, अभी बहुत बड़ा फिजियो है वो। तो सुबह मैं देखता हूँ तो आंखें उसकी लाल लाल हैं जब वो ग्राउंड पे आता है। तो पहले दिन मैंने देखा आई ओवरलुक्ड, सेकंड डे ओवरलुक्ड, थर्ड डे मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा मुक्ति क्या तेरी आंखें थोड़ी लाल लाल रहती हैं, क्या कारण है? तो मेरे को थोड़ा डाउट था, आप भी अंदाजा लगा सकते हो मेरे को क्या डाउट होगा। मुझे डाउट था, मैंने कहा कहीं ये ड्रिंक वगैरह तो नहीं करता है। तो उसने हंस के टाल दी वो बात। तो मुझे फिर मेरे प्लेयर्स ने बताया, कहते सर ये रात को 2 से 3 बजे सोता है, डॉक्टर मुक्ति जो है ना, रात से 2 से 3 बज जाते हैं इसको अपने रूम में ट्रीटमेंट पे। तो मैंने कहा यार तुम लोगों में से तो कोई भी इतना ट्रीटमेंट में इतनी प्रॉब्लम नहीं है जो रात से 2-3 बजे तक ट्रीटमेंट कराते हो। तो कहते नहीं सर, सिर्फ हम लोग नहीं कराते हैं, दूसरी टीम के प्लेयर्स भी आने लगे हैं अब इसके पास। और जो गोरे प्लेयर थे उनका ट्रस्ट इतना बढ़ गया था कि वो उसके, बिकॉज उस समय तक वो लोग समहाउ हैबिचुअल थे इन चीजों के, स्पोर्ट्स फिजियो के और इसके, तो उन लोगों को आदत थी, तो वो लोग भी उसके पास आने लगे ट्रीटमेंट के लिए। तो मेरा कहने का ऑन द होल मतलब ये है कि मैं उस समय से जब मैंने भरोसा किया और मुझे उसका रिजल्ट मिला, अल्टीमेटली वी वॉन दैट चैंपियनशिप। हम 2 साल लगातार चैंपियन रहे, उड़ीसा की टीम। तो उसमें एक हाथ, बड़ा हाथ जो था, मैं अपने फिजियो को भी देता हूं, जिसने बहुत सारी इंजरीज पर प्लेयर को अगले दिन ग्राउंड में खेलने के लायक बनाया। और उस दिन के बाद से फिर मैं 2000 के बाद, 2000 से ही मैं इंडियन टीम्स के साथ जुड़ गया। तो मेरा जो सबसे पहली डिमांड होती थी, मैं, सॉरी डॉक्टर साहब, फिर अगेन, मैं कभी डॉक्टर की डिमांड नहीं करता था कभी भी, जबकि उन दिनों प्रचलन था नेशनल टीम के साथ एक डॉक्टर का धीरे धीरे शुरू हो गया था। तो मैं हमेशा इस बात पे अड़ जाता था। मैं कहता था, मैंने कहा मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए, तो मुझे फिजियो चाहिए। तो नई तरह की डिमांड्स निकलने लगी, और मैंने देखा कि वो जो मेरा डिसीजन हुआ, उसने, जब तक मैं टीम के साथ रहा, इवन टीम के साथ नहीं भी रहा, तब तक मैंने देखा उस चीज ने मुझे इतना फायदा पहुंचाया। तो ये एक शॉर्ट, ऑफ कोर्स मेरी स्टोरी अपनी पर्सनल भोगी हूँ तो मैंने आपको बताया, लेकिन इसकी इतनी जरूरत है। बंसल साहब, मैं यहाँ पे आपकी बात को थोड़ा सा वो इंटरप्ट करूंगी क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है। बिल्कुल बिल्कुल। बट मैं यहाँ एक चीज आइडेंटिफाई करती हूँ
as a moderator of this entire panel discussion. You know, to identify the importance, somewhere you were the pioneer, कि आपने वो प्रचलन लेके आए हॉकी के अंदर, लीग के अंदर, और शायद आपके वो एक स्टेप से फिजियो की इम्पोर्टेंस टीम्स के साथ आना, अटैच होना और दूसरे गेम्स को उसको इम्बाइब करना. आई थिंक बंसल साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दी जाए. थैंक यू. उस जमाने में आइडेंटिफाई करना, लाना और उसको रिटेन करना, बिकॉज जो पैसे दे रहा है वो कन्विंस होना बहुत जरूरी है कि ये इम्पोर्टेंस है और इनकी जरूरत है. नहीं तो वी ऑल नो पीपल आर रिप्लेस. हम इन्हें क्यों रखें और क्यों नहीं किसी और मैनेजर को या असिस्टेंट मैनेजर को ले जाएं. सर, इस इंसाइट के लिए और बहुत राज पाश हो रहे हैं, बहुत सी स्टोरी बाहर आ रही है. आई एम श्योर जो लोग यहाँ आज लाइव इतना रिच एक्सपीरियंस आपका इंडियन टीम के साथ अटैच होना और कहाँ से एक फिजियो टीम के साथ अटैच हुआ और उनकी इम्पोर्टेंस बनी और आज इंडियन टीम्स में इट्स इंटेग्रल पार्ट. बहुत अच्छा लगता है. वैसे मैं भी अभी सोच रही थी, जब मैं इंडिया के लिए स्विम करती थी तब मेरे साथ भी कभी कोई फिजियो नहीं था, कभी गायनी नहीं थी. बट आज बहुत खुशी होती है देखते हुए कोई इंडियन टीम बाहर नहीं जाती कि वो फिजियो नहीं है. और लास्ट ओलंपिक्स में तो हमने पेरिस में यहाँ तक देखा कि स्लीपिंग पॉट्स तक हमारे एथलीट्स के लिए अवेलेबल कराए गए. So there is immense scope, and on panel we have a living legend, former Vice Chancellor Upal Saab. Upal Saab is a pioneer again when we talk about sports injuries, and he was the first Indian to take initiative when he went to Bangladesh and did so much research. Today, you know, there were 2 book launches here. So कुछ आप हमें अपनी बांग्लादेश as a first Indian to pioneer and voice in the field of physical education, that it should be a part of curriculum, it should be very much integral in the making of all the physical education teachers. What do you feel? Where do you see it going? Is it where what you thought, let's say 20, 30 years back, is it on the same path or you see it going haywire? Thank you, Meenakshi. Let me, the question which you have asked me, I will share this towards the end. But let me talk about the topic, you know, about which this sports injuries. You know that 1982 Asian Games were held in Delhi. In the initial stages, I was one of the coaches, you know, for the Indian team. And then about 6 weeks before, I was told that most of the foreign coaches will come and then you probably will be dropped out of this. So why don't you go into the organization of Asian Games? Now let me tell you, you know, if you have the statistics with you, during 82 Asian Games, Indian team had won 6 gold medals. Gold medal should have been 7. Why it remained to 6? One of the Kerala girl who was 100 meters hurdler, she had injury on her hamstring muscle. I am not causing aspersions on anybody. The kind of medical support which was available those days, they could not treat this girl. She could not participate in 100 meters hurdle event. And she was one of the best hurdler at those days. But she missed an opportunity and India lost a medal. On the other side, you must have heard about Sachin Tendulkar when he got tennis elbow injury. Because India could not afford to miss him. Immediately surgery was performed. He was again back on the play field soon to come and participate. Now, situation, see, injuries are a part of sports. आप sports करेंगे, injuries आपको होगी. You look, when you watch competitions, you find more than 50% players who have done taping on the elbow, on the shoulder, on the hamstring here, there. Injuries do take place. But then we need a very strong team of
medical doctors, physiotherapists to set everything all right. You must have seen these days. Earlier there was no helmet in cricket. But now helmet is there, and when there is a ball hits the helmet, the game has to be stopped. Doctors come inside, examine, उसको उंगलियां दिखाएंगे कितनी उंगलियां दिखती हैं तुम्हारे को, to see whether this person is able to understand or can continue, is in a position to continue the game. Definitely things have improved. But I will give you my personal example. In 1963, I got ACL injury while playing football. Very little of medical support was available in Gwalior when I was studying. So the medical doctor available, he said, physiotherapy कराओ, रोज massage कराओ, आपका काम चल जाएगा. I was young, managed to play. I also played for Delhi State in the football league with that injury. But when I was about 76 years old, I found that if I do not treat that ACL injury, my remaining years are going to give me a lot of pain. I will not name anybody. With somebody's advice, I went to a hospital, which is called a sports hospital. I am not naming anybody. I went inside a room. I went to the room. 4 doctors were sitting there. They said, go and get the X-ray done first. I brought my X-ray, showed to a doctor. He said, आपको immediately surgery करानी पड़ेगी. The head of the department was sitting there. He called me, he said, gentlemen, you come to me, I'll discuss with you. आप क्या करते हैं? तो मैंने कहा मैं retired vice chancellor हूँ. आपको सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है. You see, same, सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है. आप वो तीसरा डॉक्टर बैठा उसके पास चले जाओ. I went to him. He said, आपको 6 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे. एक इंजेक्शन की कॉस्ट 20,000 रुपए है. And I was wondering कि इंजेक्शन लगाएंगे वो reimbursement भी कोई possibility नहीं है. He sent me to the physiotherapy department upstairs. There was a lady physiotherapist. She saw that the paper which I was carrying, written there, name of the injection and all. She said, "Sir, ये injection मत लगाना." क्यों? अगर आपने इंजेक्शन लगाया तो किसी प्रकार का ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा. Those were steroid injections actually. Each injection costing 20,000 rupees. That's what I was told. So things have definitely improved today. When injuries take place, many sports persons, even with serious injuries, are able to return to the play field and continue their activities. And I feel now, let us say a football team, they also need a team of doctors, not only one doctor, a team of doctors, a medical doctor, a physiotherapist. And, you know, injuries are a part of sports. They are part and parcel of sports. Injuries do take place. And if you want that the sports person should return to the field again, it is possible only when very good medical support is provided. Thank you very much. Thank you, sir, for sharing insight and your personal experiences, rich experience, and rightly said that knowledge should prevail. Now we have the man who has been looking after the busiest sports injury center in Delhi. We all were very blessed, the people who live in Delhi and people who are associated with the field of sports and physical education. We all know the importance of this sports injury center, the Safdarjung Sports Injury Center. सर, आपके यहाँ कभी भी लाइन खत्म नहीं होती पेशेंट्स की, ना एथलीट्स की, और अपॉइंटमेंट कैसे ली जाए उसका ऐप के बारे में भी सर जरूर बताइएगा, बिकॉज आज टेक्नोलॉजी के साथ साथ सबको चलना है.
इसकी अपॉइंटमेंट भी आपके थ्रू बुक होके आप जाएंगे तो बहुत बढ़िया है, सुविधा मिलेगी, आपको टोकन नंबर मिलेगा और आप अटेंड हो जाएंगे। तो हमारे पास डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी हैं। सर, आपको क्या लगता है, जैसे उपुल सर ने, सुजीत सर ने, पुष्कर सर ने और हमारे द्रोणाचार्य बंसल जी ने बताया, सबने अपने एक्सपीरियंसेस बताए इतनी लॉन्ग एसोसिएशन के साथ, क्या अभी भी मेडिकल इंडस्ट्री में कोई सेट प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्डाइजेशन है, कोई इकोसिस्टम डेवलप हुआ है टू डील विद these injuries and athletes specifically? How do you encounter every day? थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, डायरेक्टर प्रोफेसर स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में हूँ। मैं स्पोर्ट बेसिकली ऑर्थोपेडिशियन हूँ, साथ में स्पोर्ट्स मेडिसिन का काम भी देख रहा हूँ, और मैं थेरापेटिक यूज एग्जाम्पल नाडा का एक मेंबर भी हूँ। उसमें डोपिंग का एक कमेटी होती है, थेरापेटिक यूज एग्जाम्पशन कमेटी, तो उसका मैं मेंबर भी हूँ। अब जैसे मैंने बताया, हमारे स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर हमारा इंडिया के एक ही ओनली एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें हम डेडिकेटेड टू स्पोर्ट्स इंजरी ही काम करते हैं। एंड स्टेट ऑफ आर्ट हमारे पास रिसेंट आर्टिकल सारे के सारे इक्विपमेंट्स हैं, अंडर वाटर ट्रेडमिल है, देन वैक्यूम ट्रेनर्स हैं, हाइपरबैरिक चैम्बर्स हैं, एंड वी हैव नाउ स्लोली इवॉल्विंग हमारे पास फैकल्टी भी है। एंड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर वाज द फर्स्ट सेंटर टू स्पोर्ट्स एमडी स्पोर्ट्स मेडिसिन। एंड उसके बाद हम हर साल कम से कम 5 बच्चे हमारे स्पोर्ट्स मेडिसिन के निकलते हैं, एंड दे आर बीइंग ट्रेन्ड, एंड नाउ दे आर बीइंग पार्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड फेडरेशंस एट वेरियस लेवल्स। And sticking, I'll come to the topic where we are sitting. We return to play. The return to play is very tricky topic because जैसे सर ने बताया, injuries are part and parcel of the sports. जो दौड़ेगा वो गिरेगा भी। अब जो गिरता है उसको अब है भी मैं फिर दोबारा कब दौड़ूं, ये ट्रिकी काम है। उसके लिए कौन डिसाइड करेगा भी तुम दोबारा दौड़ो? वो सबसे पहले किसके पास जाएगा? वो अपने पास जो सबसे पहले जो साथ में फ्रेंड है, रूममेट है, उसको दौड़ेगा, यार मैं क्या करूं, मैं कब दौड़ पाऊंगा। वो बोलेगा ये चलो कोच के पास चलते हैं, कोच बोलेगा चलो मैनेजर के पास चलते हैं, मैनेजर बोलेगा चलो फिर या तो डॉक्टर के पास चलते हैं। अब मेरा बड़ा मानना है कि अगर इफ यू आर लकी तो आपको सही टाइम पे सही बंदे के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। तो आपने कामयाब होना है या रिटर्न टू प्ले होना तो सही डॉक्टर के पास होना जरूरी है। बट दैट स्पोर्ट्स इंजरी केयर इज डेडिकेटेड चैप्टर, एंड उसकी अवेयरनेस अभी भी हमारे नहीं है, ये हमें करना पड़ेगा। दिल्ली एंड मेट्रोज वी आर स्टिल लकी, बट पेरिफेरी में बिल्कुल मुश्किल है। और दूसरा बात ये है भी जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं स्पोर्ट्स इंजरी के साथ में, एक्लिस टेंडन वाले भी आजकल आ रहे हैं, एसीएल इंजरीज आ रहे हैं, वी आर हैप्पी टू अनाउंस वी आर एबल टू ट्रीट ऑल काइंड ऑफ इंजरीज। हिप आर्थ्रोस्कोपी मैं आई वाज द फर्स्ट पायनियर, अभी 2015 में कर दिया था, एंड अभी भी 2-3 ऐसे प्रोसीजर्स हैं। आई एम द ओनली पर्सन हु डज इट इन नॉर्थ इंडिया। आई कैन और ऑन द एंकल लिगामेंट्स रिकंस्ट्रक्शन एटसेट्रा। लेट्स गिव अ बिग हैंड टू देवेंद्र जी फॉर बीइंग द पायनियर। सर, आप चेंज लेके आए हैं, तो हमारे एथलीट्स की रिकवरी के लिए पाथवेज आपने डेवलप किए, और गवर्नमेंट सेक्टर में रह के पाथवेज बनाना इट्स नॉट वेरी इजी। थैंक यू मैम। हमारे देश में जहाँ सालों साल और मेरे ख्याल से फाइलें मूव करने में लग जाती हैं, वहाँ आप एक प्रोसेस लेके आए हैं, नई थेरेपीज लेके आए हैं जिससे हमारे एथलीट्स बेनिफिट करेंगे। आई एम श्योर आप सब ये इंफॉर्मेशन कैरी करेंगे जो सर ने आज शेयर किया, एंड कमिंग फ्रॉम अ माउथ डायरेक्टली ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर। सर, आपसे एक सवाल और मैं जरूर चाहूंगी। आई एम
Please bear with me. I know we all want to go for lunch. Ma'am, you can, take up questions. Everybody has been waiting for lunch. And it's my duty to close the panel. Yeah. But before I call off and conclude, I would request, sir, आपसे थोड़ा सा इसमें और हमें थोड़ा ज्ञान दीजिए सर. आपकी सुविधाएं, चलिए हम दिल्ली में हैं, ऑनलाइन आप लोगों को कैसे, जो हमारे देश भर से लोग आए हुए हैं, अपनी यूनिवर्सिटी से डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स चला रहे हैं, हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, आपने स्पोर्ट्स मेडिसिन का आपने बताया, आपने कोर्सेज शुरू किए हैं. हम सर अपने कैरिकुलम में, मास्टर्स में सब मेन पेपर पढ़ के आते हैं फॉर स्पोर्ट्स मेडिसिन, राइट सर. हम लोग कैसे इंटीग्रेट हो सकते हैं और हम आप लोगों के साथ, क्योंकि इट इज द फिजिकल एजुकेशन टीचर, जैसा सुजीत जी ने भी बताया, बीइंग अ कोच, जैसे बंसल जी ने बताया, जैसे पुष्कर जी ने बताया, टीचर इज द फर्स्ट वन और द कोच इज द फर्स्ट वन जो ग्राउंड पे सबसे पहले फर्स्ट एड पहुंचाएगा. इसी बेस पे, इसी लाइन पे जिस बात पे आप कर रहे हैं भाई, फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्कूल के बच्चे कैसे आपके साथ जुड़े, कोचेस कैसे जुड़े, इसी थोड़े दिन पहले मेरे डीजी नाडा और एनडीटेल के सीईओ के साथ की बात हो रही थी. तो उन्होंने डोपिंग के बारे में, तो उन्होंने एनएमसी में एक किया भी, इसको मैंडेटरी वर्कशॉप करेंगे. देन फर्दर प्रपोजल किया भी, हम एमबीबीएस लेवल पे एक डोपिंग का चैप्टर ऐड करेंगे. तो इसी लाइन पे फर्स्ट तो हमें देखो, वट एवर इज फर्स्ट अवेयरनेस होनी चाहिए सब में, बच्चों में. देन एक जैसे आपने बताया, आप वी कैन सेट ए पैनल. आए पीयूष जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वो हम 4-5 लोग भी जितने भी हो सकते हैं, वी कैन प्लान एक करिकुलम, कैसे ट्रेनिंग कैन बी गिवन एंड व्हाट लेवल एंड व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड नीड बेस्ड. इट हैज टू बी ऑब्वियसली नीड बेस्ड. फील्ड पे कैसे करनी है, ऑफ द फील्ड कैसे करनी है, एंड whom to refer and when to refer and how to refer. This is the most important. So the team can be developed. I think we need to sit up. पीयूष जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभी वो इस मामले में हेल्प करें. आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. Thank you so much, sir, for assuring your support and your forthcomingness for the cause. Let's hope so the next generation of teachers. So we will take on all questions, comments, everything over live. Come on, Ranganathan, sir, you're most welcome. Please come. Please come on stage. Protocols and who will get more injuries and who is prone to injury, it all depends upon bodily habitus, the kind of sports, kind of nutrition. There are so many set protocols and criteria are there, predictors are there, and you take my word, books have been written on that. So in nutshell, I tell you, like now दो रनर्स हैं या कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है, हॉकी प्लेयर्स हैं, सेम एक मेल है एक फीमेल है, तो ऑब्वियसली फीमेल्स आर मोर प्रोन टू इंजरीज एज कंपेयर टू मेल. Depends upon why, because they have a less muscle mass and their ligaments they are thin and they have to exert more. Likewise, nutrition. If you don't have proper nutrition, you have to strive more. Muscle will be tired. Again, you are prone for this one. Then hydration, that again comes in this one. Then the kind of slippers, footwears. Then, if I take to my word, then body alignments. How the bodies are aligned, whether valgus घुटने बाहर को निकले हुए हैं, नौकनी है या है, फ्लैट फुट है, वो सब मैटर करते हैं सर. Ranganathan sir, really sorry. Can really predict Salatin 8.5 can be really said as where Salatin measurements are not enough, but we are not
we are thinking about whether government institutions we are thinking. See, this screening of that mass level. No, she wanted to add that India has already taken the initiative and the testing has already started. That's what she wanted to add. Precision medicine. All right. And I would also like to add, because I have been also trying to follow the genetics and, a bit of science, because we all know when we are in higher education and university, we're just winding up. We all have to publish papers in the Scopus Index now. So we all are heading towards more and more towards science. So yes, the private players, and especially if we talk about our own Gurugram, where this genetic testing is already a mushrooming business of private players. Let's hope so. Our own government sector also invades, as the director has given us immense hope of integrating, and we request Dr. Piyush to take the recommendations of this panel forward. Education is empowerment, and as we all are aware, we are sure the next generation will benefit. I thank all my esteemed panelists for their invaluable insight and sharing their very rich experience. I'm very grateful to them. Thank you. Now, I think Professor Amrita is going to take the closing, and we will just take just 2 minutes more, and we all proceed for lunch, right? Just bear with us for 2 more minutes. Thank you for your patience listening, and I really wish this information, this knowledge travels, because you all sitting in this gathering are the future teachers and the hope of our country. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. That was really a very wonderful and enchanting experience over here. Moving ahead, I would now request Piyush sir to please come forward to announce how and by whom we are going to felicitate the dignitaries present with us on the day. Thank you, Anamrita, and thank you, esteemed panelists. And जो इस सबसे बड़ी ड्यूटी मैं करता हूं कि हमारे जो अतिथिगण आए हम उनका स्वागत सम्मान कर सकें, तो सबसे पहले जिनके लिए सबसे ज्यादा तालियां भी आप बजाते हैं, डॉक्टर ए के बंसल सर, प्रेसिडेंट हमारे पैफी के, आई सर प्लीज। मैं त्रिभुवन सर को बुला रहा हूँ, त्रिभुवन सर आए और सर का मोमेंटो देकर स्वागत करें। त्रिभुवन सर। सुजीत मान सर का स्वागत करने के लिए पंकज आ जाओ। रमनदीप मैडम, डॉक्टर देविंदर सिंह जी का, और उनके साथ सोनी कुमार भी आ जाएं। रमनदीप मैम करेंगी डॉक्टर देविंदर सिंह जी का। रमनदीप मैम खुद पैफी का पूरा फिजियोथेरेपी करते हैं, स्पोर्ट्स में साथ में। डॉक्टर देविंदर सिंह। वैसे तो ये बताना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बट हमारे मंच पर इस समय जो उपस्थित हैं सारे महानुभव अपने आप में बहुत बड़े ज्वेल्स हैं, बहुत बड़े जेम्स हैं फिजिकल एजुकेशन के, और आज हम इन सभी के सम्मान में एकत्रित हुए हैं, तो हमें बिल्कुल भी तालियों की गड़गड़ाहट रोकनी नहीं है। पुष्कर बोरा सर के स्वागत के लिए डॉक्टर शरद कुमार और योगेश अजय। और जिन्होंने हमारा सेशन बहुत अच्छे से मॉडरेट किया है, कि मीनाक्षी पाहुजा मैम पैफी के साथ हम लोग इंसेप्शन पैफी के साथ जो जुड़े हैं और लगातार मदद कर रहे हैं। ऑलमोस्ट इंडिया में ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा जो पुष्कर बोरा सर को नहीं जानता होगा। आदित्य
मीनाक्षी पाहुजा मैडम के स्वागत के लिए आदित्य फ्रॉम बिहार एंड सबरी गणेश फ्रॉम तमिलनाडु बोथ। मैं भी आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हमारे बीच में एक और अच्छी बात जो मैं देखने को मिल रही है हमको, कुछ लोग साइलेंटली काम कर रहे हैं। उनमें एक है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का खेलो भारत आया। भाई साहब एक बार आप खड़े हो जाएं और हमारे साथ आएं। आप ये देखिए कि कल से, जब से मैंने भाई साहब से समय लिया था मिलने का, 2 दिन से उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सिर्फ सुनूंगा फॉर द परसेप्शन कि क्या है देश में स्पोर्ट्स का परसेप्शन। तो एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए हम लोग करेंगे और हमारे उपल सर का स्वागत करेंगे, परवीन सर। हाँ परवीन सर। हाँ इस समय मैं सभी का अटेंशन इस जगह चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि सब लोग एक साथ दोबारा से जोरदार तालियां बजाएं। ना मैंने अपने वेलकम स्पीच में भी यही कहा था कि देश बदल रहा है। कुछ लोग साइलेंटली काम कर रहे हैं, उनमें एक प्रदीप शेखावत सर हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश में खेलो भारत के नाम से आयाम चला रहा है। देश के ग्रास रूट पर हजारों प्रतिभाओं को तराशने का काम कर रहे हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश के हर स्कूल और कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खेलो आयाम के द्वारा खेलो गतिविधियां चला रहा है, जिसमें टूर्नामेंट हो रहे हैं, नगर खेल महाकुंभ, और उन सबके जनक हैं प्रदीप शेखावत सर, जो यहाँ पर हमारे बीच में कल से बैठे हुए हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एक मिनट मैम, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं कि मुझे खुशी इस बात की है कि इस पूरे चीजों में पेफी का एक योगदान है। हम लोगों ने मिलकर ही प्लानिंग की खेलो भारत आयाम बनाने की और आज हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे। थैंक यू। आपने देखा होगा कल भी क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पूरे टाइम हमारे साथ रहे। जस्ट लिसन, उन्होंने सारा काम किया। अभी आप सब लोग लंच के लिए आमंत्रित हैं। हमारे जो अतिथिगण हैं उनके लिए लंच लेफ्ट साइड में जहां कल था, है ना, और बाकी लोग सभी लोग ऊपर डेलीगेट्स हैं। मैं सभी डेलीगेट्स यहाँ जो हैं उनसे अनुरोध करूंगी। Education, strengthen grassroots participation, improve PE curriculum, and promote inclusion for all. For this session, we have Dr. Pranam Singh Brar, the Director, Department of Physical Education and Sports, RIMT University. Dr. Laishram Thambal Sir, Professor, Manipur University. Dr. Ajay Malik Sir, Head of the Department, Department of Physical Education and Sports, Gurukul Kangri University, Haridwar. Dr. Shaukat Hussain Sir, Principal, Government College of Physical Education. Dr. Harish Kumar Tiwari, Deputy Director, Sports, Nagaland University. Dr. Rajesh Dhota, Professor, Amity School of Physical Education and Sports Sciences, Amity University. Dr. Sudarshan Biswas, Vishwabharati University. And Professor Dr. Sandeep Kumar, the Dean, Faculty of Education, Shubharti University, Meerut. The moderator for this event will be Dr. Narendra Gangwarji, Assistant Professor, LNI PE.
Sir, these students have been waiting to meet you. The two-day conference organized by Physical Education Federation of India in collaboration with Ministry of Youth Affairs and Sports focuses on India's vision for Olympics 2036. Panelists shared their views on current status of sports in India and discussed the roadmap for building a strong foundation and its development for mega sporting events like the Olympics in the coming years. On the occasion, India's Sports Minister Mansukh Mandavia extended his best wishes to the athletes and emphasized the need to build a sports ecosystem in the country that provides players with golden opportunities to engage in sports. Olympics. And 2036 Olympic is very important for us, though we have still all the world, including India, in bidding stage. But we at least consider ourselves a strong contender. And if we get it, then everything will be changed. Not only sport, even Indian social culture, social life, and everything will be changed through 2036 Olympics. 2036 में 10 साल बाद 11 साल बाद जब ओलंपिक इंडिया में हम लोग होस्ट करते हैं, तो आज जो बच्चा 9 साल का है, 7 साल का है, 10 साल का है, 9 से 14 साल वाले बच्चे 10 साल बाद ओलंपिक में मेडल लेके आएंगे। अब वो 9 से 14 साल का बच्चा किसके पास है? एक स्कूल में। उस स्कूल को कौन देख रहा है? स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन टीचर देख रहा है। कोई टॉप की स्कीम या हम हाई परफॉर्मेंस तो देख नहीं रहे, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तो देख नहीं रहे। तो हमको ये देखना होगा कि वो पीई टीचर आज स्कूल को, आज उसको संसाधन मिले, आज उसको स्पोर्ट्स साइंस मिले, तभी तो वो आगे सिखा पाएगा उन लोगों को। निश्चित रूप से आगे आने वाले 2036 ओलंपिक में फिजिकल एजुकेशन टीचर की एक महती भूमिका रहेगी और पैफी एक निर्णय।
Yes, we are moving ahead towards our next technical session. योग स्कूली स्तर पर खेल And I would like to request all the members and delegates who are present over here, if they are done with their lunch, kindly take their seats so that we can begin with our next technical session as early as possible. For this session, we'll have with us Dr. Parnam Singh Brarji, the Director, Department of Physical Education and Sports, RIMT University. Dr. Laishram Thambal, Sir. Professor Dr. Ajay Malik ji. Dr. Shaukat Hussain, Sir. Dr. Harish Kumar Tiwari ji. Dr. Rajesh Dhota, Sir. Dr. Sudarshan Biswas, Sir. And Dr. Professor Sandeep Kumar ji. The discussion for this topic is developing talent through education, strengthen grassroots participation, improve PE curriculums, and promote inclusion for all. Before we begin, I would like to have a moment of attention from all the members who are present over here. I would like to see how many of us are actually physically present over here. If you are actually physically present over here and mentally present over here, please raise your hands up. Hello. Hi. Can you please settle down? That's amazing. Thank you so very much. And thank you once again for all your wonderful responses. I request all the dignitaries to kindly settle down as we are about to begin with this session. This session focuses on building strong foundation through expanded grassroots participation, upgraded physical education curricula, and integrated sports science with learning. This discussion will highlight inclusive pathways, ensuring equal access, early talent identification, and holistic development for every child, regardless of the background or ability. We have assembled an outstanding panel of educators and sports professionals from across India's university and institution. Allow me to introduce our panelists for this particular session. Dr. Laishram Thambal Singh, Sir, Professor, Manipur University. I request, while I'm taking their names, please come up on the stage and please be seated.
Dr. Shaukat Hussain, sir, Principal, Government College of Physical Education, Jammu and Kashmir. Ladies and gentlemen, let's give a huge round of applause. Dr. Harsh Kumar Tiwari ji, Deputy Director, Sports, Nagaland University. Dr. Rajesh Dhota, sir, Professor, Amity School of Physical Education and Sports Sciences. And Dr. Sudarshan Biswas ji, Professor, Vishwa Bharati University, which is the Central University. I request all the gems and jewels of physical education to please come on stage and please be seated. The moderator for this particular session will be Dr. Narendra Gangwar ji, the Assistant Professor from Lakshmibai National College of Physical Education. I request all our panelists and the moderator for this session to kindly proceed with the session. कौन सा आइडिया लगा फिर कुछ नहीं तो वो बताएंगे तो अपने यहाँ So with this, we are having our Thank you, madam. So once again, good afternoon, everyone. सभी को मेरा नमस्कार. So as briefed by madam, like now we are going to have the 6th technical session of this conference. So before we start, I would like to welcome all the panelists on behalf of the organizing committee of 8th National Conference on Physical Education. So before that, I would like to request all the panelists to please maintain the time limit, and then we can have the follow-up question by the attendees, the experts, the delegates. We can have counter questions from them also. Then the panel will be very useful and fruitful. So, ladies and gentlemen, let me first introduce the first panelist of this session, Dr. Lesram Thambal Singh. So, Dr. Lesram Thambal Singh is a professor and head Department of Physical Education and Sports Science at Manipur University. He is also a State Secretary of PEFI Chapter Manipur. He is specialized in sports training, exercise physiology, kinesiology, football and tennis. Dr. Singh has published 6 books and over 12 research articles. He has chaired international seminars, including at national and various international platforms. He has more than 15 years of teaching experience in and research contribution significantly to advancing physical education in Northeast India. So I would like to start with the first question with our panelist, Dr. Lesram Singh. So as the theme of the session is developing talent through education, and developing talent through education is strengthening grassroots participation, improve physical education curriculum, and promote inclusion for all. So, sir, the first question to you, like what lesson can we learn from community-driven sports culture in the Northeast, and how can these practices be replicated to nationally through the education system? Sir, over to you, please. Thank you so much. Once again, good afternoon, everyone. My respected panelists, organizing committee, thank you so much for giving me such great opportunity to sit over here along with you. Discussion about the talent identification in the school level, this is actually in the modern trends, this is very burning issue, I can say. When we talk about the sports talents identification, this is long-term plan.
I remember that before we are discussing about the talent identification, from the aspects of the physical education, we can think of about the movement education from the right beginning of the life, from the right beginning of the school children's. So movements, this is from the right beginning of the child, from the womb of the mother till that, this will be the continuous process. So education started from the womb of the mother. Everyone acknowledged it. We have to focus on that. Education started from the womb of the mother. So that means we human being born with any skills or any talents since the beginning of life. So when we think about the sports talent, this is also one aspect of talents. Talent identification, this is long-term process. Within the short periods, within 1 year, 2 years, it is not possible to complete. So just question is in context of the northern region states and how the education program can inject the different talent identification program in the school level or from the grassroots level. This is very much important issue nowadays. Movement gives us the different ABC of movements of body segments. From the right beginning, from that stages, we start our movement skill, motor developments, motor skill developments, and then we flourish the neuromuscular coordination. Talent. So when we think about that, this is the legacy of the movement education process. When we think about the movement education process, different fundamental skill movements we have to develop first. And after the mastery of the different movement skills, motor development, perfection will come. Based on the motor development perfections, the talent of the different stages, we can set it up. And the talent detection, talent identification, talent development, and the selection. There may be 3 phases. Talent identification program, this is long-term process I have already mentioned. And beside that, we can have 3 phases. First phase, primary phases, secondary phases, and the last phases. In the primary phases, we have to focus on the development of the different movement skills and the fundamental movements. And the second thing is coming towards the mastery of the skill development and the technical developments. After the last phase is the selection of a specific skills or the sports or games. In this way, the talent identification can come up. In context of the northern regions, for example, in Manipur states, I can say proudly that any kind of sports, let it come. In Manipur, it can be adopted very soon, very quickly, and it can grow within the short lifespan or within the short period, and it can flourish up to the advanced level. However, we don't have that much infrastructure. We don't have that much facilities. We don't have the different sports management or the sports development or sports cultivation or talent identification program. We don't have. Not only the Manipur, in the northern regions. In the northern regions, all these 7, 8 states, these are all the hilly areas except the Assam, Gauhati areas. And the others, the hilly areas. In these hilly areas, how the talent can be groomed, this is also very big challenges. And everyone, anybody who came to or who is visiting to the Manipur, they will know, who is visiting to not only the Manipur in the northern states, they will be knowing very well how's the environmental conditions. So in this way, when we are thinking about the talent identification, talent process, it's grooming from the grassroots level. So in the school education program, if we can maintain, if we can insert this in the curriculum program, that will be very effective. Now, National Education Policy 2020, it gives a very big scope to include the sports, health and the fitness,
and the wellness, and this is the very great opportunity for us for the planning of the talent identification program in the school levels. For the talent identification program, if we're supposed to have in the school level, mass participation is very much important. We need to have the good infrastructure and facilities provided, and we need good coaches, trainers for the planning and for the this systematic this program of the sports and the different activities program in the school level. And we need to organize different school level competition also. Not only that, the sports, now we are talking a lot about the sports science. The sports science, that is not only for the higher level education program. From the right beginning also, when we think about the talent cultivation program, the sports science backup also very much important. We are talking about the many factors. There are lots of the sports performance limiting factors. This is sports performance limiting factors. These are all also the sports talent limiting factors. It may be physical factor, it may be psychological factor, it may be biomechanical or mechanical different factors, it may be anthropometrical factors, it may be sociological factors. So different limiting sports talent limiting factors we have. So on this basis, on this factors, if we focus so on the different phases, we can develop the talent and we can select finally, and it can be this promoted to the advanced training plan with under specific coaches and the trainers. So in such a way, we can have the specific program in the school level also, and so mass participation and the proper infrastructure facilities development and the good coaches, trainers, and the physical education teachers, physical education, the proper curriculum program in a school level, which is focused on the proper implementation of the physical activities and the games and sports. This is very much important. I think so. Thank you. Thank you so much, sir. So before I conclude your thoughts, I would like to just ask one thing. As we all aware, like entire Northeast, in fact, Manipur is very well known, the powerhouse of football and boxing and even weightlifting. Lot of stars we got in Indian sports. So what are the main key factors behind that all other part of the country can take away from them? Yes, that very good question, and very critical also. And I have already mentioned that we don't have good infrastructure and facilities. This Manipur, this is a tiny state, comparatively to the other big states, mainland states, I have to say. And within these states, only 500, 600 square kilometers only plain level. Others, these hilly areas. Hilly peoples also plain level, in the peoples living in the plain also. We are all gathering in the Imphal areas. Some very few districts we have. These districts also very small. Within these compact small districts to groom different sports, I think so. It is not much difficulty we are finding. The facilities if we have, and the very good infrastructure if we have, and the proper the support from the not only from the government side, from the local people, it is, if we have, we can grow very easily. That is happening in Manipur. The lots of number of players coming out from the Manipur state. And the boxing also, different weight categories, games and sports we can say, and the football also very popular. Everywhere when we go to the nook and the corners of the state, when we go, we will see the football is everywhere. And not only that, now the hockey also very popular, and the different competitive sports like judo also very much popular, and the wrestling also, and the martial arts, and the competitive sports taekwondo, wushu, maybe karate also, and these are all the very popular. And the other team games also, basketball, volleyball also popular. However, this by the naturally gifted structure of the our anatomical structure, this is not much familiar. It is not
much advanced in these high level games and sports. So in the team games, football is very much popular. Hockey also very much popular. Cricket now, the cricket is the very much very fastly growing in the states. And the cricket, those are playing, the cricket players, they are earning a lot also in Manipur state. And the other games, like we know, that sepak takraw also initially started from the Manipur adopted very quickly. The traditional sports also, this is also very much popular in Manipur. And so in context of India, Manipur is till now producing 19 Olympians. And from this, the Manipur population is around 30 lakhs only. Out of these 30 lakhs to produce 19 Olympians so far till now, this is a very huge contribution of the Manipur in Indian context, I think so. So in Manipur, if we proper facility infrastructure, proper financial support from the government and from the different stakeholders, different franchises or different funding agency or different sponsors. If we come in Manipur states very quickly within a short period, the number of players can be produced and the number of players can be signed in, not only in the nation, in the international level also. Still that is going on. These are these few perspectives just I'm highlighting, sir. Thank you. Thank you, Doctor. Under his leadership, the college has become a premier institution offering BPEd, MPEd program affiliated with the University of Kashmir. Dr. Hussain has been instrumental in promoting sports culture, professional training and research in sports sciences in Kashmir Valley, ensuring quality physical education. This is even geographically challenging region. So I would like to invite him and I would like to have one question from him, like inclusive education remains a major challenge in remote and conflict affected regions. So the question is, what strategies can ensure equitable access to quality physical education and sports opportunities for the children? Over to you, please. My co-panelists on the stage, other dignitaries present here. First of all, I am very thankful to the Physical Education Foundation of India who have given me this opportunity to express my ideas here. The topic for the panel discussion is here, developing talent through education on building strong foundation. For establishing any foundation, there are some core components on which we have to focus. The first component is the motivation. We have set the vision that we should get the opportunity to host the Olympics 2036 and to get the huge medals in that competition. It is only possible when we will adopt a policy in which there are motivational drives, tools for the participants. Then we will not be away from the target which we have set, that we can get more medals in the Olympics 2036. Then the second strategy which is there, that is the fundamental skills which we have to taught at early stage, and we have to analyze their talent, their potential, their ability, and that should be given a proper platform. Then they should be trained with such persons, such personalities, such coaches who are well versatile in their profession. Then the other aspect which is there, that is the holistic development. How holistic development will take place among the players, that is also the concern among the professionalists. We should not focus only the physical aspect, physiological aspect, psychological aspect, social aspect, and skill aspect. Every aspect should be addressed properly. Then we can develop the individual holistically. The most important thing which I
focus should be, the maximum concentration should be given that is the growth mindset. क्योंकि खेलोगे पढ़ोगे हो जाओगे खराब तो वो जमाना नहीं रहा. Now the strategy should be changed. अभी growth mindset के लिए हमें क्या करना है? That should be the concern among the professionalists. We should have to change the mindset up. Just during the break, I was discussing with some fellow. He was talking that my parents were not allowing me to adopt this profession. मैंने उनको बोला why? Lot of excuses were there. There is no respect, there is no job, there is no other issue. There are multiple issues. But how we can change this mindset up? That should also concern among the professionalists. Then the critical thinking. We must think positive. If we can involve the individual in any kind of sports, that in that sports he can gain the respect, he can gain the honor, and he can gain his dignity should be acknowledged accordingly. That is the concern. And the problem solving. There may be problems because while participating in the sports, there may be some injuries, and that injury should be addressed. For that, the sports sciences and other allied areas should be taken on board, and there should be a consensus of opinion among all the disciplines, how it is to be addressed, what kind of nutrition is required, what kind of facility should be provided. Then we can expect that we can get more and more medals in the coming Olympics. And for this, we have to go through the different stages. The first stage is early childhood focus. At the early age, because we have almost 10 years at our disposal. So when we can groom an individual, we are talking that he should be the medalist for the coming Olympics. We have almost 10 years at our disposal. So we had to groom him in such a way so that what expectations we have, that will come our expectations. And the prioritization of the activity, we have to prioritize the sports in which we are expecting that we will get the medals. And geographically, physically, physiological aspects should be taken under consideration where the sports are popular. For example, Haryana is very popular in wrestling, and other areas there are particular sports in that particular discipline, and such sports should be promoted in that particular habitat, particular climate. And when there is requirement that they should be given the national level exposure, international exposure, opportunities should be given them. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Tokat. So, as we know, like Jammu and Kashmir produced a lot of players for the national football team, like Sajid Dar, Asfaq Hussain, and there are many more. So, what is the reason? There are many other games also. What I personally experienced, like a lot of players are coming into the football ecosystem. Yeah, football is very popular since the inception. There are no doubt it's a valley, and the most people, our elders, are promoting, especially football there. That is why we are getting more and more football players who are participating our country at national as well as international. Okay, thank you so much. I will take questions from our participants also, but later on. So now I would like to invite our next panelist, Dr. Harish Kumar Tiwari. He is Deputy Director of Sports at Nagaland University, a prominent volleyball player, FIBB Level 2 certified coach, and he is also a Vice President of Sports Performance Analysis Association of Bharat. Dr. Tiwari has led university teams to national competition. His extensive experience in sports organization, coaching, administration contributes significantly to sports development in Northeast India, ensuring students from remote area receive quality sports education and competitive opportunity. Along with that, Dr. Tiwari was the founding faculty of National Sports University, Imphal, Manipur. He had contributed in various capacities such as teaching, administration, and coordination with the officials of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India. He has also published numerous books and research at national and international arena. So,
on behalf of the organizing committee and personal behalf, I would like to invite you. And the question that we want from you, the answer from you, that universities play a key role in bridging school, sports, and elite performance pathway. So we would like to know your opinion. How can higher education institutions strengthen talent pathway through structured competition and athlete support system? Over to you, sir, please. थैंक यू गंगवार जी। सभी को नमस्कार। हमारे को पैनलिस्ट जो हमारे बगल में बैठे हैं उनका भी धन्यवाद, और सबसे बड़ा धन्यवाद पेफी टीम को जिसने हमें इस मंच तक पहुंचाया। तो आई केम फ्रॉम द लैंड ऑफ टेरेन टू द प्लेन, and my place is also famous for the Dr. Tiao. He was the first independent India football team captain. So I am representing Nagaland here in front of you. So hopefully I will try to justify our coordinator person, moderator. So as the theme of this session is development of grassroots. First, I will come to the grassroots incident, but then I will come to the institutional role. We are talking about grassroots. Always we are saying we have to develop the sports in grassroots level, but we have to think about our curriculum, which is following in the schools as well as colleges. Hardly 1 or 2 classes are given for physical education. In bracket, we can say for sports. Hardly 1 or 2. I'm just focusing on this word. And we are saying we have to develop the sports in grassroots level. So we have to restructure the school framework, school curriculum, and give more emphasis to the school first. Then we will come to the university part. And nowadays, this scenario, not this government or any government, I'm just talking about the development of sports in first school, then higher education institutions. So we have less exposure in grassroots level. You all know about the SGFI, only that is the high level tournament for the schools. So if our focus is to develop grassroots, then we have to give more competition, more tournaments in the school system. And we have more opportunity in college level. As you all know about this AIU, Association of Indian Universities, was framed in 1925. It was before independence. And from that time, it is already working. And nowadays, so many competitions for university and colleges. Recently, one more amendment was Khelo India University Games and Khelo India Youth Game. Before that, we already participating in inter-university. And inter-university, I think more than 140 sports are now participating. And out of that 140 sports, more than 200 events are there. Like in athletics, more than 34 events are there. So gymnastics, so many events. So we are participating almost 200, more than 200 events. But we all are directors or sports maker or maybe school person. Honestly, how many schools and colleges are following the 100% infrastructure for that particular sport which you are conducting in your institutions? Hardly 1% of total school and colleges length. And we are thinking for our upcoming Commonwealth 2030 and also would be Olympic, which we are going to host maybe. Okay. So first we have to start grassroots level infrastructure also apart from the participation. We have give them the best sports infrastructure. Suppose we want to conduct basketball tournament in our school, we will give them the indoor, because in the history of volleyball and basketball, I heard that William G. Morgan and James Smith said, volleyball and basketball sports is an indoor game. But are we fulfilling that standard or structure? I think 1 or 2%. So first we will give the training grassroots level with the best facilities, infrastructure. Then we can think for the more number of medals. And I'm coming to your bridge of this key, how we can this school education system, sports system with the colleges. So we have to develop the database for schools. Suppose up to 12th class in any game, suppose in football,
players are participating, but where they will join after school, either they are going to any college or they are going abroad. So that database should be carried forward in the university system. Then we have to monitor them, give them proper training, and same facilities we have to provide them. So over to you, sir. Thank you so much, sir. So we would like to know a little bit more about the athlete support system, like in universities and colleges, in terms of scholarships, in terms of their career growth. Thank you. I will try to focus for career growth also. We have very good opportunity for the career, but we have to give the assurance during their training. Suppose somebody joining SAI, we have large number of training centers, but after joining the SAI centers, they don't have the guarantee to get any kind of job. If they are the medalists, only suppose first day, yesterday, our joint secretaries are told that we have so many schemes, and also from Delhi, somebody told that 7 crore, I think Tiwari sir told we have so many rewards are there, but only for the medalists. Those who are dedicated player and due to some injury or some other things, they are not able to achieve the medal. What are the plan for them? So we have to give at least career feedback, which should be carried forward to their career, and it should be also included in the form of nowadays to CBS system. We can give some credits to them for their better result. So other schools also, colleges also can be take part of the particular sports or any events. So I think by that we can secure their career and give more chances to participation. Okay, thank you so much, sir. So in your opinion, the more important to consider the players' pathways, database from school to university, and then encouraging them or making them aware about the career development. So thank you so much, Dr. Harish Tiwari, sir. Now I would like to invite our next panelist, Dr. Rajesh Dahota, sir, Professor, Amity School of Physical Education and Sports Science, Amity University. So let me give introduction about Rajesh sir. So sir is a professor at Amity School of Physical Education and Sports Science, and he brings expertise in physical education, pedagogy, sports management, and research methodology. Dr. Dahota academic contributions focus on modernizing physical education curricula to meet international standards, integrating technology in sports training, and preparing competent physical education teachers who can transform grassroots sports participation and develop inclusive program for diverse student population. Sir, you are heartily welcome here, and the question we would like to ask you, like technology and sports science are transforming talent development globally. So how that integration of digital learning platform helpful for the development of grassroots professionals? Sir, over to you. थैंक यू सर. सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को एंड the organizing committee of the PEFI and especially the Dr. Upal sir, who is the backbone of Physical Education Foundation of India. मैं सबसे पहले बात करूँगा ग्रास रूट लेवल प्रिपरेशन के बारे में, हाउ वी आर प्रिपेयरिंग द प्रोफेशनल एट द ग्रास रूट लेवल. जैसा कि हम लोग फिजिकल एजुकेशन टीचर्स डिफरेंट फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स को प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें वी हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन whether we are preparing right physical education professionals or not. Are they ready to take the challenge of the society or the college and the university where they are going to serve? This we have to see first, then only we can see the higher goal of the government of India, like they are going to, we are bidding for the 2036 Olympic Games,
क्या हम लोग जितनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्सपेक्टेशंस है मेडल्स की, जैसे कि कल जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दी है, उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने जो कहा था कि भी दीज आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दीज आर द मेडल्स वी वांट टू बी बिलो 10 इन क्या नाम योर कमिंग 2036 ओलंपिक गेम्स। क्या हम लोग बेस्ट 10 में आने के लिए प्रिपेयर्ड है? हाउ वी आर गोइंग टू कम दिस बेस्ट 10 इन ओलंपिक कमिंग ओलंपिक गेम्स? तो जो हमारे पास आज जो जनरेशन आ रही है, फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशन की जो जनरेशन आ रही है, दे आर लिटिल बिट रिलैक्टेंट। उनका ज़्यादातर जो है वो प्रोफेशनल्स के लिए, प्रोफेशंस को टेक करने के लिए रेडी नहीं है। जो उनको चैलेंजेस फेस करने हैं उसके लिए वो रेडी नहीं है। जो उनकी प्रेपरेशन, जो स्कूल लेवल में उनकी जो प्रेपरेशंस हो रही है, दिस प्रेपरेशंस नीड लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। These preparations need to be handled the way so that we will be able to take right professionals in a right directions. हम लोग उनको तैयार तो कर रहे हैं, कॉलेज लेवल पे हम लोग तैयार कर रहे हैं उनको कि भी कैसे इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करना है, कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करना है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में, लेकिन क्या स्कूल एजुकेशन सिस्टम उनको सब कुछ यूज करने के लिए अलाउ कर रहा है? लेकिन अगर हम लोग देखें स्कूल एजुकेशन सिस्टम में, एक फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है नियर अबाउट 6 to 7 क्लासेस डे में फिजिकल एजुकेशन की ले रहा है। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फिजिकल एजुकेशन टीचर की है कि भाई वो फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है ओलंपिक के लिए गोल्ड मेडलिस्ट को प्रिपेयर करे या मेडल विनर्स को प्रोड्यूस करे स्कूल लेवल में? नो, दिस इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फिजिकल एजुकेशन टू प्रोड्यूस द मेडलिस्ट for the country at school level. This is his or her, this is their responsibility to identify the talents and hand over this talent to the professionals like the coaches appointed by the government of India to train these talents in different centers. ये हमारी जो है क्या नाम जो है आगे डायरेक्शंस जो है हमारी होनी चाहिए। अगर हम लोग एक एग्जांपल ले इंग्लैंड का, अगर हम लोग देखें 1996 में इंग्लैंड की जो पोजीशन, ग्रेट ब्रिटेन की जो पोजीशन थी ओलंपिक गेम्स में, तो उनका नियर अबाउट उनके 36 मेडल्स उनके ओलंपिक गेम्स में थे 1996 में। अगर हम लोग अभी लास्ट 24 की ओलंपिक गेम्स देखें तो उसमें 24 ओलंपिक गेम्स में उनकी पोजीशन ओवरऑल में 7th पोजीशन है। और नाउ फॉर कमिंग 28 ओलंपिक गेम्स दे आर टारगेटिंग फॉर बेस्ट 5। तो उन्होंने उसे कैसे अचीव किया? हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है, हमारे पास इतनी यंग जनरेशन है, हमारे पास नियर अबाउट 48 करोड़ जो हमारी पॉपुलेशन है आप लोगों का अप टू क्लास 12th लेवल में। क्या हम लोग उसमें से इतने प्रोफेशनल्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग मेडल विनर्स को प्रिपेयर करें? लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉपर जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, प्रॉपर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे और प्रॉपर जो है जो मैन पावर की हमारे लिए रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट्स को हम लोग मीट करें। अगर हम लोग प्रोफेशनल्स के बारे में बात करते हैं, वेदर इट्स दी फिजिकल एजुकेशन टीचर और दी कोचेस, अगर हम लोग देखें ट्रेंड जो टीचर्स है, स्पेशली अगर हम नॉर्थ इंडिया में हम लोग देखें तो नॉर्थ इंडिया में हमारे 35% ओनली ट्रेन टीचर्स है। क्या ये 35% ट्रेन टीचर्स है, क्या वो प्रिपेयर कर पाएंगे प्रोफेशनल्स को नॉर्थ रीजन में, जहाँ की हमारे बहुत सारे डोमिनेटिंग स्पोर्ट है लाइक फुटबॉल, वी हैव बॉक्सिंग जो कि हमारे इंटरनेशनल और ओलंपिक लेवल में मेडल विनर्स हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये देखना है कि भाई हम लोगों को सबसे पहले ट्रेन प्रोफेशनल्स हमारे रेडी हो ताकि वो प्रॉपर राइट डायरेक्शंस में राइट कोचिंग दे और राइट टैलेंट को हम लोग आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंगली उनको हम लोग जो है मेडल विनर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you so much, sir. So, as rightly pointed out by sir, like the finding out the right professional and training them and mentoring them for
facing the challenge that we have to face in physical education and sports, especially at very early age at grassroots level when we talk about the foundation base of the any sports. So thank you, sir. Now I would like to invite our next panelist, Dr. Sudarshan Biswas, sir. So Dr. Sudarshan Biswas, sir, is the professor in Department of Physical Education and in Sports at Vishwavarti University, Central University, Kolkata, West Bengal. Is the key contact for PEFI West Bengal chapter with extensive experience of physical education and pedagogy, sports administration, and policy development. Dr. Biswas has been instrumental in shaping sports culture and physical education system in Eastern India, advocating for inclusive evidence-based curriculum that develop both athlete excellence and holistic student development. Sir, welcome you, and I would like to know your opinion on the traditional games and indigenous physical activities are often overlooked. So what is your views, like how indigenous sports and physical culture be integrated into mainstream of physical education curriculum? Also, like to promote the cultural identity and participation of talent at very early grassroots level. Sir, over to you. Respected moderators, Narendraji, acting registrar of LNIP, present here all dignitaries on the and of the dais. I am on behalf of President of West Bengal PEFI chapter as well as the Professor of Vishwavarti University. I thank everybody and I am also happy to join here. Actually, I am working, I have two opportunity to get the 14 years as the administrator in university format, as well as the 15, 16 years I am as a faculty member of the Central University Vishwavarti. And throughout the, since you have seen, the actually performance is depends upon the two factors. One is the intellectual capability and second is the physical efficiency. Intellectual capability means correct and quick decision in appropriate situation, and that should be implemented by your muscular system. Even in Olympic Games, only the aware of intellectual capability and physical efficiency without apparatus or with apparatus. In Olympic also, this is the means aware of intellectual capability and physical efficiency. So question is that in the high level performance, how we will achieve. Actually, educational institution is a industry for human resource development, where the 90 to 92% human being are coming our educational system. And it is a breakup for primary, secondary, higher secondary, college and university, as well as then the country. So we have to see that the step-wise. If we see the primary level, there we have to see there is no physical education teacher as such. And actually we have to know that what is the function, basic function as a physical education teacher. Actually, physical education teacher have the basic function is that he has to develop the general fitness of the students to carry out their daily life tasks easy and effective manner. Second part is that whatever infrastructure is there, he has to maintain and develop the further new infrastructure. And third one is the most important, which is to identify the talented player and give them support for high level performance from primary section. But unfortunately, we are not having any physical education teacher in primary level. That is the primary section. Second part is that if we go for the school level, there is the physical education teacher, but unfortunately I have seen for Eastern Zone, any physical education teacher joined as a physical education in a school, that time head teacher are telling that from tomorrow onwards, you will take the history and geography classes. He is the physical education teacher. Up to 60 years, he is taking history and geography classes. And there is no, as such, specific curriculum, compulsory, like other subject. There should not be reflected the number in our mark sheet. That should be. If it is not, then automatically
parents are sending their child in evening, in afternoon time to the tuition. So this type of happens is going on in primary. Then if we see the college level, if some state you have seen the sports officer in college, so many sports, when I am a student of LNCP, that time at Madhya Pradesh already taken each college having the sports officer. But so many states have not this type, because young players, young students are spending 3 years at least in the university college system. So there should be a sports officer. If it is a sports officer, at that time they can find out who has the extra quality. And another thing we have to see that the university level. So in university level, you see that so many results we are getting in our inter-university competition. Can you say the private university or other leading university, if they are, is there develop their own players? No. Only those are coming for admission and only selection and give them. University are not doing anything for betterment of high performance. So that type of facility is not we have. So university, leading university, we have to develop the scientific base and scientific lab. And that backup should give to the talented player in university sector. And AIU also having so many responsibilities. Sometimes calendar is not award given. Other federation tournaments or national tournaments. And sometimes, as you know, that the BCCI, Association of Indian University, is the affiliated member of BCCI. Why not play the Ranji? Where the more than 500 universities are playing as a university cricket tournament. One team we can prepare, but not there giving the chance. Only VG Trophy or Rohington Barrier Trophy. So this type of, we are not directly contact with the federation also. So students of the university is the not getting chance. Only inter-university, but some 7 or 8 or 10 teams are going to participate the World University Games. Where others, they are not getting. If not go, that's okay. But after All India Inter-University, collect the best player and give them some extra high-level coaching camp anywhere. It may be in India or outside the India. So all player will come. So this type of happens is going on. Lastly, I can say that if we develop the physical education as sports as well as the broad-based principle, from very beginning I heard that the broad-based principle we have to maintain. But how? Because physical education teacher only concentrate with the development of the general fitness of the students as well as identify. And if we start the panchayat system, because I am a teacher of physical education, I have collect the volleyball players 2 or football players 5. I have to send him one close to the panchayat facilities. They have to give. Rupees will come from there. Because I am a physical education teacher, I am a footballer. I have done NIS, I have done so many things. But I cannot teach either gymnastics or yoga or basketball. Everything is in our school. I will become the expert of everything. Only I have to identify and send them player to the specific place, which is the platform of the panchayat level, or that should be in the subdivision level, district level. There we will get the facility. There should be the medicine facilities, rehabilitation area, as well as the good coaches. Physical education teacher is not a good. Nowadays, the good coach, he will involve in our curriculum, isn't it? So coach should be those are handling the current team, the state team or national team, those are associated with the associations. So humble request, we have to work together. SAI is having the infrastructure as well as the good coach. University or educational institution having the young blood. Association having the quality to collect the player for a national or state teams, federation or association.
and government will give the means facility to the means participation for high level performance, and corporate house also. Everybody, if we should work together, then some possibility is there. And again, another point I always say that if we develop the physical education, then should be ministry in our means state as well as the center is separate ministry. Sports ministry is the function is another, and the physical education ministry should be there. That will be the help for the physical education teacher, what is the lacking and what is the means develop. So many remedies and maladies is there. If shortly we can help, then automatically we can develop. I assure that after 10 years we will give a better result than in other countries. Thank you. Thanks to all. Thank you so much, sir. Very well pointed out by you, like intellectual capabilities and physical abilities needs to be identified of the kids. And then another important point, like identifying talent by the physical education teachers, and we should ensure them to train under the sports specific coaches. So thank you so much, sir. Now, I would like to invite question to all the panelists. Like early talent identification often conflicts with academic pressure and dropout. So this is, I would like to know from all the panelists, your like anyone can respond. So balancing between academic and sports is a challenge always for teachers also, coaches also, and the kids also. So what is your opinion? Like how we can develop a balanced model where it should be child centric and they are able to excel in academic as well as they can have a long-term career in sport also. Over to you all. Anyone, if you want to answer this. In just one point. Again, just so balance between academics and sports. The challenge for the kids always I mean in our country or anywhere. So how they मतलब वो कैसे balance कर सकते हैं academics को भी और sports को भी? See, actually in educational system they will concentrate with the physical fitness as well as the identify the talented players, and teachers and coaches should be co-relation with each other. If he will find out that two good volleyball players is there, he will consult with that means higher education as well as the coaches. For sometimes our players are after 12, he has to get a good means college at center of the corporate corporate means central the Calcutta or village to the higher town level. That he can go according to on basis of his sports qualities. So teachers will cooperate with the coaches. He is a good player, you can take this club or university or colleges. For this type of players can higher educated as well as he give the best performance as well. मैं एक लाइन बोला था प्रैक्टिकली मैं अभी जो क्वेश्चन है उसको बताता हूँ. आप लोग बेसिक फंडा क्या अपनाइए शुरू से बच्चे को, जब वो स्कूल जाने लगे या कॉलेज जाने लगे, तो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि उसको 10th तक आप फ्री छोड़िए, 10th क्लास तक उसको दोनों पैरेलल लेके चलिए. उसमें हमारा काउंसलिंग हो जाए. काउंसलिंग के सपोज एक बच्चे का हाइट बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है तो हम उसको हाई जंप, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल इसमें भेज सकते हैं, या जो उसे रिलेवेंट गेम है. वहाँ पे लगता है कि बच्चे का परफॉर्मेंस लेवल वो नहीं है जो होना चाहिए, तो हम वहाँ से उसको क्या कर सकते हैं कि हमें वहाँ रोकना भी है. अगर उसको एकेडमिकली उसका बैलेंस है कि एकेडमिक में भी कर सकता है तो उसको हमें ड्रॉप कर. सपोज एक बच्चे का हाइट 4 फीट ही रह गया, बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलता था, बट उसका एंथुसियास्ट को हम कैरियर के साथ सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, उसको 10th के बाद हमें मोल्ड कर देना है टुवर्ड्स एजुकेशन. ही कैन बी कंटिन्यू बट इट शुड बी सेकेंडरी नॉट प्राइमरी. उसके बाद जैसे दूसरा आपका क्वेश्चन में लगता है कि बहुत अच्छा प्लेयर है, अब हमें उसके बैकअप प्लान में फिर उसको स्पोर्ट्स को ही फोकस करना है. वो पढ़ाई नहीं कर सकता, ना तो आईआईटी या जेईई की तैयारी कर सकता, ना नीट की कर सकता. अब हमारे जो मैं पहले भी अपने टॉक में ये बोला कि इनके लिए बैकअप प्लान किया कि अगर वो डेडिकेटेड प्लेयर है और प्रॉमिसिंग प्लेयर है, वहां से हमें उसको पिकअप करना है. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को
जिम्मेदारी से निभानी है, उनको काउंसलिंग करके और सही डायरेक्शन में लेके जाना है। जब ये हम लोग करने लगेंगे तो शायद हमारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा। Thank you, Dr. Hari sir. Now, I would like to the opinion of Soka sir, please. जहाँ तक बैलेंस का सवाल है एकेडमिक्स और उनके स्पोर्ट्स का, I have just submitted a proposal to my government that there should be the supports, regional supports academies. When they will be free, at that time the coaching part should be imported, and when there is the academic part, at that time they should be enrolled in the nearby schools. And this talent should be identified right from all the nooks and corners of the country, and they should be enrolled in the sports academies. Then there will be the balance between their academics and their sports. Yes, thank you. Maybe the last opinion, and we stick to time, please. Thank you. About this issue, this is some conflicts between the academics and the sports. It seems to be a little bit complex. However, about this matter, when I'm thinking about this, we have to go back to the curriculum program. In the curriculum program, if we have the proper insertion of these activities program, like other general subjects, physics, chemistry, these and that. So like that, if we have the proper facilities, infrastructure, as well as in the curriculum, if we put the physical education and the games and sports, proper subjects, implementation, proper time, and the proper facilities to the students, obviously this will grow in parallel. And so we can balance both the academics and this sports also. We know that by the participation of different physical activities, we can improve our physical fitness, mentally sound, and socially adjustable easily. And we can have the obviously we can promote our personality in the different aspects of the social social activities. So this is very much important. So in the curriculum, we need to put the physical education and sports activities as a subject equivalent to the others. Then only we can promote the physical education sports from the right beginning of the school curriculum, school education program. Okay. Thank you. Thank you so much, sir. So I would like to invite maybe a few questions from the participants. Be specific to the question, and any question if you have, please you can ask to our panelists. No? Okay. So, okay. So, thank you. So, I would like to conclude the opinion of the panelists. So, like when we talk about the grassroots talent development and nurturing them, so as very well pointed out by our expert, like movement education, I mean teaching them movement at very early age, that is important. Then encouraging for the mass participation at grassroots level, and then quality coaching. And along with that, we should consider the holistic development of the kids. That also a very key part to be considered, and then the long-term development program for them. So before that, I would like to, I may not be the right person, but just would like to maybe a question for everybody, or maybe a thought for everybody. When we talk about the grassroots, it's very sensitive area. And when we talk about high performance, then everybody is considering. So when we talk about the medal, then everybody looking about the top qualified coaches or maybe trainers, and wants to train them under with the best coaches or top in terms of qualification and experience. When we talk about the grassroots, then we may be very much loving and very much interesting to allow kids to be trained by a very beginner coach with low level of knowledge. So what I experienced in past maybe 15 years, like highly qualified coaches should not be allowed to train only for the elite players. They should be given coaching to the small kids, because more experience, more knowledge will be helpful to the grassroots. Because बोलते ना white board पे अगर कुछ लिख दिया वो बाद में मिटेगा नहीं. So the one who is writing at the white board, the first word, he should be more experienced and talented. So thank you everyone for. I want to answer the question of one participant. Next conference is maybe. So I want to answer just one line.
So, sir, you all please visit to Nagaland, especially from 1st to 10th December. That is Hornbill Festival is celebrated by the state. So, most welcome. And if you find any difficulty, please contact me. I have my contact detail in my website, in our university website. So, please contact me, and I will try to give my best to give best hospitality in Nagaland. Thank you so much. Thank you, Dr. Tiwari sir, for invitation. And thank you all the panelists once again on behalf of organizing committee and my personal behalf for being a very important part of this panel. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Narendra sir. This was really a very wonderful and very impactful session. And I'm sure most of us sitting here were very much facilitated with the knowledge that we had during this interaction, particularly the full circle from policy to practice, from science to pedagogy, and from aspiration to implementation. I once again would like to thank all the panelists as well as the member present over here. And before we move ahead, I would like to request Piyush sir to on the stage for the felicitation. Thank you. So now अब बस एक स्टेप और रह गया। आप लोग जो कल से कर रहे थे, हम लोग जो चर्चाएं कर रहे थे, उसमें लास्ट स्टेप आ गया है कि हम इसके बाद क्लोजिंग सेरेमनी के लिए बढ़ रहे हैं, वैलिडिटी फंक्शन के लिए। तो मेरा अनुरोध है कि बस अभी आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखना है और अपने जितने स्पीकर हमने सुने हैं और जो हमारे फेलिसिटेशन है, कुछ हमारे बीच में स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं, उनका भी मैं परिचय आप सभी लोगों से कराऊंगा। इसके साथ साथ मैं अनुरोध करूंगा अपनी टीम से कि वो तैयारी करे फेलिसिटेशन सेरेमनी की। उससे पहले मैं दो तीन बातें आपको बताना चाहता हूँ। हमारे बीच में आए हुए हैं संदीप ठाकुर जी। संदीप ठाकुर जी भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व में राष्ट्रीय मंत्री रहे हैं और माननीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी के सहयोगी रहे हैं, एपीएस रहे हैं जब अनुराग जी खेल मंत्री थे। हमारे बीच में रमेश भाई साहब आए हुए हैं, नॉर्थ एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर रहे और पार्षद रहे हैं। श्री संजय गौतम जी कल से हमारे साथ लगातार हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ आए हुए हैं, योग विद्वान हैं सिंघानिया यूनिवर्सिटी से, और इसके अलावा कई सारे और डिग्निटीज हमारे साथ लगातार जुड़े। फेलिसिटेशन सेरेमनी से पहले हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे अपने चेयरमैन सर डॉक्टर उपल सर से और बंसल सर से कि आप दोनों लोग मंच पर आएं और हम लोग एक किताब रिलीज फंक्शन करने हैं निसार हुसैन सर का, जिसको ये योगा इन नमाज का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। बताया कि जो लोग हम नमाज पढ़ते हैं इस्लाम में, वो सेम योगा का प्रतिरूप है। योगा के माध्यम से, क्योंकि सनातन परंपरा में योग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा कराई यूनेस्को से। तो इस तरह से योग का जो महत्व है वो सभी धर्मों में समान है, सभी धर्म उसमान को। इसी बात पर निसार हुसैन सर की किताब है, उसको हम रिलीज करेंगे यहाँ पर अपने पैनलिस्ट और हमारे गेस्ट के साथ। तो बंसल सर, उपल सर, संजय गौतम सर, रमेश सर, निसार सर, सर आगे आ जाओ ना। आइए।
हमारे बीच में हंसराज कॉलेज से डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन डॉक्टर रचना शर्मा हैं, उनकी भी एक किताब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पर, उसके लिए भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ रचना मैम को कि रचना मैम आ जाएं डाइस पे। रचना मैम की बुक नहीं, मैम तो आ गई, बुक मैम बता रहे हैं कि दोपहर में किसी ने रिलीज करी है उस बुक को, तो हम लोग फेलिसिटेट करते हैं रचना मैम को उनके बुक के लिए। ये नहीं बुक कहाँ है, पर कोई तो पूछता हूँ, फेलिसिटेशन के लिए लाओ तुम। सर रचना मैम तो फेलिसिटेशन एक ही है, तो बस इसको करवा दो ना। हाँ जी बोलो। वो बुक इतनी पॉपुलर है कि रिलीज से पहले ही सभी लोग ले जा चुके हैं। हमने एक बुक बड़ी मुश्किल से अरेंज की है हमारे पब्लिशर थानी सर के द्वारा। थैंक यू मेरे अतिथियों का सभी का। और अब मैं अपनी टीम की पैपी से योगेश सर को बुलाता हूं कि वो आए और हमारे पैनलिस्ट, अरे सर आप लोगों का तो क्वालिफिकेशन होना है, हमारे पैनलिस्ट सबसे पहले लेसाम थंबल सर का स्वागत करें। लेसाम थंबल सर का स्वागत। लेसाम थंबल, योगेश सर स्वागत करेंगे। दोस्तों मैं चाहता हूं कि ये जो लोग स्वागत करने आ रहे हैं इनके लिए जरूर तालियां बजाना, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस इनके बिना नहीं हो सकती। योगेश सर वो नाम है जो पिछले कई दिनों से बिना सोए रात दिन जागते हुए, अगले 5 नाम जो आने वाले हैं 6 नाम, उन लोगों के लिए डबल तालियां इसलिए भी बजनी चाहिए कि उन लोगों ने बड़ी मेहनत की है। लेसाम सर का स्वागत करें। शौकत हुसैन के स्वागत के लिए दीक्षांत सोलंकी सर को बुला रहा हूँ। दीक्षांत सोलंकी आ जाएं। ये दीक्षांत ने पूरा काम कई दिन से, आप विश्वास नहीं कर सकते, आज इसका सुबह एमबीए का पेपर था, रात को 12 बजे घर गया और सुबह मैंने पूछा कहाँ है, तो पता रहा कि 12 बजे तक एमबीए का पेपर देने गया हुआ था अपना। तो मैं दीक्षांत सर से, ये पैफी की वो टीम है जिसने इस कॉन्फ्रेंस को रियल में सक्सेसफुल बनाया है। मतलब ये बैकबोन जिसे कहते हैं, मैं तो आके यहाँ भाषण देके चला जाता हूँ, बट असलियत में सारा काम यही लोग कर रहे हैं, पेपर प्रेजेंटेशन से लेके मैनेजमेंट से लेके सभी चीजों से। शौकत हुसैन सर का स्वागत करें। शौकत हुसैन सर प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, आप सब लोग जानते हैं। डॉक्टर हरीश कुमार तिवारी के स्वागत के लिए सौरभ राजपूत आ जाएं। सौरभ गुजरात यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स ऑफिसर है। पैफी की कॉन्फ्रेंस के लिए स्पेशली गुजरात से आता है हर साल, क्योंकि ये ही इज द मैन जो सारा ट्रांसपोर्टेशन और अकोमोडेशन का हेड होता है। कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले आता है, चुपचाप अपना काम करता है और चला जाता है। तो ऐसे वॉलंटियर्स हैं पैफी के जिनको पैफी से कुछ नहीं चाहिए, दे ऑलवेज गिव फॉर द पैफी। राजेश धोता सर के लिए एक नाम है हमारे पास में, पंकज कुमार। पंकज को हम सब लोग जानते हैं, जितना भी टेक्निकली पेपर प्रेजेंटेशन ये सब जितनी ई प्रोसीडिंग चल रही है वो सब पंकज, और जितना ये डिजाइनिंग देखते हैं, यू विल नॉट बिलीव, ही इज द डूइंग पीएचडी इन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्पायर फेलोशिप इसको मिली हुई है और टॉपर है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का एमएससी न्यूट्रिशन में, टॉपर है बीएससी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में, स्पोर्ट्स साइंस में। और ये जो डिजाइनिंग है ये 100% इसके द्वारा बनाई हुई होती है। रात के 2-2 बजे तक ये घर जाता है। मैं फिर कहता हूं कि मैं गलत हूं, मैं सिर्फ माइक पे आता हूं यहाँ पर, बाकी असलियत काम में ये लोग करते हैं। हमारे बीच में एक नाम और है, साहिल यादव। और ये सब लोग कभी ना कभी पैफी में इंटर्नशिप के लिए आए और फिर पैफी के होके रह गए। साहिल एक नया लड़का, यश
जो इसको पिछले पहली बार हम लोगों ने देखा। साहिल जल्दी आओ। साहिल स्वागत करेंगे सुदर्शन विश्वास सर का। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मैंने लोगों से नहीं कहा हो कि घर जाओ यार 11 बज रहे हैं मुझे सोने दो, मेरा टाइम होता है सोने का। और ये लोग डेडिकेटेडली रियल में काम करते हैं। ये इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस इज नॉट पॉसिबल विदाउट देयर सपोर्ट, विदाउट देयर एफर्ट। फिर हमारे मॉडरेटर गंगवा सर के स्वागत के लिए यश, अनदर पैफी इंटर्न जिसने पैफी में काम करते हुए अपने आप को आगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा फोटो मेरे खींचे हैं, सबसे कम काम मैंने किया है। इन लोगों ने सबसे कम काम किया है और उन्होंने अभी तक एक भी फोटो नहीं खिंचाया था। इसके अलावा हमारे बीच में बब्बू है, पुनीत है, डॉक्टर शरद हैं, योगेंद्र कुशवाहा, ऐसे बड़ी नाम है। बट मेनली पैपी के पीछे 4, 5, 6 लोगों ने बहुत काम किया है। मैं थैंक यू देता हूं आप सब लोगों का। थैंक यू सर। उपल सर, बंसल सर यहीं रहेंगे और सुजीत मान सर आप भी आइए। अब हमारे बीच में कुछ विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं। मैं उनके स्वागत की परंपरा का निर्वहन करने के बाद अपने ऑफिशियली हम लोग क्लोजिंग सेरेमनी स्टार्ट करेंगे। हमारे बीच में हमारे मित्र हैं संदीप ठाकुर जी, जिन्होंने पैफी को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, एक अपने लिए और गौरव की बात मुझे अभी अभी पता लगी है। ओलंपिक मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया जी 10 से 15 मिनट में हमारे बीच में आ रहे हैं कुश्ती में। और ये बड़े गौरव होगा कि एक ओलंपिक मेडलिस्ट आपकी क्लोजिंग सेरेमनी का चीफ गेस्ट बन के आ रहा है, रवि दहिया, जिसका नाम हम सब लोगों ने टीवी पर सुना है, देखा है। थोड़ी देर में वो हमारे बीच में रवि दहिया आ रहा है। तब तक हम लोग अपना कार्यक्रम करते हैं। संदीप ठाकुर जी को मैं मंच पे बुला रहा हूँ, वो आए और असिस्ट करें पुनीत संदीप ठाकुर सर को। नहीं, हमारे आज के मुख्य अतिथि रवि दहिया और हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर है मंजीत कौशिक जी। संदीप जी का पैफी को बढ़ाने में बड़ा लंबा योगदान है। उन्होंने पैफी के लिए जितना काम किया है, ये वो लोग हैं जो हमेशा पैफी के साथ किसी ना किसी मूवमेंट में खड़े रहते हैं। आदरणीय अनुराग जी के साथ, जब खेल मंत्री के साथ जब संदीप जी थे, तो लगातार संदीप जी का प्रयास रहता था कि मंत्रालय से पूरा सपोर्ट मिले। हमारे बीच में रमेश कुमार सर हैं, मैं चाहूंगा आप भी मंच पर आएं और हमारे अतिथिगण उनका स्वागत करें। सुजीत मान सर आप भी आगे रहें थोड़ा। रमेश कुमार सर निगम में पार्षद रहे हैं, एमसीडी में दिल्ली में, नॉर्थ में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं और पैफी के जर्नी में हमेशा हमारा योगदान देते हैं। आप लोग जोरदार तालियां बजाते रहें। ये क्योंकि ये समय चल रहा है और अभी रवि दहिया का हम लोग वेट कर रहे हैं। रवि दहिया जी जैसे ही हमारे बीच में आते हैं वैसे ही हम अपना हमारे बीच में डॉक्टर सुनील चौहान हैं सनराइज यूनिवर्सिटी से, अपना संजीवनी आयुष हॉस्पिटल के हैं, उनके भी स्वागत के लिए मैं बुला रहा हूँ। सुनील चौहान जी का स्वागत करें सब। संजीव जी आप मंच पे आइए। संजीव चौधरी जी।
योगेंद्र कुशवाहा जी का सम्मान करें, मध्य प्रदेश सेक्रेटरी का। आगे योगेंद्र पिछले 2 दिन से हम सब जिनको सुन रहे थे उन सब में है अमृता पांडे मैम, एक जिन्होंने नागपुर से आई हैं, पैफी के उन वॉलंटियर्स में से जिनकी डेट पहले कंफर्म करानी पड़ती कि आप इस तारीख को अवेलेबल हैं या नहीं। इज द असिस्टेंट प्रोफेसर इन रामदेव इंजीनियरिंग कॉलेज। और पैफी के इस कार्यक्रम को, क्या सभी कार्यक्रमों में ऑनलाइन या ऑफलाइन हो, पूरा स्टेज मैनेजमेंट के लिए अमृता मैडम को ही बुलाते हैं हम लोग। तो मैं अमृता मैडम का भी स्वागत कराऊंगा अपने डेलीगेट। जम्मू कश्मीर से हमारे बीच में अशरफ सर आए हुए हैं, मैं अशरफ सर को ही बुलाऊंगा कि वो मंच पर आए और हम लोग उनका सम्मान करें। ये हमारे क्या है, हर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। ये ऐसी यूनिक कॉन्फ्रेंस है जिसमें कम से कम 30 राज्यों के प्रतिनिधि तो शामिल होते ही होते हैं, कभी कभी 32 भी हो जाते हैं। 2-3 जगह से भी कहीं से मिसिंग रहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज पैफी ऑलवेज। अशरफ सर का स्वागत करें। अरुण उपाध्याय जी हमारे बीच में आए हैं, अरुण उपाध्याय जी का भी स्वागत करें। अरुण उपाध्याय जी भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और एक एक्टिविस्ट के रूप में तमिल हिंदुओं को अपना हक दिलाने के लिए एक लंबे समय से कार्यरत हैं और हिंदू संघर्ष समिति करके ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं दिल्ली के अंदर। हम लोगों के ये बैकबोन की तरह होते हैं, जब भी हमें कोई समस्या आती है। हम उपेंद्र राजस्थान से, मैं क्या समय का उपयोग कर रहा हूं इसलिए कि भी जब हमारे गेस्ट आए, चीफ गेस्ट रवि दहिया जी आए, तो हम उनको ज्यादा सुन सकें। कुछ लोग और साइलेंटली पैफी में काम करते हैं, ऐसे एक नाम है ऋषि यादव का। वो फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स से नहीं है, कैटरिंग की इंडस्ट्री का बड़ा नाम है दिल्ली में, लेकिन पैफी के लिए हमेशा डेडिकेटेडली और हमारे कहने पर इस सब कार्यक्रम को करने के लिए धन की भी जरूरत होती है। तो कभी कभी क्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बरसों से सहयोग कर रहे हैं। आइए ऋषि जी, देखो आपके लिए सबसे ज्यादा तालियां बज रही हैं क्योंकि धनवान की पूछ हर जगह है। पप्पू मान, हाँ लेके चले जाएंगे। अब एक ऐसा नाम मैं बोलने जा रहा हूं, मैं हकीकत बताऊं, यदि ये नाम ना हो तो पैफी कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं हो सकता। अमित कुमार, वो अपने आप ही मंच पे आ गए, जल्दी से मंच पे आ जाओ। कुछ साइलेंट वर्कर हैं, अमित की एक टीम है 30-40 बच्चों की जो चुपचाप आती है, रजिस्ट्रेशन का काम करती है। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, हमेशा बोलता हूँ, पैफी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स नॉट एन इंस्टीट्यूट। ये यूनिवर्सिटी नहीं है कि जहां पर डेडिकेटेड प्रोफेसर हैं, डेडिकेटेड स्टाफ है, ऐसा नहीं है। पैफी में सब लोग वॉलंटियर हैं, कोई 2 दिन का समय निकाल के आता है, कोई 1 दिन का, कोई आधे दिन का, ऐसे ही सिस्टम से समय निकाल के लोग आते हैं। अमित के लिए एक अलग से मूवमेंट तो बनाया हुआ है, नीचे रखा हुआ है। अमित का तो पूरी टीम, ये वाला मूवमेंट, अमित इतना स्पेशल है कि मैंने उसके लिए अलग से मूवमेंट तो बनाया हुआ था जो वीआईपी वाला है, क्योंकि ये आते ही नहीं है, सिर्फ काम करके चुपचाप चला जाता है। मैंने कहा इस बार इसका हमें सम्मान अलग से करना है।
दिल्ली सरकार में टीचर है। दिल्ली सरकार में सरकार की नौकरी से पहले एक अपना इंस्टीट्यूट चलाता था सुल्तानपुरी जैसी जगह में, जहाँ दिल्ली का स्लम एरिया टाइप का है, और वहां पर इतना पॉपुलर है। जब मैं वहां गया अपनी इसके घर पहली बार, तो मैंने देखा इतने सारे बच्चे 10th 12th वहां पे हर घर के बच्चों को इसने पढ़ाया हुआ है। बाद में दिल्ली गवर्नमेंट में आया और आज इतना पॉपुलर है उस एरिया में, कम से कम इसके बनाए हुए कम से कम हजारों बच्चे सरकारी नौकरियों में लग चुके हैं। एसएससी की कोचिंग, ये सारी कोचिंग है दे दे के, मतलब रियल इंस्पायरेशन है हम लोगों के लिए जो रियल काम करते हैं। और जैसे इस कॉन्फ्रेंस के लिए भी बात हुई तो बोला सर बस आप 2 दिन में आ जाऊंगा। तो एक टीम पूरी डेडिकेटेडली रजिस्ट्रेशन संभाल रही है, सर्टिफिकेट संभाल रही है, मैं टेंशन फ्री। ऐसे एक नाम है भरत भूषण जी, भरत का स्वागत करें। भरत भी उस तरह से काम करता है कि ये भी दिल्ली सरकार में टीचर हैं, और भरत ने पेफी को आगे बढ़ाने में बड़ा अपना योगदान दिया। स्नेहा पाठक, और एक बात और बताना चाहूंगा, ये सारे फोटो ना QR कोड पे आपको सब मिल जाएंगे। ये हम लोगों ने एक अच्छा व्यवस्था की है कि आप लोग QR कोड है, उसका एक पासवर्ड है, उसको डाल के रजिस्टर करिए और वो सारे फोटो आपके फेस आईडी से रिकॉग्नाइज होकर आपको डाउनलोड हो जाएंगे। तो आपको अपने फोटो लें, उनको टैग करें, इनको सारी चीजें कर सकते। स्नेहा पाठक आओ जल्दी। जाओ। राजकुमार कर्वे सर कर्नाटक से, अशोक धीमान सर हिमाचल प्रदेश से। मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को, हरीश तिवारी सर आप नागालैंड में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मैं फक्र से कहता हूं कि पेफी का, मैंने एक सेक्रेटरीज की मीटिंग ली थी अपने पेफी स्टेट के, और सबसे कहा था आपके यहाँ से 5-5 रजिस्ट्रेशन चाहिए मुझे। रजिस्ट्रेशन तो डेलीगेशन आए स्टेट वाइज, तो ऑलमोस्ट मैंने देखा जम्मू कश्मीर से भी लोग आए, हरीश सर नागालैंड से आ गए, मणिपुर से आ गया, मतलब ऑलमोस्ट हर स्टेट से हमारे बीच में लोग आए। इवन हमारे यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में 3 इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी आए। हमारे बीच में जीत कुनेदो एसोसिएशन से अरुण शर्मा लकी जी आए, वो भी आए मंच पे, उनका भी हम स्वागत करते हैं। अरुण जी आप मंच पे आइए। इस पूरी कॉन्फ्रेंस की पब्लिकेशन का पार्टनर रहे हमारे खेल साहित्य केंद्र के विवेक थानी सर, मैं उनको भी मंच पे इनवाइट करता हूं। अरुण शर्मा जी का स्वागत करें। अरुण और मैं परवीन सर हूं तो मैं उनको कहूंगा कि वो बाहर जाएं, अभी रवि दहिया जी बस आने ही वाले होंगे 2-4-5 मिनट में। और आप सब लोग जब वो रवि यहाँ आए तो एक बार खड़े होकर उसका स्वागत करना, कि हम लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है कि ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट हमारे बीच में आ रहे हैं, तो एक बड़ा गौरव का विषय है। अब कुछ वो नाम, जो नाम दिनेश गौड़ जी, हरदेव सिंह जी आइए मंच पर। विवेक थानी जी आ गए, विवेक थानी जी का पहले करा। आइए विवेक थानी जी पब्लिकेशन पार्टनर हैं, कि जितनी बुक रिलीज हुई है सब इन्हीं के पब्लिकेशन हाउस से रिलीज हुई हैं, और देश में खेलों का एक बड़ा पब्लिकेशन हाउस चलाते हैं।
खेल शायद के इनके नाम से आप लोग भी उनको वो कर सकते हैं। पुनीत तुम्हारा ही हुआ स्वागत। हाँ, हरदेव सिंह जी। सर वो तो आप बजाएंगे। संजय गौतम सर, हमने कल आपको बुलाया था लेकिन फिर से हम बुला रहे हैं क्योंकि हमें बताया गया कल आप अपना ट्रॉफी यहीं छोड़ के गए थे, तो बोले कि सर अब वो ट्रॉफी रखी है संजय गौतम सर की। आइए सर, हमारे लिए गौरव की बात है। इसके बाद डॉक्टर शरद शर्मा जी। देखो ये सब कुछ लोग हैं, जैसे जो लोग बाद में बुला रहे हैं ये समझना इन लोगों ने काम कम किया है। जो पहले 5-6 बुलाए थे ना शुरुआत के, उन लोगों ने काम पूरा किया, जैसे हरदेव सिंह, शरद जी, ये लोग मेरी कैटेगरी के लोग हैं, इसलिए मैं सबसे बाद में आऊंगा। सर हमें स्वागत नहीं कर रहा होगा सर हमारा। आइए सर। सौरभ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री हमारे बीच में भी हैं। आइए सौरभ जी। ये सब वो संगठन है जिन्होंने पैफी के लिए बहुत मदद की है, करते हैं। सौरभ का स्वागत करें। अब बैक स्टेज पे हमारे बीच में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस से ना 2 लोग, एक मैत्री कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैडम नेहा बघेल और त्रिभुवन सर। ये दोनों लोगों को पता ही लगा, ये लोग पीछे से सब कुछ संभालते रहे। मैं चाहूंगा अब आप लोग भी फ्रंट में आए। त्रिभुवन सर और नेहा बघेल मैडम, इनकी एक पूरी टीम थी। देखो तालियां सबसे ज्यादा बज रही हैं। मैं अभी रिसेंटली LNIP में कॉन्फ्रेंस में गया तो वहां पर इनॉग्रेशन चल रहा था और एक कोई स्वागत करने के लिए आया और एकदम से तालियों की गड़गड़ाहट हो गई, तो सब कंफ्यूज हो गए कि तालियां बजी किसके लिए, जिसका स्वागत हो रहा है, जो स्वागत करने आया है। बाद में पता लगा वो मेरा क्लासमेट सचिन के लिए तालियां बजी थी, सचिन गुप्ता के लिए। तो एवरीबडी वाज सरप्राइज कि ही इज सो पॉपुलर बिकॉज जो लोग काम करते हैं, ऐसे त्रिभुवन सर और नेहा बघेल मैडम मिलके पैफी के लिए इतना काम करते हैं जिसका हम सोच नहीं सकते। हमारा जो CSR प्रोग्राम चल रहा है, एथलीट एस्पायर प्रोग्राम, उसको भी यही लोग लीड करते हैं एथलेटिक्स में। और अभी हमने रिसेंटली एक एथलेटिक मीट की थी स्टेट लेवल की, आप लोगों ने शायद देखा होगा। उसमें माननीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी आए थे, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स आए थे, सभी लोग आए थे। तो उन सभी लोगों, उस मीट का भी पूरी जिम्मेदारी त्रिभुवन सर ने निभाई थी। तो त्रिभुवन सर थैंक यू आपका, आप ऐसे ही पैफी का सपोर्ट करते रहे। लास्टली मैं पुनीत के लिए इन्वाइट करूंगा कि पुनीत आए। हाँ सर ये पुनीत बताएगा, यही खरीदने गया था। ये आपके पास भेज रहा हूं मैं। क्या है, पैफी में एक सेट पैटर्न है। पटके की एक दुकान है हापुड़ में, परवीन सर के दोस्त की दुकान है, तो वो सस्ते देता है। ये बेसिकली पुनीत जो है ना, पुनीत है ठेकेदार सिंचाई विभाग में, और ये पढ़ा इसने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की डिग्री है। मेरे पास इंटर्नशिप करने आया था, बाद में अपने फैमिली बिजनेस में चला गया। तो ये अमरोहा रोज जाता है, इसकी साइट चलती है। तो हमने कहा यार पुनीत तुम जा रहे हो तो वहां से वो पटके खरीद लाना, अपने 100-200 पटके जो चाहिए। मतलब हम लोग सब मित्रता भी देखते हैं कि कहाँ से सस्ता माल मिल रहा है। तो हर साल पटके लेने ये जाता है, तो ये आपके पास भेज रहा हूँ, आप जरा पता लगा लेना।
इसका मतलब समझे पुनीत, सर कह रहे हैं मुझे हर कलर का चाहिए क्योंकि सर पे जमेगा, सर को गोल्डन मैच कर रहा है। सबरी गणेश, तमिलनाडु से तुम्हारा स्वागत। आइए, हमारे नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं पेफी के और तमिलनाडु के पूर्व में सेक्रेटरी भी रहे हैं। आकाश गोहिल, गुजरात सेक्रेटरी पेफी। दोस्तों अभी हमारे बीच में थोड़ी देर में रवि दहिया जी एज ए चीफ गेस्ट आ रहे हैं और हमारे बीच में मंजीत कौशिक जी एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे। अलका गुरनानी मैम रहेंगी उनके साथ डाइट पे। तो अभी हमारा 15 मिनट का कार्यक्रम रहेगा जिसमें हम बेसिकली रवि दहिया जी को सुनना चाहते हैं, मंजीत जी के विचार सुनना चाहते हैं। तो थोड़ी देर में अब एक नाम और आ गया है, तब तक राजन कुमार पांडे जी। आप सब लोग भलीभांति परिचित हैं। ये जितना लजीज खाना आप लोगों ने खाया है इसके पीछे 2 आदमियों की मेहनत है, राजन कुमार पांडे और परविंद कुमार की। इन्होंने मुझे पता भी नहीं लगने दिया कब खाना में क्या मेन्यू सेलेक्ट किया। मैं सुबह गया उसके पास कैटरर के पास, मैंने कहा यार तू तो कल भी सुबह ब्रेड पकौड़े दिए, नाश्ते में अभी भी दे रहे हैं। बोले सर पता नहीं आप ही के यहाँ से मेन्यू अप्रूव होके आया था। तो मेन्यू अप्रूव इन्होंने किया था। हम लोगों में एक अच्छी बात यह है, हम लोग बहुत अच्छे से इसलिए काम करते हैं कि जो जिम्मेदारी कर रहा है उसकी अपनी खुद की जिम्मेदारी है। कैटरिंग में यदि कॉन्फ्रेंस के अंदर खाने का कुछ काम कर रहे हैं तो परविंद सर और राजन पांडे इन 2 की जिम्मेदारी है। दे विल डिसाइड व्हाट विल बी द मेन्यू, व्हाट विल बी द, वो हमसे पूछेंगे भी नहीं आके। लेकिन मुझे सब लोगों ने खाने की तारीफ की, कुछ लोगों ने कहा रात को मुझे खाना बहुत अच्छा बना। थैंक यू राजन पांडे सर। 2 दिन आप बिल्कुल सर हो गई। मैं डॉक्टर पीयूष। जोरदार तरीके से ताली तो बजाइए जी कृपया। जो फोन में लगे हुए हैं उनको आग्रह है, जो पीयूष जैन जी को, ये पीयूष जैन जी जो अभी सबको पुरस्कार देते हुए सबका गुणगान कर रहे थे, पीयूष जी ऐसे व्यक्ति हैं जो सारा फूल बिखरा हुआ था उसको एक माली के रूप में माला बनाया है पेफी के रूप में। इसलिए पीयूष जैन जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। हमारे बीच में बाप्टिस्ट ट्रस्ट एसोसिएशन से सुमित नाथ जी आए हुए हैं। डॉक्टर सुमित नाथ जी, मैं बुला रहा हूं उनको मंच पे, वो आए। डॉक्टर सुमित नाथ जी। ये जो सुदेवा फुटबॉल एकेडमी का नाम किन किन लोगों ने सुना है? सबने सुना है। सुदेवा इज नंबर 1 कमेटी जो इन्हीं के स्कूल में है, जिसने इंडिया को पूरे वो दिए हुए हैं। सर थैंक यू आपका आने का, आपने हमारे निमंत्रण पर यहाँ आए। और इन्होंने प्रॉमिस किया कि पेफी का एक स्पोर्ट्स साइंस सेंटर इनके यहाँ डेवलप होने वाला है जल्दी। थैंक यू सुमित सर। तो ये था। अभी मैं पुष्कर बोरा सर का कहना है कि वो कुछ कहना चाहते हैं 1 मिनट के लिए। आइए पुष्कर सर। हाँ, एक नाम और मैं मिस कर गया, मणिपुर से सुमिजीत जी आए हैं। मैं अनुरोध करूंगा सर आइए सुमिजीत जी। नेशनल सेक्रेटरी रहे हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के सुमित जी, और इंचार्ज रहे हैं मणिपुर से हमारे बीच में आए हैं। मैं मणिपुर की टीम से कहूंगा, लेसाम थंबल की टीम से, कि उनसे कनेक्ट करें जिससे मणिपुर में पेफी का बहुत सारी चीजें हो सकें। आप लोग बिलीव करना कि अभी तमिलनाडु में रिसेंटली पेफी अवार्ड फंक्शन हुआ तो उसमें कमल हसन आया था। क्या होता है, जो स्टेट की टीम होती है वो उस चीज को प्रोपोगेट करती है। तो जो स्टेट के लोग यहाँ बैठे हुए हैं हमारे हर स्टेट से, आप लोगों को बढ़ाने की जिम्मेदारी पेफी को आपकी। जैसे बंगाल बहुत अच्छा काम करता है हमारा,
तमिलनाडु बहुत अच्छी तरह से पेफी को प्रमोट कर रहा है। बहुत बड़ा एक फंक्शन हुआ, अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट और पेफी मिलकर 15,000 बच्चों का स्टेट एथलेटिक मीट प्लान किया हुआ है। तो ये पेफी की सफलता है जो मेरी नहीं है, आप लोगों की वजह से ही संभव है। अदरवाइज तो मैं कहूंगा हमारे बीच में घनश्याम धोकराट सर है, मैं कहूंगा सर एक बार खड़े हो जाएं। अभी पेफी के महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। बड़ाला का जो बड़ा कॉलेज है BCPA कॉलेज बड़ाला का, उसके प्रिंसिपल हैं, एक बड़ा नाम है। तो अभी प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए रिसेंटली उपल सर की चेयरमैनशिप में। तो पेफी बेसिकली क्या है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है। अब जो लोग अपने लेवल पर आगे काम करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा। अच्छा सर, मैं पेफी के प्रेसिडेंट हमारे गुरुजी डॉक्टर AK उपल सर का और पीयूष जैन सर का नागालैंड की तरफ से एक छोटा सा भेंट देना चाहता हूं। सर, आप दोनों लोग सहयोग करें। ये ठीक है। सर बैठिए सर। गुड इवनिंग एवरीवन। एक छोटा सा एनेक्डोट है। आई थिंक जितने भी यहाँ पे स्पीकर्स थे, बैठे थे, जो मॉडरेटर्स थे, दे हैव डन ए वंडरफुल जॉब। पर कहीं मैंने देखा कि उनके बीच का लिंक कहीं पे टूटा हुआ था। उसी के पीछे एक स्टोरी है छोटी सी। एक बच्चे ने काओ पे ऐसे याद किया कि उसको गेस था कि एनुअल एग्जाम में काओ पे ऐसे आएगा। आ गया ऐसे बाढ़ के ऊपर, फ्लड के ऊपर। अब बच्चे को तो काओ पे याद था, तो उसने लिखना शुरू किया कि मेरा गांव ऐसा है, मेरा गांव ऐसा है, हरियाली है, ये है, पैदावार अच्छी है, और मेरे गांव में एक बार नदी जो बहती है उसमें बाढ़ आ गई, बाढ़ में घर बह गए, खेत बह गए, जानवर बह गए, गाय बह गई। और जब गाय का शब्द आया उसके बाद उसने जो गाय पे ऐसे याद किया था वो उसने लिखना शुरू कर दिया। यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैंने एक ब्रेक देखा, जो मॉडरेटर ने क्वेश्चन पूछा और जो जवाब नहीं दिया गया। मेरे ख्याल से वी ऑल हैव टू वर्क ऑन दैट वेरी हार्ड, सो दैट हमारा जो पर्पस है यहाँ मिलने का वो बीट ना हो, और हम जो चाहते हैं आउटकम आए वो आउटकम हम लोगों को मिले, जिससे कि हम अपना रिकमेंडेशन मिनिस्ट्री को दे सकें, और पीपल हु आर हियर they can have some takeaway with them out of what speakers they deliver or what moderator wants to extract from them. That's what is from my side. Thank you everyone. जब तक रवि आ रहे हैं हमारे बीच में, दिवाकर कश्यप फ्रॉम मुजफ्फरनगर आ जाओ। नागालैंड के साथ साथ हमारे पास इनविटेशन आया भी गोवा से एक कॉन्फ्रेंस का, तो प्रभाकर रेड्डी सर आए हुए हैं यहाँ पे ट्राइबल यूनिवर्सिटी से। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो आके अपने सब लोग को इनवाइट करें, जिससे हो सकता है इनमें से हम कई सारे लोग। दिवाकर के स्वागत करो। दिनेश गौड़ जी भी हमारे बीच में आ गए हैं। जल्दी 2 मिनट के अंदर हमारे बीच में रवि दहिया जी आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूं जब वो एंटर करें तो आप सब लोग जोरदार तालियां बजाकर खड़े होकर उनका स्वागत करें। ये गौरव की बात रहेगी पेफी के कार्यक्रम में। हमें ऐसा हर बार होता है कि हमारे बीच में एक ओलंपिक का इंटरनेशनल एथलीट आता है। सुशील पहलवान भी आए हैं, योगेश्वर दत्त भी पेफी कार्यक्रम में आए हैं, बजरंग पूनिया जी आए हैं, सभी लोग ऑलमोस्ट लगातार, लिम्बा राम आए हुए हैं, दिलीप तिर्की जी पेफी की कॉन्फ्रेंसों में आ गए हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि जब वो आए, रवि दहिया जी हमारी टीम उनको लेकर आए, तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और मैं अनुरोध करूंगा हमारी टीम मेंबर से कुछ लोग बाहर जाके खड़े हो जाएं बुके के साथ।
दोस्तों बस थोड़ी देर में हम लोग शुरू कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है एक बार पीछे जो बच्चे सारे बैठे हुए डेलीगेट वो फ्रंट सीट पे आ जाएं इस जगह पर, जिससे आप लोगों का फोटो अच्छा आ जाएगा। सारे बच्चे पीछे से यहाँ पर सेटल हो जाएं, आगे की सीट से खाली पड़ी हैं जो। और रमनदीप कौर मैडम आ गई हैं, उनका भी स्वागत कर दें। सभी बच्चे पीछे जितने भी लोग बैठे हुए हैं हमारे डेलीगेट वो आगे आके बैठ जाएं, जिससे आगे थोड़ा सा हमारा जो अभी क्लोजिंग सेरेमनी का सेशन है उससे नहीं बैठ। मेरा अनुरोध है सभी डेलीगेट्स जो पीछे बैठे हुए हैं वो जल्दी से आगे आ जाएं। पीछे कोई, यहाँ एक अच्छी बात पता क्या है, बंद से सब कुछ दिखता है, इसलिए आप लोग जो पीछे बैठे आ जाएं। केवल 15 से 20 मिनट का कार्यक्रम अपना बाकी है, उसके बाद हम लोग इसको कॉन्फ्रेंस को आज विड्रॉ करेंगे। सभी जो बाहर भी लोग घूम रहे हैं, दिनेश सर सभी लोगों को अंदर बुला लो और सब लोगों को आगे की फ्रंट सीट्स पे बिठा दो, ए वाली पे। क्योंकि ये गौरव का क्षण है कि जब हम क्लोजिंग सेरेमनी में, मित्रों मैं आपको एक और बात बताता हूं, इस कॉन्फ्रेंस के सफल योगदान के लिए ना हमारे बहुत सारे स्पॉन्सर्स ने बड़ी मदद की। इनमें से एक एम्बे नाम है जिसको हम लोग हमेशा पेफी से कोरिलेट करते हैं। एम्बे हमको साल में कई बार मदद करता है, एनुअली मदद करता है। वो कहता है पेफी को आगे बढ़ाने में एम्बे का एक बड़ा योगदान है। ऐसे क्राफ्टन इंडिया है, ऐसे आयोटा वाटर है, ये सब लोग हैं, डाबर है जिसका हम लोगों ने यहाँ जूस वगैरह भी पी रहे थे। इन सब लोगों ने पेफी को बड़ा मदद किया। इसके साथ साथ हमारे कुछ नॉलेज पार्टनर रहे जिनमें तपन दास सर को बुला रहा हूं मैं मंच पे, तपन दास सर भी आ जाएं एक बार। दोस्तों हमारे बीच में रवि दैया जी आ गए। तपन सर एक मिनट रुक जाना, मैं चाहूंगा एक बार सभी लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, खड़े होकर स्वागत करें। गौरव का क्षण है कि जब रवि हमारे बीच में इस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं। मैं सही बताऊं मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं उसको देखते हुए रवि को, कि कैसे रवि हम सब शारीरिक शिक्षकों और के बीच में आ रहे हैं। रवि को सीधा ऊपर लेके आ जाएं सर। अब मैं अपने भाई मंजीत कौशिक को बुला रहा हूं जो आज के इस कार्यक्रम के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। प्रदीप शेखावत जी मंच पे आए, हम लोग क्लोजिंग सेरेमनी बिगिन कर रहे हैं। अभी मंजीत कौशिक जी। हाँ मित्रों एक चेयर और यहाँ पे, अलका मैम आप आए बैठ पे। दोस्तों अब हम आज के चेयर मैम हम आ रहे हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस के फॉर्मल क्लोजिंग सेरेमनी के लिए हमारे बीच में ओलंपिक मेडलिस्ट, मैं परिचय दूंगा तो बहुत लंबा परिचय है, सिर्फ एक इस देश में एक बड़ा परिचय यही है कि वो सिल्वर मेडलिस्ट है हमारे ओलंपिक मूवमेंट के। इस देश में गिने चुने जो पदक आए हैं खेलों में, उनमें से एक उसका है। रवि भाई मैं कहूंगा एक बार आप खड़े हो जाएं और ये सभी लोग खड़े होकर उसका स्वागत करें। ये वो गौरवपूर्ण पल है जिसमें हमारे बीच में रवि दहिया जी आए हैं और मैं खुद बिलीव ही नहीं कर रहा हूं कि रवि जी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं मंजीत कौशिक जी। मंजीत जी का परिचय है कि हॉकी के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। वर्तमान में आप माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री जी के सहयोगी हैं और पेफी के लिए जो एक दिल से सपोर्ट करते हैं उनमें से एक बड़ा नाम है। तो मैं चाहता हूं कि मैं इस श्रृंखला को आगे बढ़ाऊं और सबसे पहले स्वागत के लिए मैं बुला रहा था हमारे पेफी में से परविंद कुमार को, योगेश को, दोनों लोग आए और रवि दैया जी का स्वागत करें।
परवीन सर और योगेश सर। बंसल सर, आप कभी दिया। मित्रों, पैफी के द्वारा एक CSR इनिशिएटिव चलाया जाता है इंडसइंड बैंक के साथ। हम 55 एथलीट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें 3 वर्ल्ड चैंपियन हुए हैं, और उम्मीद ये है कि हम ये सुजीत मान सर के नेतृत्व में भविष्य में से उसमें से और रवि दहिया निकालेंगे। 3 वर्ल्ड चैंपियन हुए हैं। पिछली बार की कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में चिराग चिकारा आया था, जो रिसेंटली वर्ल्ड चैंपियन हुआ था। इस साल 2 वर्ल्ड चैंपियन और हुए हैं, रचना परमार और तपस्या। 6 लोगों ने एशियन गेम्स में मेडल लिए। एशियन चैंपियनशिप में 18 से 20 बच्चे नेशनल मेडलिस्ट हुए, और स्टेट मेडलिस्ट तो सारे बच्चे हैं। तो ये रवि जैसे हम सुजीत मान सर के नेतृत्व में और रवि बना सकें, यही मेरी कामना है। मैं स्वागत के लिए बुला रहा था, मंजीत कौशिक सर के स्वागत के लिए अपनी टीम में से बुला रहा था। दीक्षांत सोलंकी और पंकज आए और मंजीत सर का स्वागत करें। ये आज के हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं। दिल से बात हूं तो कभी कहीं जाते ही नहीं है, किसी कार्यक्रम में नहीं बैठते। आज तो बस पकड़ लिया इनको हमने कि आ गए। अदरवाइज सुबह 9 बजे से 8 बजे से माननीय मंत्री जी के साथ पूरा रहना। और मैं आपको बताऊं, एक यही शख्स है, 2 शख्स की बात करता हूं मैं। एक संदीप ठाकुर, जब संदीप जी अनुराग जी के साथ थे तब उन्होंने पैफी को आगे करने के लिए बड़ा योगदान दिया। और एक मंजीत कौशिक जी, जो इस वक्त शिक्षा मंत्रालय के साथ पैफी का पूरा कोऑर्डिनेशन कराते हैं। हम लोग जितना काम फिजिकल एजुकेशन में कर रहे हैं वो सिर्फ मंजीत जी की वजह से है। एक नाम है हमारे बीच में अलका गुरनानी मैडम का। अलका मैम के बारे में सिर्फ इतना बोलूंगा कि जब हम लोगों ने डोपिंग की बात की और न्यूट्रिशन की बात की, तो देश में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट करके हम लोगों ने 5 प्रोडक्ट सर्टिफाइड कराए जो डोप फ्री हैं, एमबे के, और NFSU से, नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से। तो एक बड़ा घटनाक्रम है देश के न्यूट्रिशन के क्षेत्र में कि अब वो प्रोडक्ट जो डोपिंग फ्री हैं, सुजीत मान सर द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, बंसल सर हैं, रवि हैं, इनको पता होगा कि कितना मुश्किल होता है। प्रदीप शेखावत सर ने 2 दिन में बहुत सारी चीजें देखी होंगी, तो प्रदीप शेखावत सर के भी स्वागत के लिए बुला रहा हूं। दोस्तों, 11 साल मोदी सरकार के बाद देश खेलों में एक बदलाव लेके आ रहा है। शिक्षा के साथ हम जुड़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आदरणीय मंजीत जी कुछ शब्दों में, क्योंकि आप खुद खिलाड़ी रहे हैं, यूनिवर्सिटी प्लेयर रहे हैं। थोड़े दिनों पहले हॉकी खेलते हुए चोट आई है, लेकिन खेल का पैशन कभी खत्म नहीं होता। मैं चाहूंगा आप थोड़े से अपने शब्द कहें। सबसे पहले मैं पीयूष जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। आज इस मंच पे फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट मेरे दिल के बहुत करीब रहा है, और हमेशा इन दोनों चीज़ों को लेके एक अफसोस होता था, इसको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। पीयूष जी ने उस सब का, जैसे संदीप जी ने अभी कहा कि फूल बिखरे पड़े थे, उन सबको मिला के एक माला बना दिया। तो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स को इतना बड़ा एक ग्राउंड दिया, उसका इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन हुआ, और उपल सर, बंसल सर, सुजीत मान जी, ऐसे लोगों को जोड़ के आपने साथ में वाले जो हमारे सेलिब्रिटी स्पोर्ट्स पर्सन थे उसको ग्राउंड पे उतारा। इन सब चीजों के लिए आई रियली अप्रिशिएट पीयूष जैन जी एंड टीम पैफी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मंजीत सर। और अब मैं सुजीत मान सर से सुनना चाहता हूं, इससे पहले कि हम रवि दहिया जी से उनका विचार सुने। मैं सुजीत मान सर से कहूंगा कि सर, हम लोग जिस नर्सरी को लगा रहे हैं, जिसमें हमने 55 एथलीट्स को आपके साथ जोड़ा है, उसमें से आगे चल के रवि दहिया जैसे हमारे एथलीट्स निकलने वाले हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बस। सभी को नमस्कार। जैसा कि पीयूष सर ने बताया है
कि पीयूष सर के सहयोग से, पेफी के सहयोग से 55 बच्चों को हमने स्पॉन्सर किया है पिछले 3 साल से। उसमें से वर्ल्ड चैंपियन भी बने हैं अंडर 23 में, और सिल्वर मेडलिस्ट भी बने हैं, एशिया के 6 गोल्ड मेडलिस्ट भी बने हैं, और तकरीबन जो बच्चे हैं उसमें से सभी इंटरनेशनल हैं। और जब ये स्कीम शुरू करी, पीयूष सर ने मुझे बताया, तो पहले मुझे यकीन नहीं था कि ग्रास रूट पे कोई ऐसी बच्चों को स्पॉन्सर कर भी सकता है जो 12-13 साल के बच्चे हैं। और जब मैंने उनको सर्च करना शुरू किया, 300 एप्लीकेशन मैंने इकट्ठी करी थी। जिसके कोच के पास किसी अखाड़े में, किसी सेंटर में हम जा रहे थे, वो कोई यकीन नहीं कर रहा था उसके ऊपर कि ऐसा हो सकता है इस देश के इतिहास में कि ग्रास रूट के बच्चों को कोई ऑर्गेनाइजेशन उनको स्पॉन्सर करे। पर लेकिन उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। जैसा कि सर हमें टाइम टू टाइम इनका सहयोग मिलता रहता है, उसी के अनुसार अगर ये हमारी एक बहुत बड़ी कड़ी है उसकी, और उम्मीद करते हैं कि जो ये बच्चे हमने किए हैं इनमें से 2028-2032 के ओलंपिक में इस स्कीम से जरूर कोई ना कोई बच्चा मेडल जीतेगा। अब रवि दहिया की बात करें, 2015 में रवि जूनियर के कैंप में हमारे पास आया था। मैं उस टाइम सीनियर के कैंप में था कोच, तो मैंने इसको देखा था कि भाई ये अपने वेट में जो सीनियर के बच्चे थे उनसे काफ़ी हल्का था, कमज़ोर था, पर लेकिन इसके अंदर जो जज्बा था, जो कंटिन्यू एक मेहनत करने का जोश था, कि गिर गया, अगर पॉइंट लूज कर दिया पर लेकिन गिव अप नहीं किया, दोबारा से खड़े हो गए, फिर उसी ताकत के साथ, फिर उसी जोश के साथ इसने शुरू किया। पहली जो हमारी फर्स्ट लीग हुई थी उसके अंदर हमने इसको बाय किया था। सबसे नया बच्चा था उस टाइम पे, 19 साल का, पर लेकिन एक कंपटीशन के दौरान इनकी भी जो फिंगर में डिसलोकेट हो गई थी, वो नहीं खेल पाए। उसके बाद इन्होंने अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। फिर मैंने इसको रेलवे में ज्वाइन किया अपने डिपार्टमेंट में। उसके बाद से इन्होंने 3 बार कंटिन्यू एशियन चैंपियनशिप का गोल्ड जीता। अकेला हिंदुस्तान का पहलवान है जिसने 3 साल तक 57 केजी में सीनियर एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता, वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्राउन जीता 2019 में, और टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता। तो हम उम्मीद करते हैं और लगे हुए हैं कि आगे और रवि दहिया निकलेंगे, और मैं पीयूष सर से कहूँगा ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। पेफी का बहुत बड़ा सपोर्ट है। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, कल बंसल सर रात को अवार्ड सेरेमनी में पेफी की गतिविधियों के बारे में बता रहे थे। लोग बाग पेफी को सिर्फ एसोसिएशन जानते हैं, लेकिन पेफी देश के खेल जगत में एक बड़ा बदलाव लेके आने वाली है। पेफी की स्थापना 2008 में हुई। 2016 से हमने फुल टाइम काम करना शुरू किया। 2019 में भारत सरकार ने हमको राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन संस्था का दर्जा दिया, और संस्था का दर्जा मिलने के मात्र 5 साल के अंदर पेफी को देश का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिला। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि एक बार वो वीडियो हम 1 मिनट तक चला सकते हैं, तो एक बार हम लोग उस वीडियो को फिर से देख के एनर्जेटिक हो सकते हैं कि कैसे। और एक चीज है, चीज क्या है, ये बता सकती है कि फिजिकल एजुकेशन वाले भी किसी से कम नहीं है। फिजिकल एजुकेशन टीचर एक होता है ना, वो आके सबसे पहले 15,000 की नौकरी मांगता है। मैं उससे कहता हूँ राहें और भी हैं नौकरी के अलावा। यदि आप वो राहें ढूंढने की कोशिश करोगे ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। सिर्फ सरकारी नौकरी करना और फिजिकल एजुकेशन टीचर की नौकरी करना, बाद में मुझसे आके शिकायतें करना, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो जरूरत है सिर्फ डेडिकेशन की, एक टीम बनाने की। आपको लोग जोड़ने पड़ेंगे। हमारी सबसे बड़ी समस्या नौकरी नहीं है, हम सिर्फ अपने को ही तोप मानते हैं। मेरा मानना है कि हम लोग लोगों को जोड़ें तो शारीरिक शिक्षक भी बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। इस देश के अगले 11 साल 2036 तक देश खेलों के मिशन मोड में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसमें, और माननीय खेल मंत्री के द्वारा बहुत जबरदस्त है। इस वक्त खेल मंत्रालय से आप कुछ भी मांग लो,
लेकिन काम जेन्युइन होना चाहिए, रिसर्च जेन्युइन होनी चाहिए। आप कहो कि सर मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ ओलंपियन ग्रास रूट पे, दे आर रेडी, बट हम सबकी प्रॉब्लम है हम कट कॉपी पेस्ट करते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि एक बार हम लोग फिर से अपने आप को रिजुवेट करें, पैफी को देखें कि कैसे कुछ लोगों की वजह से देश में एक बड़ा बदलाव आया। ये मेरा प्रयास नहीं है, बहुत सारा है, परवीन सर हैं, पांडे जी हैं, तोमर सर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग मोड में काम करते हैं। कुछ लोग अपेक्षाएं रखते हैं कि पैफी हम बिना करे कुछ करेंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ बिना करे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो एक बार हम वो वीडियो यदि पॉसिबल है तो चलेगा, उसके बाद हम रवि दहिया जी को सुनेंगे। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2024, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने भारत में खेल और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2024, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। थैंक यू। अब उस पल का हमको जिसका बेसब्री से इंतजार था, उससे पहले मैं अपने अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि हम 2 फेलिसिटेशन करना चाहते हैं। वैसे तो हम सभी कर चुके थे। तपन सर को मैं बुलाना चाहता हूं मंच पे, तपन सर आए। और हमारे बीच में एक और विशिष्ट अतिथि हैं जगवीर सिंह जी, ब्रह्मा कुमारी से आए हैं। ब्रह्मा कुमारी का स्पोर्ट्स विंग है। देखो दोस्तों, कई सारी चीजें हैं जो हम लोग यहाँ दिखाना चाहते हैं। ब्रह्मा कुमारी मेंटल स्ट्रेंथ पर स्पोर्ट्स को लेकर बहुत काम कर रही है, वो हमारे बीच में है। तपन सर हमारे बीच में है। तपन सर गल्फ कंट्रीज में फिजिकल एजुकेशन के पूरे हेड रहे हैं सीबीएसई के, और आजकल पैफी में काम कर रहे हैं। तो मैं तपन सर के स्वागत के लिए अनुरोध करूंगा रवि दहिया जी से और अपने अतिथियों से कि उनको सम्मानित करें। इसके बाद जगवीर भाई आ जाएं। अभी पैफी ने एक ना साइकिल रैली निकाली थी 800 किलोमीटर की। पैफी अलग अलग तरह के सामाजिक काम भी करता है। मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी से प्रयागराज से हमने 800 किलोमीटर साइकिल चलाई। उसके सूत्रधार ये थे। दिल्ली उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री ने उसको ध्यानचंद की स्टैच्यू से झंडी दिखाई थी प्रयागराज से। वो ग्वालियर होते हुए, झांसी होते हुए, उनके बर्थ प्लेस से होते हुए दिल्ली में आई, और यहाँ पर नेशनल स्टेडियम में माननीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी ने उस रैली का वो किया। तो जगवीर भाई की वजह से वो रैली चली। 7 दिन तक लगातार 800 किलोमीटर साइकिल चलाई गई। तो ऐसे लोगों को हम लोग कहीं ना कहीं सम्मानित करते हैं। थैंक यू जगवीर भाई, थैंक यू रवि भाई। चालू आई भाई। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2024, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने भारत में खेल और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 80,000 से अधिक सक्रिय सदस्यों, 24 राज्यों में शाखाएं,
और 100 से अधिक संस्थागत साझेदारियों के साथ फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने डोपिंग रोधी जागरूकता, तकनीकी सहायता जैसे अनेक प्रयास किए हैं। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को भारत में खेल को बढ़ावा देने में उनके योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री पीयूष जैन। दोस्तों, ये पुरस्कार शारीरिक शिक्षा का था। पहली बार देश में शारीरिक शिक्षा को उसका सम्मान मिला और अब मैं चाहता हूं आप सब लोग भी शारीरिक शिक्षा के साथ जुड़ें। आप लोग शारीरिक शिक्षक हैं बट पैफी के साथ जुड़ें। और अब इस कड़ी में मैं रवि को बुलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप मार्गदर्शन करें कैसे करें और हम सब लोग मोटिवेट हो जाएंगे आपको सुनकर। थैंक यू। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और मंच पर जितने भी हमारे अतिथिगण और सब आप टीचर आए हो सभी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। एज ए खिलाड़ी होने के नाते जो एक खिलाड़ी को जब जरूरत होती है ना, जब स्टार्टिंग होती है, चाहे कोई हो चाहे हम थे, देखो हमारे टाइम पे थोड़ी थोड़ी चीजें सुधरनी स्टार्ट हो गई थी। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं थी, मगर थोड़ी सी लेट थी। जब तक सब जूनियर भी खेल चुका था मैं और अंडर मतलब जूनियर लेवल पे आ गए थे जब हमारे को स्पोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया था 2015 में। उससे पहले मैं जूनियर सब जूनियर चैंपियनशिप में मैंने मेडल जीता था, मगर पहले नहीं थी। और जो ये फिजिकल एजुकेशन को मैं बहुत आपकी जो संस्था है बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने मतलब एक ग्रास रूट पे जो काम करने की जरूरत है ना, वो आपने स्टार्ट किया है। तो आप सभी को मैं बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं भी देता हूं। और हमारे कोचा भी बैठे हैं सुरभिमान जी, उनके साथ हमने काफी समय व्यतीत कराया है। इंडिया कैंप में रहते थे। एज ए खिलाड़ी भी बहुत अच्छे हुए हैं और कोच भी बहुत अच्छे हुए हैं, क्योंकि खिलाड़ी में भी अर्जुन अवार्डी हैं और कोच में भी द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। ऐसी चीजें मतलब ऐसे कोच और गुरु मिलना वाकई में एक बहुत मैं अपने आप को मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली मानता हूं। मैं रियलिटी में हूं, क्योंकि मैं जब छोटा सा था 8-9 साल 10 साल का बच्चा, किसी को पता नहीं होता कि आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई वो बच्चा डिसाइड करेगा। बच्चा क्या डिसाइड करेगा? 9-10 साल के बच्चे को क्या पता होता है? उनके पेरेंट्स होते हैं या फिर कोई मेंटर होता है, उनको ही देख के एक बच्चा आगे निकलता है। तो मैं दिल्ली आ गया 10 साल की उम्र में। पिताजी को बहुत शौक था कि बच्चा खेले, और पिताजी ने हमारे गुरुजी एक हंसराज जी उनको बोला कि ऐसे ऐसे बात है कि आप भी ऐसा करो। कुछ दिन गांव में ट्रेनिंग करी और वो दिल्ली लेके आ गए मेरे को 2007 में। कुछ भी नहीं पता था। एक स्टार्टिंग थी कि भाई 1-2 साल तो ये भी नहीं पता था कि बाहर दुकान कहाँ है। बस ये था कि भाई ठीक है सुबह शाम ट्रेनिंग करो, दिन में रेस्ट करना है, और कोई चीज है ही नहीं। एक चीज की कई बार खुशी मिलती, चलो यार स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा, स्कूल से तो पीछा छूटा कम से कम। हाँ मतलब ये भी लगता था चलो ठीक है घर पे। अब हाँ घर पे बस त्योहार पे दिवाली होली और 26 जनवरी 15 अगस्त, क्योंकि 15 अगस्त को और 26 जनवरी को छतरा स्टेडियम में सीएम आते हैं और वहाँ पे मतलब एक अच्छा इवेंट होता है, तो उस टाइम सील कर देते हैं। तो 4 छुट्टी मिलती थी साल में। तो वही से स्टार्टिंग वही कभी पता ही नहीं था कि इस लेवल तक भी जाएंगे। पर हाँ ये था कि अपने सामने अपने बड़े बड़े खिलाड़ियों को बनते देखा कि वे कितनी मेहनत करते थे एक डेडिकेशन के साथ। उनको देख के सीखा कि भाई जब ये काम इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमें भी इतनी करनी पड़ेगी जब भी कुछ है। 2007 में मैं आया था। 2008 में ना सुशील कुमार जी का मेडल आया था ओलंपिक्स में बीजिंग में 2008 में। तो मेरे को इतना पता भी नहीं था और कोई ज्यादा शौक भी नहीं था कि भाई एक अच्छा पहलवानी बनना है, कुछ भी नहीं था। सो रहा था, कुश्ती भी नहीं देखी, सो रहा था। एकदम से ढोल ढाल बजे, मैं एकदम उठा, मैं कहा यार ये क्या हो गया? बोले सुशील जी का मेडल आया है, ऐसे ऐसे मिठाई विठाई बट रही। मैं कहा हाँ यार ये तो एक इज्जत की चीज है भाई, ये हो तो भाई फिर तो मजा आ जाए। हाँ देखो सच्चाई बात है कि झूठ
क्यों बोलना कोई चीज में। जब लगा हाँ यार ये चीज होगी तो भाई जब मजा आया, उसके बाद हाँ ये लगा कि अब मेहनत तो पहले भी करते थे, ये नहीं थी। उसके बाद और ज्यादा बढ़ाई और ज्यादा फोकस बढ़ाया, उनको देखा अपने कि वो किस तरीके से मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितने डिसिप्लिन है। उसके बाद 2012 में योगेश्वर दत्त जी ने मेडल जीता, हम वही साथ में ही थे ओलंपिक्स में, मतलब छत्रसाल स्टेडियम में था मैं। तो फिर और ज्यादा इज्जत हुई और देखा कि लोग बहुत प्यार करते हैं इस चीज में। उस 2012 में थोड़ी समझ भी हो गई थी कि हाँ यार वाकई में मतलब बहुत लोगों का प्यार भी मिलता है। इज्जत तो है ही, पैसा भी है, पर प्यार लोगों का है और वो जरूरी भी होता है। तो वही से स्टार्टिंग थी। फिर 2012-13 में फिर सब जूनियर में खेलने पहली बार मैं सब जूनियर में 2013 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया और मैं सिल्वर मेडल मैंने एशियन चैंपियनशिप में जीता। मगर उस टाइम कोई सपोर्ट नहीं थी, मतलब एक हाँ फैमिली थी, फैमिली कर रही थी। फैमिली में पिताजी खेती करते थे और जमीन तो 1-2 एकड़ थी, मतलब मेरे पिताजी को मतलब 1 एकड़ बांट आती थी। तो पिताजी औरों की जमीन लेते थे 15-20 एकड़ और वहीं पे जमीन खेती करते थे। और बस ये था कि बच्चा बस मेहनत करता रहे, चलता रहे। वही से शुरुआत हुई। हाँ पिताजी ने पर एक चीज थी कि कभी भी ये नहीं बोला कि आपको कुछ और करना, आपको ये था कि बस आप गेम करो, सारी की सारी चीजें हम मैनेज करेंगे। फैमिली का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट होता है और मेरे को बहुत ही ज्यादा मिला है। फिर कोच थे हमारे को, कोच भी ऐसे मिले हमारे, राम फलमान जी थे, ऐसे कोच थे मतलब अपनी फैमिली से भी ज्यादा बच्चों के लिए अपना त्याग और बलिदान देते थे। पूरे दिन एक धूप में बैठे रहते थे कि कोई बच्चा कहीं ट्रेनिंग के बाद ये नहीं कि बाहर निकल जाए, मतलब इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी, इतना अनुशासन इतना डिसिप्लिन उनका था। उसके बाद कुछ साल बाद खेलते रहे, फिर कैंप इंडिया कैंप में आए, सुरजीत मान को साहब मिले, तो इनके बारे में भी सुना देखा। मैं कहा हाँ यार ये इतने अच्छे पहलवान हुए, हमें भी अच्छा बनना है। और ऐसी कड़ी चलती रही और आप सब लोगों के आशीर्वाद से ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल भी जीता, मैं तो ध्यानचंद खेल रत्न भी जीता, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता। तो बहुत अच्छा लगता है और मैं फिजिकल एजुकेशन की जो आपकी संस्था है आपको बहुत सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं भी दूंगा कि जो आप बच्चों के लिए ग्रास रूट पे कर रहे हो वाकई में सबसे ज्यादा जरूरत है। और आपके बहुत सारी शुभकामनाएं, और अगर मेरे लायक कभी कुछ हो तो मैं आपके साथ बिल्कुल, अपने भाइयों के साथ बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के खड़े हूँ। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, एक लाइन में रवि भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कह दी कि जब भी मेरी जरूरत होगी तब मैं यहाँ रहूंगा। तो ये इसी बात से पता लगता है कि जब मैं पहली बार अभी मिलने गया था 3 दिन पहले छत्रसाल स्टेडियम में, रेसलिंग की नेशनल चल रहा था HGFI का, तभी उन्होंने मुझसे वादा किया था कि पीयूष सर मैं 6 तारीख को अवेलेबल नहीं हूँ, 7 तारीख को मैं जरूर आ रहा हूँ। और उन्होंने अपना खिलाड़ी की तरह हमेशा की तरह अपना वादा निभाया। थैंक यू रवि भाई, हम सब लोगों की तरफ से एक बड़ा अनमोल पल है हम सब लोगों के लिए। इसी हॉल में पिछली कॉन्फ्रेंस में योगेश्वर भाई आए थे, जब सुशील भाई मेडल लेके आए थे दूसरी बार सिल्वर, तब भी वो पैफी की कॉन्फ्रेंस में आए थे। और संयोग ऐसा रहा कि वो सभी लोग क्लोजिंग सेरेमनी में ही आए हैं। तो ये हमारे लिए सबके लिए गौरव के क्षण है। और अब मैं हमारे अध्यक्ष महोदय बंसल सर से कहूंगा कि वो क्लोजिंग रिमार्क देकर हम लोगों को वो करें। और मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ आप सबसे। ओलंपिक से पहले आप सबने हो सकता है न्यूज में देखा भी हो, छत्रसाल स्टेडियम में जो रवि जी का जो रूम था उसके अंदर देश का झंडा, तिरंगा झंडा और टोक्यो ओलंपिक के मेडल की, गोल्ड मेडल की फोटो लगी हुई थी। कहने का मतलब ये है कि ये इतने डेडिकेटेड थे, रूम में भी और किसी की वो नहीं, बस तिरंगा झंडा और ओलंपिक की। ये एक सपना था इनका कि ओलंपिक मेडल जीतना है और वो इन्होंने करके दिखाया। थैंक यू। इस बात को मुझे याद आता है कि LNIP में जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें बताया जाता था कि जो अजमेर सर थे हमारे, जिन्होंने एशियन में 400 मीटर में गोल्ड मेडल लिया था, बोले वो पढ़ाई के साथ साथ जब LNIP में थे अजमेर सर, तो वो अपने यहाँ पे वो पूरा लिखे रहते थे अपने रूम में। उनका लक्ष्य था, ये सिर्फ लक्ष्य की बात है कि आप लक्ष्य निर्धारित करो और उस लक्ष्य के लिए अपना सर्वस्व दे दो। जब बता रहे रवि भाई के साल में सिर्फ 4 छुट्टियां मिलनी है,
कितना टफ है। हम एक बात करते हैं, अभी हमारे हरदेव सिंह जी यहाँ बैठे हैं, इनकी बेटी अभी पढ़ के आई यूक्रेन से, तो यहाँ पर उसका मेडिकल का एग्जाम होना था, 6 महीने घर से ही नहीं निकली, ना किसी फंक्शन में गई ना कुछ किया। हम आज उसे यहाँ सम्मानित करना चाहते थे और उससे पहले अटेम्प्ट में वो अपना जो मेडिकल का सबसे टफ एग्जाम इंडिया का होता है उसको क्लियर किया। तो ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य से आती हैं। आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो चीजें आएगी। मैं बंसल सर से अनुरोध करूंगा सर। मेरे रिमार्क्स तो कल से आप लोग सुन रहे हैं, शायद बोर भी हो गए होंगे, तो लेकिन पीयूष ने कहा है क्लोजिंग रिमार्क्स, तो मैं सबसे पहले तो रवि ने जो बात की, मैं अभी कौशिक भाई से भी बात कर रहा था, नहीं कौशिक भाई नहीं बोलूंगा, कौशिक बोलूंगा, क्योंकि हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं, रिस्पेक्ट वही है। लेकिन और दूसरी चीज ये है कि जब मेरा ये एक सिस्टम रहा है, जब हमारे स्टूडेंट जब तक कोई भी रहता था तो खूब डंडे की तरह वो रखना है, उसके बाद जब वो जॉब में आ गया तो हम उसको अपना दोस्त मानते थे। तो इसी तरह से कौशिक भी हमारा अब मित्र हैं। तो मैं अभी इनसे बात कर रहा था, मैंने कहा देखो रवि जो बात कर रहा है, रवि जो अपनी बात बता रहा है, बिल्कुल जिसको कहते हैं दिल से निकली हुई आवाज, पवित्र आवाज। तो वो रवि की बात थी, रवि ने अपनी स्टोरी सुनाई छोटे शब्दों में, और यही एक खिलाड़ी की भावना होती है, जो सच्चा खिलाड़ी होता है वो दिल से बात करता है। और इन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा, जब हम कोच थे इनके लेवल के प्लेयर्स को जब कोचिंग किया करते थे, और मैं बात करूं अगर उड़ीसा के जंगलों की, जहां से मैंने शुरुआत की थी ट्राइबल एरिया से, तो हम किसी दिन छुट्टी ही नहीं करते थे। संडे को आधा दिन की मैं छुट्टी करता था, बच्चों को कपड़े वपड़े धो लो। कुछ उस समय आदिवासी बच्चे थे तो वो लोग सुबह चर्च जाया करते थे मास में, तो आधे दिन की उनको छुट्टी देता था। और एक बड़ा कारण ये भी था कि हमारे पास वहाँ और कुछ करने को था ही नहीं, तो वो भी एक कारण था हमारा। तो ये सारी चीजें खेलों को, खिलाड़ियों को ऊपर ले जाती हैं, और जब तक सच्ची लगन ना हो तब तक हम कहीं पहुंच नहीं सकते। तो रवि को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और ऐसे ही हमारे प्रोग्राम्स में आप आते ही रहो तो बहुत बड़ी प्रेरणा है सबके लिए, सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं, हम सबके लिए, टीचर्स के लिए, गुरुओं के लिए, कोचेस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, सभी के लिए। जब बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे साथ आते हैं, चाहे वो हमारे अपने स्टूडेंट क्यों ना हो, उनका कद इतना बढ़ गया है कि वो हमें कुछ ना कुछ सीख देते हैं, हम उनसे सीखते हैं। साथ ही साथ 2 दिन से जो पूरे भारत से कोने कोने से हमारे मित्र, हमारे कोलीग्स, दोस्त, कोचेस, फिजिकल एजुकेशन टीचर, वीसी, सब साइंटिस्ट, जितने लोग आए हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। पेशेंसली उन्होंने सुना, अपनी बात रखी, बहुत लोगों को बात रखने का मौका मिला, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी उनसे यही गुजारिश है कि इस संदेश को, जहां से भी वो आए हैं, इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, और हम लोग अपने देश के फिजिकल एजुकेशन को, अपने देश के खेलों को ऊपर ले जा सकें, उसमें प्रयासरत रहें हमेशा, और ईमानदारी से प्रयासरत रहें। जितने भी लोग और यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारे इस प्रोग्राम से, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने दिल से काम किया, और मैंने कल भी कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूँ कि हम जब पिछला प्रोग्राम देखते हैं और अपना प्रेजेंट प्रोग्राम देख रहे होते हैं तो हमें लगता है इस बार हमने काफी अच्छा किया पिछली बार से। तो यही उम्मीद मैं आने वाले अगले साल के प्रोग्राम के लिए रखता हूं कि हम और इससे भी अच्छा, इससे भी बड़ा प्रोग्राम कर पाएं, ज्यादा लोग अटेंड करें हमारे प्रोग्राम को, और जो भी हमारी डेलिब्रेशंस हैं यहाँ की, वो हम लोग मिनिस्ट्री में जरूर पहुंचाएंगे। ये मंत्री जी का भी आदेश था और हमारी ड्यूटी भी है। ये उनका आदेश था, वो एक अलग बात है, लेकिन ये हमारी ड्यूटी है कि हम आप सबको, पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पेफी रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये पेफी का एक तरह से कर्तव्य बनता है कि उन सारी डेलिब्रेशंस को आगे पहुंचाए, ताकि सरकार उसमें से जो चीजें करने लायक हैं, फिजिबिलिटी जो है, उसको पूरी कर सके। तभी इस तरह के जो सम्मेलन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उसका यही फायदा होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और पीयूष को, जो इतने दिनों से, पीयूष एंड टीम
इतने दिनों से काम कर रही थी, उनको मेरी ओर से एक बार फिर धन्यवाद कि ना जाने कितने दिनों से मैं देख रहा था, मैं थोड़ा बाहर था, वैसे भी मेरा कंट्रीब्यूशन कम होता है, ये सब पीयूष का होता है शो जो है। तो इतनी मेहनत करी इन्होंने और यहाँ तक इस प्रोग्राम को लेकर के आए, आप सभी लोगों से मिलवाया और हम सब मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, पितामह डॉक्टर A.K. उप्पल, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके सामने एज कोई मायने नहीं रखती, तो हम भी सोचते हैं कभी कभी हम भी स्ट्रांग हैं, उनको देखकर हमें भी इतना उत्साह मिलता है। वो भी लगे रहते हैं, आपने देखा है 2 दिन से सुबह से शाम तक यहाँ मौजूद रहते हैं, बैठे रहते हैं और अपना जो उनका पार्ट होता है वो प्ले करते हैं। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आशीर्वाद हमारे साथ चलता रहे हमेशा। थैंक यू वेरी मच। जय भारत। थैंक यू सर। अब हम लोग अपने लास्ट में हैं, तो एक मैं डिसिप्लिन वाइज हमारे जो पेफी के वॉलंटियर्स मेंबर हैं वो एक बार पीछे आके खड़े हो जाएंगे ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। पेफी स्टेट सेक्रेटरीज और पेफी के वॉलंटियर्स दिल्ली के। परवीन सर आप, योगेन मैं बोल रहा हूँ, ग्रुप फोटोग्राफ के लिए केवल पेफी के जो लोग उसमें रहे हैं, दीक्षांत, आकाश, पेफी स्टेट सेक्रेटरीज, पुनीत, जल्दी आओ तुम लोग, फटाफट खड़े हुए, ग्रुप फोटो करना है। पेफी स्टेट सेक्रेटरीज और पेफी वॉलंटियर्स पीछे खड़े हो जाएंगे लाइन से अकॉर्डिंग टू हाइट। अथरफ सर और मैडम पांडे जी जल्दी आओ, नरेश कांडपाल जी आप भी आओ जल्दी। एक ग्रुप फोटोग्राफ हम लोग ले रहे हैं इस टीम का, जिस टीम ने पूरी मेहनत की है। कोई और छूट रहा हो तो उसमें आ जाएगा। अरे हरीश तिवारी सर आप भी हमारा नागालैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सुदर्शन दा आप भी आओ। अशोक धीमान सर। कुछ लोग चाहें तो वहां आगे भी खड़े हो सकते हैं, कुछ इस तरह से डिजाइन कर लें, एक पूरी टीम है ये। और एक यहाँ नील डाउन हो जाओ। ये ग्रुप फोटोग्राफ है जो हमारे आगे 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 आ जाओ, जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। बापू तू भी नील डाउन हो जा आगे, जल्दी जाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू।
सर 1 मिनट बस हम जनगण करेंगे, राष्ट्रगान करेंगे। आप लोग सभी सेटल हो जाएं, हम लोग अपने कंक्लूडिंग उसमें राष्ट्रगान का करेंगे और इस कॉन्फ्रेंस का खत्म करने के लिए आप सब लोग 1 मिनट के लिए सभी लोग सेटल हो जाएं। हो गई। अभी 1 मिनट सभी लोग अपनी जगह खड़े हो जाएंगे, हम लोग राष्ट्रगान शुरू करेंगे। राष्ट्रगान जल्दी से सेटल हो जाओ सभी लोग अपनी जगह पर। राष्ट्रगान शुरू करेंगे, राष्ट्रगान शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जगति तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। थैंक यू। आइए।